This call is now being recorded. Okay. Good afternoon, respected dignitaries, distinguished speakers, honored guests, and dear participants. I am Dr. Ravindra Kumar Dogra, Assistant Professor, Department of Commerce, Dr. Shivanand Nautiyal, Government Postgraduate College, Karanprayag, District Chamoli, Uttarakhand. On the behalf of organizing committee and our academic institution, it's my privilege and great pleasure to welcome you all on this virtual platform of 2 days international conference, education, employment, entrepreneurship, and economic development pathways to global prosperity, which is sponsored by International Social Science and Management Welfare Association, Madhya Pradesh, India, and International Society of Teachers, Administrators, and Researchers, Bangkok, Thailand. We are truly honored to have among us visionary leaders, scholars, industry experts, entrepreneurs, and young minds from across the world, all gathered here with one shared purpose to explore how knowledge, skill, and innovation can together lead humanity toward inclusive and sustainable prosperity. Let us come together to invoke the blessing of Ma Saraswati, the goddess of knowledge and wisdom, and formally inaugurate this wonderful 2 days international conference. Now, I warmly welcome the principal of our college, Professor Ram Avatar Sir, uh, who has joined today's conference from his busy official schedule. I humbly request Sir to grace the session with an address and officially declare this 2 days virtual conference to open. Welcome, थैंक sir. यू। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Audible, sir. सभी को सादर नमस्कार। Respected Professor V.N. Kholi, Chief Patron of the conference and our Director, respected Chief Guest Professor Pramod Kumar, Vice Chancellor, Abhyuday University, Madhya Pradesh, Professor S.K. Srivastav, SNP Garhwal University, special guest Professor Rania Lampau, Greek Advisory Board Member, SSMWA, other dignitaries, learned participants, and convener of this international conference, Dr. Ravindra Kumar. I welcome you all on my own behalf and on behalf of my college in the 2 days international conference on multidisciplinary research in education, employment, entrepreneurship, and economic development, pathways to global prosperity. The topic of the conference is important for the present scenario of the society. Education is a foundation for good jobs and the surest way out of poverty. We know a good education equips learners with important foundation skills. Evidence shows that more education leads to better employment, higher earnings, and faster economic growth. Our NEP 2020 includes all these things, yet the promise of good education remains out of reach for too many. Employment in global development includes roles such as program and project manager, policy analyst, and monitoring and evaluation specialist in areas like health, education, and economic growth. NGOs, international organizations, development consultancies, and government agencies' roles support global development. Entrepreneurship drives global development by creating jobs, fostering innovation, and empowering individuals and communities, especially in developing countries. It is essential for poverty reduction, economic growth, and achieving sustainable development goals by generating income, promoting market efficiency, and building local capacity. Economic development is crucial for global development as it involves improving a nation's economic through process like industrialization, which increases living standards and overall quality of life worldwide. But all type of growth will be sustainable growth. Therefore, this multidisciplinary international conference is very beneficial for every participants. I thank to all. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you for your insightful words. Your encouragement and guidance means a great deal to all of us. Thank you so much, sir. Thank you. Once again, I warmly welcome you all to day one on this virtual platform of 2 days international conference. As we know that education ignites curiosity, builds characters, and gives people the skills to imagine new possibility and employment turns that learning into action giving purpose, dignity, and stability to life. And entrepreneurship adds innovation and courage, the willingness to take risk, create new solution,
and lead change. And when all three align, they become the true driver of economic development, building nations, strengthening communities, and opening pathways to share global prosperity. As we look around the world today, we see rapid change in technology, in work, in education. These changes not only bring challenges, but also incredible opportunities. The purpose of these 2 days international conference is to find the ways to bridging the gap between academia and industry, fostering innovation and skills development, and creating actionable strategy for inclusive and sustainable growth. I hope that this conference would provide a powerful platform to share ideas, best practices, and success stories that can inspire new collaboration and strategy for the future. Let us use this opportunity to learn from one another, to question, to innovate, and to envision a world where every individual has the education to learn, the opportunity to work, and the freedom to create. Now, I request all of you please to turn on your camera so we can capture the special moment of this event. Now I invite Dr. Harish Chandra Tudi, Organizing Secretary of this 2 days international conference, to kindly extend a warm welcome of today's chief guest, Professor V.N. Khali, the Director of Higher Education Uttarakhand, on this virtual platform. Over to you, sir. Thank you, Dr. Ravin Dograji. Now, with immense pleasure and deep respect, I have the honor to invite Professor B.N. Khali, sir, Chief Patron of this academic event, and the Director of Higher Education, Uttarakhand, and the distinguished former principal of this institution. We are truly privileged to welcome him to share his inspiring insights and thoughtful perspectives on our 2 days international conference on education, employment, entrepreneurship, and economic development pathways to global prosperity. वेलकम सर आदरणीय निदेशक महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन है. Thank you very much, Dr. Harish Ratudi. First of all, I welcome everybody joining this wonderful webinar. I welcome the principal of the college, Karanprayag College, Dr. Singh, Dr. Ravindra, Dr. Harish Ratudi ji, and everybody present here, the distinguished dignitaries from all across the country, going to talk about a very significant topic, which is education, where education is associated or aligned with prosperity, or you can say economic well-being. Because I believe that education is not useful unless education is aligned with prosperity. And these days, material prosperity is very significant, important, so that the real progress, the material progress can be achieved. Although spiritual progress is also a part of human life. But because spiritual progress is something which has always to be in the background of the mind of the person, but the spiritual progress cannot be achieved unless we are materially powerful enough so that we can understand people, so that we can reach out to the different kinds of techniques and the ways of life, so which are very important. So the material progress in this world, in this today's world, is very important. And I thank the college administration headed by Dr. Ram Singh ji, the principal, and of course the anchor Ravindra Dogra and Harish Ratudi ji for this organizing this beautiful, wonderful, this webinar, where people I can see from all over the country, or maybe from outside the country, are also participating, which is very important. And because I've always said that Karanprayag is always at the back of my mind, it stays in the heart of my my being.
This is the Karanprayag lies in the at the center of my my thought process, because this is where I began my career from. And when I see the college progressing like this and doing such wonderful events, and I'm also very much happy to see to hear Dr. Rabin Dogra presenting very nicely in English language, which is very nice. And of course, Harish Raturi is there, whom I knew somehow, but Rabin Dogra was doing wonderfully well. So I congratulate, not I mean not leaving aside the very significant contribution or done by Dr. Ram Avtarji, who is doing wonderfully well, who is carrying forward the progress of which I was a part of the college very nicely, very rapidly, and I very closely observe the things of every activity is very closely observed by me with a lot of interest and lot of curiosity, because this is Karanprayag lies in the center of my heart. So thank you very much, everybody. I wish a very grand success to this event, which is going to happen for 2 days. Thank you very much, everybody. Thanks. Thank you so much, sir, for sharing your esteemed perspective on these our 2 days international conference. Your insight and guidance have greatly inspired us and enriched this event. We are deeply honored and proud to have you as the Director of Higher Education Department, Thank Uttarakhand, you. and your presence has been a source of encouragement to each one of us. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. Many thanks. Now, I would like to invite the chief guest and keynote speaker, Professor Pramod Kumar, Honorable Vice Chancellor, Avyodaya University, Khargaon, Madhya Pradesh. Brijesh sir, hello. Brijesh sir, सर प्रमोद sir, जी VC sir, जुड़ने available. सर जुड़ने वाले हैं, वो उनका अभी एक्चुअली अपना टाइम थोड़ा जल्दी चल रहा है ना, ये 12:30 में जुड़ने वाले हैं. SK श्रीवास्तव सर इज ऑलरेडी जॉइन. Okay. Now, I request Mr. Deep Singh, Assistant Professor and Coordinator of the International Conference, to welcome our Chief Guest and Keynote Speaker, Professor S.K. Srivastava, sir. Over to you, Deep, sir. Thank you, R.K. Dogra, sir. I am Assistant Professor Deep Singh, Commerce Faculty, Karanprayag College, or Organization Committee with you. And now I would like to invite our next chief guest and keynote speaker, Professor S.K. Srivastava, sir, former Dean and Head of the School of Commerce and Management, Hemati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Garhwal, Uttarakhand. Professor Srivastava, sir, has an illustrious academic career spanning more than 43 years of teaching experience. He has also served as the finance officer of HNB Garhwal University, Srinagar, from July 2009 to March 2012. He has supervised 8 PhD scholars and done 1 DLit candidate in the field of commerce, and currently 1 PhD scholar is pursuing research under his supervision. He has authored 3 books, namely Corporate Tax and Tax Law and Accounts, Income Tax Law and Accounts, and Tax Planning and Management. Additionally, 18 of his research papers have been published in the various reputed international journals. Sir, it is an honor to have with you us today. We are privileged to host you on this virtual platform. May I now request you to lead the session with your esteemed thoughts. Welcome, sir. The session is now yours. Please, sir. Sir. Srivastava, sir. Is Srivastava sir there?
Vijay sir. सर कनेक्ट तो रखे हैं अवेलेबल तो ऑन करो अच्छा स्पीकर बंद है शायद. वेलकम सर जुड़े हैं क्या बोल रहे हैं श्रीवास्तव सर शायद आपका माइक म्यूटेड है. सर आपकी आवाज नहीं आ रही अब बोलिए. Hello, good afternoon, sir. वेलकम सर Thanks and best wishes to Dr. Ravin and Harish ji. First of all, honorable dignitaries, distinguished speakers, faculty members, industry leaders, students, and guests. I am honored to be part of this important conference on education, employment, entrepreneurship, and economic development. Four essential pillars that together shape the pathway to global prosperity. First is education, foundation of an equitable future. Education today is not just about literacy, it is about capability, adaptability, and innovation. The world is transitioning from degree-based system to skill-based ecosystems. Digital literacy, AI awareness, sustainability, mindset, and interdisciplinary learning must become mandatory. The National Education Policy, NEP 2020, is a step towards holistic, flexible, and employment-oriented education. We must promote industry-integrated curriculum, international collaboration, and research incubation from the UG level. Second point is employment. Is creating opportunities in a changing world. Employment patterns worldwide are undergoing major transformation. The rise of gig economy, remote and hybrid work models, AI automation, green jobs to creating employability. Skill certifications, apprenticeship, internship, vocational training, and earning, upskilling cycles will drive future careers. India demographic dividend, but it will turn into a demographic burden if not channelized through skill innovation and opportunity creation. Third part is entrepreneurship, catalyst for innovation and self-reliance. Entrepreneurship is no longer an option. It is a national and global necessity.
Startups are solving problems of health, agriculture, sustainability, financial inclusion, education mobility, and governance. India ranks third globally in startup ecosystem and hosts over 100 unicorns. Students must be encouraged to become job creator rather than job seekers. Incubation centers, mentorship, networks, access to funding, and regulatory ease are essential. Entrepreneurship should be taught not as a business theory, but as a mindset, culture, and risk-taking ability. And what is economic development? From local aspirations to global competitiveness, education, employment, and entrepreneurship together lead to sustainable economic development. Economic growth must be inclusive, innovation driven, and environmentally responsible. Today's policies should link Make in India, Digital India, Skill India, Startup India, Green Growth, and Viksit Bharat 2047 as a single and unified vision. Global prosperity will depend on how nations use knowledge, capital, youth, potential, and innovation ecosystems, international collaborations, cross-border research, trade partnerships, and technology transfer will define the next phase of global development. Way forward, the 4 E's convergence model. To reach global prosperity, we must integrate the 4 E's: education, employment, entrepreneurship, and economic development. Skill minds, job ready, youth innovative thinking, sustainable growth, action point for institution and policymaker. Curriculum industry integration, skill based learning pathways, research and innovation labs, startups, and incubation support, global academic collaboration, technology, driven learning, AI, VR, data analysis. These are the 4 important pillars for global pathway. So it is a very important topic I present, and Dr. Ravin and Harish ji ne developed this approach. So thank you for this. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir, for delivering such an enlightening and engaging session. Your thoughtful reflection have inspired all of us and added meaningful clarity to our conference theme. We are truly honored by your presence. Thank you so much, sir. Thanks. Okay. Brijesh, sir. Hello. Hello, Brijesh, sir. Yes, sir. Sir, VC sir available or not? Yes, sir. Already joined, sir. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Now, I would like to invite the chief guest and keynote speaker, Professor Pramod Kumar, Honorable Vice Chancellor of Udaya University, Khargaon, Madhya Pradesh. Sir also serves as an advisory board member of Social Science and Management Welfare Association, Madhya Pradesh. Welcome, sir. The session is yours now, sir. Welcome, sir. Thank you very much, Ravindra ji. Am I audible perfectly? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. All right. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. All the dignitaries, distinguished guests, research scholars, and students, you all are welcome to one-day conference of education, employment, entrepreneurship, and economic development, a pathway to global prosperity. Honorable Principal Professor Dr. Ram Avtar Singh sir, honorable committee members, organizing committee members, Harsh Chandra sir, Ravindra sir, Ina madam, and all. If I am forgetting some names, so it's my sincere apology to all of you. किसी भी कॉन्फ्रेंस को करने के लिए जो एक कलेक्टिव एफर्ट्स लगता है, वो सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी प्रेषित करता हूँ. और
I think it would be better if we discuss the education and the economic development in our own language, as India is also facing these kind of problems day by day. So discussing this important topic in our own language would be more preferable for better understanding. I think this is my, and if you want, so I can speak in the English language also. I have the good command over the both the language, no issue at all. So I think yes, sir. Yes, sir. Yes. तो आई थिंक मुझे शुरुआत करना चाहिए हिंदी भाषा से ही। जी, जो दोनों भाषा में यूज कर सकते हैं आप सर। जी, मैं ऐसा मानता हूँ, और जब आपको लगे तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इंग्लिश में भी उसको आई डोंट हैव प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब हम आज इस कॉन्फ्रेंस के लिए डॉक्टर एसएन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए जब आप यहाँ पर हम लोग सब उपस्थित है, तो बेसिकली मुझे एजुकेशन की जो हमारी नींव है वहां से इसकी शुरुआत करना चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसा हमारे इतिहासकार और हमारे पुराने जिनको हम पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है कि भारत देश के अंदर अंग्रेजों का आगमन 24 अगस्त 1608 को हुआ था, और ये भी सत्य है कि वो भारत देश के अंदर व्यापार करने के लिए आए थे, और उसका व्यापार करने जब वो आए थे तो उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। संयोग से 1857 का एक विद्रोह हुआ, और उस 1857 के विद्रोह में भारत देश से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन को खत्म किया, और ब्रिटिश क्राउन ने भारत के ऊपर, हमारे इस प्यारे भारतवर्ष पर एक सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब मैं आपको उसमें एजुकेशन में किस तरह से बदलाव हुए इसकी एक छोटी सी यात्रा पर लेकर चलना चाहता हूं। 1800 से लेकर 1813 के बीच में ब्रिटेन की एक संसद में एक चार्टर पारित किया गया, एक अधिनियम पारित किया गया, और जिसमें कहा गया कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा सुदृढ़ करना है। और इस चार्टर के थ्रू 1830 के दशक के आसपास विलियम बेंटिंग करके एक भारत के गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने बंगाल तथा बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन के लिए एक उनके बहुत अच्छे शिक्षाविद हुआ करते थे, शिक्षाविद विलियम एडम, उनको उन्होंने नियुक्त किया, और उन्होंने कहा कि भारत देश के अंदर जाइए और भारत देश की शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली को पूर्णतः एक इस पे पूरी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करिए, और हमें बताइए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। सो 1830 के आसपास विलियम एडम भारत देश के अंदर आए, और भारत देश के अंदर जब आए तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया ब्रिटिश पार्लियामेंट, और अपनी रिपोर्ट जब उन्होंने प्रस्तुत की तो उन्होंने 3 मुख्य बिंदुओं उस रिपोर्ट के अंदर भारत की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रतिपादित की। पहला बात उन्होंने बताई कि भारत देश के अंदर हमारी ब्रिटिश की अधीनता के पूर्व, अर्थात जब भारत देश गुलाम हुआ था उसके पहले भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी, और भारत देश के अंदर गुरु शिष्य परंपरा की एक लंबी जो है आधारशिला थी। यहाँ पर आधुनिक विद्यालयों के विपरीत छोटी छोटी सी पाठशाला होती थी, यहाँ पर स्थानीय शिक्षक जो होते थे गुरु शिष्य परंपरा के अंदर बच्चों को संस्कृत सिखाते थे, व्याकरण सिखाते थे, प्रायोगिक गणित सिखाते थे, और सबसे बड़ी बात थी कि महाजनी खाता पद्धति भी सिखाई जाती थी। ये उनका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये पाठशालाएं जो हुआ करती थी, ये जो क्लासेस जो हुआ करती थी, ये प्राय किसी मंदिर में हुआ करती थी, किसी धर्मस्थल पर हुआ करती थी, किसी दुकान पे हुआ करती थी, किसी शिक्षक के घर हो जाती थी, किसी वृक्ष के नीचे हो जाती थी, या अन्य कोई सार्वजनिक स्थान जहां पर सभी बच्चों का या सभी विद्यार्थियों का एकत्रीकरण बहुत आसान हो जाता है, ये वहां हुआ करती थी। और पाठशालाओं में बहुत ज्यादा विद्यार्थी नहीं हुआ करते थे, 10, 20, 30 के आसपास के विद्यार्थी हुआ करते थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें ये होती थी कि फसलों की होती थी, तो फसलों की कटाई के मौसम में पाठशालाएं बंद होती थी ताकि बच्चे अपने घर जाए और अपने माता पिता की फसल की कटाई में मदद करें। ये दूसरा उनका पॉइंट था। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि इस पूरी व्यवस्था के अंदर, इस भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंदर गुरु और शिष्य की कोई निर्धारित फीस नहीं हुआ करती।
अर्थात गुरु शिष्यों से कोई निर्धारित फीस नहीं लेते थे, जिसको शुल्क हम लोग कहते हैं, जिसको हम फीस कहते हैं, कॉलेज की फीस या किसी पढ़ने की या ट्यूशन की फीस, इस तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। इसकी व्यवस्था कुछ इस तरह से बनी थी कि गरीब बच्चों से कम तथा आर्थिक रूप से सक्षम छात्रों से थोड़ी सी अधिक फीस ले ली जाती थी, जितनी उनका सामर्थ्य, जितनी उनकी शक्ति, जितना वो पे करने की, जिसको हम कहते हैं ना पेइंग कैपेसिटी, तो जितना उनका पेइंग कैपेसिटी वो बच्चे उतना पे कर देते थे। और उस समय अलग अलग कक्षाएं नहीं चलती थी, उस समय सारे बच्चे एक लेवल पर, एक स्तर पर आकर पढ़ाई करते थे, जहां पर भिन्न स्तर की शिक्षा जो है उन बच्चों को दी जाती थी। ये 3 बिंदु मुख्यतः शिक्षाविद विलियम एडम ने 1830 में उस वक्त ब्रिटेन की संसद में दिए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी उन्नत और इतनी अच्छी थी कि वहां पर संस्कृत, व्याकरण, प्रायोगिक गणित, महाजनी लेखा पद्धति, जिसको हम अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं हमारे इंडिया का, ये सब कुछ सिखाया जाता था। और बहुत ज्यादा बच्चों को कोई प्रेशर नहीं होता था, बच्चों को फीस भी बहुत निर्धारित ली जाती थी, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों से कम फीस, जो जिसका सामर्थ्य है वो बच्चा उतनी फीस दे सकता था। सभी बच्चों को समान स्तर पर बिठाकर जो है शिक्षा व्यवस्था संचालित की। वहां पर उन्होंने इस पे थोड़ा सा काम करने की कोशिश की गई, तो बहुत बोले इन लोगों का इतिहास तो बहुत उन्नत है और भारतवर्ष तो बहुत उन्नत शिक्षा व्यवस्था के साथ कार्य कर रहा है। तो उन्होंने फिर इसके अंदर 2 फरवरी 1835 को कोलकाता में मेकाले ने पहली बार भारत देश के अंदर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को पारित किया। जब मेकाले ने 1835 को 2 फरवरी 1835 में भारतीय अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को पारित किया, तो इस मेकाले ने वस्तुतः अपने इस पूरे जो अधिनियम में एक बिंदु पर फोकस किया। वो बिंदु क्या था? वो बिंदु था अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, जिसे कहते हैं डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। अभी डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी क्या होती है? उन्होंने कहा कि ये जो डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी है, ये बेसिकली ये है कि भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक ऐसे छोटे से हिस्से को शिक्षित करना है, जिसके एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो रंग और खून में तो भारतीय होगा, लेकिन विचारों से और नैतिकता में ब्रिटिश होगा। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी जो मेकाले ने प्रतिपादित की, उस डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी ने भारत देश के अंदर क्या बीज बोने का कार्य किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना है, जिसे एक ऐसा वर्ग हमें तैयार करना है जो रंग में और रूप में और खून में तो वो भारतीय हो, लेकिन विचारों से अंग्रेज हो, जो विचारों से और नैतिकता के आधार पर ब्रिटिश हो। और मेरा यकीन मानिए, यहीं से एक डिवाइड एंड रूल करने वाली जो थ्योरी, जिसको हम कहते हैं डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी, उसका प्रतिपादन हुआ। हालांकि समय के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव होते गए, कुछ चीजें बदलती गई। जेम्स थॉमसन आए 1845 से लेकर 1853 के बीच में। उन्होंने थोड़ी सी इसको उन्नत करने का प्रयास किया, उन्होंने कृषि को थोड़ा सा उन्नत करने का प्रयास किया, उन्होंने विज्ञान पढ़ाने का थोड़ा सा इसमें प्रयास किया। उन्होंने पहली बार जब 1854 के आसपास वुड्स डिस्पैच आए थे, तो उन्होंने पहली बार भारत देश के अंदर महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने का या महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप उस वक्त देश में 3 प्रेसिडेंसियां होती थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो उन्होंने उस वक्त बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में, तीनों में एक विश्वविद्यालय को स्थापित करने का कार्य किया। एक यूनिवर्सिटी पहली बार 1854 में हमारे इस प्यारे भारतवर्ष के अंदर हुई। उसके बाद 1882, 1883 के आसपास हंटर आयोग आया, जिसे हम हंटर कमीशन कहते हैं। फिर 1904 आते आते इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया और 1944 में सार्जेंट प्लांट और एजुकेशन आया। भारत देश के अंदर सार्जेंट की योजना है वो आई। अलग अलग समय में, अलग अलग रूप में भारत की शिक्षा व्यवस्थाओं को अलग अलग तरह से बदलाव करने का प्रयास किया गया। लेकिन 1830 का जो प्रयास था, वो 1830 का जो प्रयास आज भी हम हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर इस भेदभाव को और इस स्तर को आज भी कहीं ना कहीं हम लोग महसूस करते हैं। सो
इसके बाद फिर अभी आप जानते हैं लगातार शिक्षा व्यवस्था हमारी चेंज हुई, और अभी जो नई हमारी जो शिक्षा व्यवस्था आई है, जिसे हम इंडियन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे हम कहते हैं, इसमें अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रोग्राम हुआ। इसमें पहली बार ऐसा आया कि मातृभाषा में शिक्षा देने का विचार हुआ। उन्होंने कहा कि भैया ये भी तो हो सकता है कि महात्मा गांधी मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करते थे, तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी भाषा का बहुत महत्व है, तो इसे हम मातृभाषा में पढ़ाएं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और मातृभाषा के साथ साथ ये हमारी रीजनल जो लैंग्वेजेस है, हमारा भारत देश क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, और हमारी जो बोलियां हैं जिसको हम बोलियों के रूप में कहते हैं, वो अलग अलग है। हम अगर साउथ में जाएंगे तो अलग बोलियां बोली जाती है, मराठी भी है, महाराष्ट्री भी है, अलग अलग बोलियां हमारे यहाँ पर बोली जाती है। तो इन भाषाओं में, ताकि बच्चे का संपूर्ण विकास हो, और जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं एक अपनी जो आधार है उसको मजबूती के साथ आगे लेकर जो है, इसी के साथ साथ ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का बदलाव किया गया। अब क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में लगातार बदलाव हो रहा है, और टॉपिक भी एक आज का बहुत अच्छा है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पाथवे टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। एंड रियली इट्स a pathway of global prosperity. Agar if we talk about the economic development, I think अगर मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता हूँ, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ रिमार्केबल स्टोरी ऑफ ग्रोथ एंड द प्रोग्रेस फ्रॉम बीइंग largely economy at the time of the independence. India is transformed into a diverse and rapidly growth economy. We all know very well, because when we talk about the rapid growth, India is one of the fastest growing major economy in the world with a growth rate of over 7% per annum. And if we talk about the service sector book, the service sectors has driven India's growth with IT, finance, tourism contributing significantly to the GDP. If we talk about the basic infrastructure development, nowadays it's getting a very hype in the India, because investment in the roads, ports, airports are empowering connectivity and logistic development in the India. लेकिन इसी के साथ साथ हमारा भारत देश लगातार एक युवा वर्ग और एक युवा ताकत बन रहा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि इस युवा को हमें शिक्षा के साथ साथ कौशल भी देना है, एजुकेशन के साथ साथ स्किल्ड भी उसे देना है। अन्यथा ये जो युवा ताकत आज जब हम हर एक प्लेटफॉर्म पर, हम सब लोग, हमारे जितने भी हमारे सीनियर शिक्षाविद है वो सभी, और हम सब लोग जब कहते हैं कि भारत एक युवा देश है, ऐसा ना हो जाए कि हम सिर्फ उन्हें शिक्षा दें और कौशल ना दें, और ऐसा ना हो जाए कि यही युवा पीढ़ी एक समय हमारी ताकत को छोड़कर हमारी वीकनेस बन जाए। क्योंकि इतिहास गवाह, जिस युवा शक्ति को शिक्षा के साथ कौशल नहीं मिला है, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर रही है। तो हमें उन्हें शिक्षा देना है, शिक्षा के साथ साथ कौशल भी जरूर देना है, और कौशल के साथ साथ मैं हमेशा एक बात और कहता हूं, इसमें एड ऑन करता हूं, एजुकेशन, स्किल्स एंड द अपॉर्चुनिटी। शिक्षा, कौशल और अवसर, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अवसर देना भी मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूंगा, शिक्षा के साथ कौशल और कौशल के साथ अवसर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी इस युवा शक्ति को एक सही दिशा में लेकर जाने का अगर हमें कार्य करना है, तो निश्चित रूप से हमें उन्हें कौशल और अवसर के साथ साथ मजबूत बनाना पड़ेगा। आपने मुझे आज समय दिया कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करने का, फिर कभी समय रहा तो जरूर आप लोगों के साथ जुड़ने का मैं प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपने आज मुझे इतना गहनता से मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, VC sir. On the behalf of organizing committee and all the participants, I extend our heartfelt thank you for gracing this international conference with your esteemed presence. Your valuable insight, guidance, and encouragement have greatly enriched the deliberation of the conference. Thank you, sir, for delivering such an enlightening and engaging session on Indian education system, past, present, and future, and Guru Shishya Parampara. Your thoughtful reflection have inspired all of us and added meaningful clarity to our conference theme. We are truly honored by your presence and deeply grateful for your time, support, and motivation
which encourage all of us to continue striving for excellence. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Jai Hind. Thank you. Next speaker. कौन है? Brijesh sir? Hello. Brijesh sir? Yes, sir. Professor Rania sir available? or Rania not? madam is already joined, sir. Okay, sir. Okay. Now, it is my great honor to invite our next esteemed guest and distinguished keynote speaker, Professor Rania Lempo, representing the Greek Ministry of Education and Religious Affairs Directorate of Educational Technology and Innovation, Greece. Professor Lempo also serves as a respected advisory board member of the Social Science and Management Welfare Association, Madhya Pradesh, India. We are truly privileged to have her with us today. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am, on this virtual platform. Over to you, ma'am. Okay, good morning. Warm greetings from Greece, from Athens. I hope I'm audible. I'm very, very honored to be invited Yes, ma'am. here. You are today. audible, ma'am. I'm very Audible, excited to be invited Welcome. to this today's the national conference, and I would like to extend my heartfelt congratulations to all organizers of Dr. S. and Government PhD College. Of course, Social Science and Management Welfare Association and the National Society of Teaching Administrators and Researchers. I would like to warmly thank Dr. Brajesh Kumar for the kind invitation, and to welcome all respected dignitaries, distinguished guests, esteemed faculty members, the researchers and students. My topic today will focus on innovation. Innovation in STEM education, because I'm a STEM instructor, a teacher. I'm a STEM instructor of the Greek Ministry of Education and also the Greek Astronomy Space Company. And before starting sharing my presentation, just I would like to say that science, technology, engineering, and mathematics are now more than academic disciplines. They're engines of progress, lenses through which we interpret challenges, and tools that equip our learners to design meaningful solutions. Because in a world driven by rapid technological growth, climate challenges, and evolving industries, the role of STEM education has never been more significant. And innovation is not simply about adopting the newest gadget or software. It is not that. It's about rethinking our teaching practices, embracing creativity, fostering curiosity. It's about creating classrooms where students feel safe to experiment, to question, even fail, because every failed attempt is a step toward discovery. So today we will share some best practices that have the power to transform teaching and learning, such as cultivating hands-on, inquiry-based learning environments, integrating real-world challenges to the curriculum, ensuring equity and access, and of course, harnessing technology not as a substitute for teaching, but as a catalyst for deeper engagement and understanding. Most importantly, innovation thrives when we work together. Teachers, administrators, parents, industry partners, and of course, students. Each one of us play a vital role in shaping a learning ecosystem that encourages experimentation, celebrates diversity of thought, and nurtures a lifelong love for learning. Now, we'll start sharing my presentation. I don't know if it's visible now. Yes, ma'am. Yes, can you see also the change of slides? Yes, visible, ma'am. Screen visible. Thank you. So schools can incorporate now emerging technologies. Already we have the first AI school, which works in a pilot basis in UK. We talk about the teacherless school. We're waiting to see the result. When this was launched, this actually sparked a debate all around the world because it was promising and scary at the same time. And we have in India, Kerala, the first AI university, the first AI school, the first AI school teachers. So emerging technology is something that we need to embrace, whether we like it or not. So first step, we talk about AI, more personalized learning.
AI-powered systems which can tailor now assignments and feedback to each student, addressing learning gaps while extending challenges for advanced learners. Definitely, we start by building AI literacy, teaching students how AI works, so its ethical dimensions, its applications in areas like healthcare, finance, environmental research, and of course, more classroom projects. VR AR also is something which is gaining momentum. And of course, why this is interesting, because this allows students to explore, for example, the solar system, conduct virtual dissections, conduct medical surgeries in universities, airplane flights, examine molecular structures in 3D. More augmented reality, enhanced labs, so use augmented overlays for digital safety instructions, experiment guidance, and virtual field trips. And robotics, which is my favorite subject because it's about designing and programming robots, which cultivates teamwork, design thinking, iterative problem solving, and of course, cross-disciplinary connections, because robotics bring together maths, physics, computer science. Competitions, so many international Olympiads on robotics, hackathons that we can organize as institutions, and of course, use coding beyond computer science and authentic applications, of course, encourage students to create apps, games, automation scripts to connect learning to real-world uses. Of course, we talk about new methodologies, more PBL, more project-based learning, the maker movement, makerspace movement, and this has to do with innovation hubs and labs, which provide access to 3D printers, to microcontrollers like Arduino and Raspberry, robotics kits for hands-on exploration, offer training and peer collaboration so educators feel equipped to use emerging technologies effectively, and of course ensure that all learners have access to devices, connectivity, and culturally relevant examples that actually resonate with diverse backgrounds. So more intelligent tutoring systems, and of course data-driven insights for teachers, because now AI can spot learning patterns such as common algebra errors, flag misconceptions, and educators gain early alerts on struggling students and can adapt, of course, their teaching accordingly. STEM skill development, because tools can suggest the code snippets, debug errors, so we talk about coding support day and night. Creativity, and now if we want to adopt some low-cost or scalable digital tools for inclusive STEM education, especially in rural areas, what are the key principles, how we can select our tools? Before listing the tools, it helps to keep in mind these guiding principles. The universal design for learning, which aims for multiple means of representation, expression, engagement, low bandwidth and offline access tools, the multiple access modes, portability, the support, of course, for teachers. I can mention some of these tools. So immersive video, for example, helps students who struggle with reading. Google Classroom, open educational resources. Here in Europe, we promote a lot of open science and open educational resources because we talk about very low-cost options. Arduino low-cost microcontroller framework Stimulator for STEM, it actually offers free interactive virtual content aligned to STEM. Offline low connectivity resources using tools like preloaded app simulations, video lectures stored offline. Assistive technologies for students with special education needs, like speech-to-text, text-to-speech, captioning, etc. More innovative, emerging the low-cost solutions, Tara, the low-cost 3D printed robotic arm with open-source design files, RoboBlocky, web-based robot simulation environment with block-based programming, Hydra framework, which combines Arduino open tools into modular scalable systems, etc. So for STEM education, we have many low-cost. So saying that this is something expensive, it's just an excuse. What about implementation strategies to make adoption successful? Education institutions might consider how to localize the content, how to adapt, of course, all these tools to local curriculum, to cultural context, tools as good also as how teachers use them, of course. So peer sharing of best practices is important, mentoring helps, of course, and combine online and offline, use digital tools when possible, but ensure fallback options.
The shared community resources, so shared labs, maker spaces, pooling resources, and monitoring and feedback. Of course, I mentioned before, the online labs are virtual experiences are very, very important because we talk about how we can expand access here, how we can ensure equity in opportunity, because learners, especially in rural or other resource schools, can gain exposure to experiments they might not otherwise encounter. And at the same time, it's about safe experimentation. Hazardous experiments like chemical reactions or high voltage physics can be conducted now virtually in complete safety. And of course, it's about unlimited practice because students can repeat experiments without additional costs, allowing them to learn from mistakes without wasting supplies. Make the visible. Simulations can represent abstract phenomena such as the atomic structure, DNA, etc., interactive learning, connecting theory and practice. So this can introduce concepts and processes ahead of in-person labs, boosting student readiness and confidence, more flexibility and scalability, and integration with emerging technologies. So, of course, what are the benefits about safety, cost effectiveness? It's about enhanced learning experience, preparation for real labs, and environmentally friendly. What about the coding and robotics? Of course, it's something that needs to be integrated into the curriculum because this helps with the future job skills. But many careers already demand the digital skills. Coding is becoming as essential as math literacy. More critical thinking and creativity because programming fosters logical reasoning, the disciplinary connections also are there, and future adaptability. Even students who don't pursue tech careers benefit from understanding how technology works in an increasingly automated world. Of course, there are challenges. On the other hand, challenges usually related with limited resources, so teacher preparation, the curriculum overload with already packed schedules, adding coding, robotics could displace other important areas. Equity concerns, and of course, all these challenges that usually the regulatory frameworks, etc. Now, what I would suggest as a practical roadmap, the first step that would be if we want to integrate emerging technology system in our education institution, we can start from the foundation of awareness low-cost tools. So run workshops introducing teachers to AI powered tools, emphasize AI as a support for teaching, not a replacement, of course. And then the low-cost classroom use. Step 2 would be the classroom integration. First, with personalized practice, adapt, for example, try to use adaptive platforms that adjust difficulty per student for STEM subjects. AI tutors and assistants, the STEM projects with AI, so assign group projects where students use AI to analyze real-world data, for example, predicting weather trends, modeling population growth. And then step 3 would include more advanced applications, so interactive inquiry-based learning. We can move on with the virtual labs and introduce AI-driven platforms like Labster or FET for chemistry, biology experiments. Let students run what-if scenarios that would be impossible or dangerous in a real lab. Pair AI in robotics with robotics kits to teach programming, engineering, problem solving, and organize STEM competitions. Use AI to help the students prepare for math Olympiads, for coding hackathons, or science fairs. And the step 4 could be the school-wide transformation. Implement analytic systems that track student progress across subjects, flagging who needs intervention. Encourage STEM and humanities, for instance, project using AI, for instance, to model climate change impact and then write policy recommendations. Provide AI accessibility tools for diverse learners, speech to text, real-time translation, adaptive interfaces. And finally, the step 5 could be the long-term scaling and innovation, which includes how we can collaborate with universities, with industries, with tech companies, or STEM organizations to access cutting-edge AI tools. Teach students about responsible AI use, bias, and ethics as part of STEM literacy, and build an AI learning community where teachers share best practices and innovations. So I start with teacher training, introduce adaptive math platforms, scale into robotics, starting small, first building momentum, the classroom integration,
and scaling up. The key principles for success start with teacher training, of course, keep focus on equity and teach responsible, ethical, and wise AI use. Some successful models start from mobile inquiry-based learning environment. A vision for engineering literacy and access, we can still search for this. Slovakia STEM first level program, successful K-12 STEM education framework. Make it simple. In Europe also, we have many funded programs which try to integrate AI in STEM. And of course, it's all about these things that we can see here, real connection, continuous assessment, strong teacher training. So what methodologies are best for this? Of course, problem solving based learning, and of course, inquiry-based learning, PBL, more creativity, so using design and animation tools, diverse ways of expression, cross-disciplinary thinking, and more collaboration. So we talk about the global teamwork, participated, join the national competitions with the national project, if it's possible, more structured communication. Innovative technologies with STEM teaching needs, of course, initial training, curriculum integration training, differentiating distraction, then ongoing professional development through incentives that could be micro-credentials. There are now platforms like Magical School, which offers certifications, different levels of certification for AI, for teachers who want to be certified in AI in education. And so that's why I'm talking about micro-credentials and online modules. And there are also some other frameworks which offer now, some other STEM organizations which offer the first certifications and micro-credentials. So you can search or explore this. We need more communities of practice, so professional networks, more collaborative lesson design, and of course, user-friendly resources. Evaluation and feedback based on data-driven insights, more systemic and policy support. So how can teachers be trained to using technology efficiency? Starting with purpose, not just tools. So this is the first one, people, and provide hands-on training, multiple support, scaffolded instruction, and encourage always experimentation, focus on pedagogy and technology together. The question, digital platforms or digital methods, of course, each one has its strengths and weaknesses. Digital platforms offer this flexibility or this engagement. On the other hand, traditional methods have to do with human connection and critical thinking. And what about assessment? Of course, we need more new methods of assessment in order to evaluate STEM learning, which is by definition something hands-on. So project portfolios could be a best solution for assessment, where students can compile evidence of their work, teachers can assess creativity, they can assess the depth of inquiry, the problem-solving strategies. So digital platforms also now AI can help us track very easily the progress of students. Second, that type of assessment could be performance-based assessment, where students can solve real-world challenges. By creating appropriate rubrics, this could be a nice solution. Peer self-assessment, observation, learning analytics through digital tools, learning platforms, coding blocks can provide analytics on participation, persistence, and creativity. More presentation demonstrations, so students can showcase their work to authentic audiences, innovation, challenges, and hackathons. As I mentioned before, this is important because they provide authentic context to evaluate innovation, creativity, and adaptability. 21st century skill rubrics, you can find the framework, for example, a P21 framework of the standards which help students design the rubrics for skills of the 21st century. And finally, equity, so infrastructure device access, so we need to ensure affordable free STEM education using AI, school community-based approach, partnerships with NGO. And finally, for concluding, what is the future of STEM education? Definitely, we could imagine a more highly personalized learning, immersive reality labs, seamlessly human AI collaboration, and of course, more global and connected classrooms, because classrooms will be borderless with students collaborating across countries in real time. Shared platforms will let learners join global STEM challenges like climate modeling or robotics competitions. Interdisciplinary focus, STEM will merge with arts, with humanities, with social sciences.
more advanced maker spaces. Every school will likely have AI-driven maker spaces with 3D printers, with robotics, with engineering kits to the school. Just we don't only consume knowledge, but they will build, they will design, they will test solutions to offended problems. They will be producers or co-producers of knowledge. We will have assessment without standardized tests, and of course, teachers will act as mentors and not lecturers. So teachers focus on coaching now, on guiding and inspiring. So thank you very much for your attention. I will stop here because I can speak for hours, but I don't have to stick to the time. If you have any question, I'm here to discuss. Thank you so much, ma'am, for your wonderful and enriching session on AI and STEM learning tools. On the behalf of the organizing committee, our academic institution, and all participants from India and abroad, I extend our sincere appreciation for your valuable contribution. Your insight, experience, and global perspective have greatly enriched our understanding of the topic and inspired meaningful discussion. It has been a true honor to have you with us, and we look forward to continue learning from your expertise in the future. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. It's a wonderful opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Brijesh sir? Hello, Brijesh sir? Professor sir. Rajendra sir, available? Yes, sir, already done. Okay, sir. Okay, thank you. Now, I invite Mr. Netram, Assistant Professor Commerce and Coordinator of this 2 days international conference, to welcome our next keynote speaker, Professor Rajendra Kumar sir. Over to you, Netram sir. Thank you, Ravin sir. It is my privilege to invite our next eminent guest and keynote speaker, Professor Rajendra Kumar, Professor of Commerce at Rajdhani College, University of Delhi. Apart from being a renowned academician, he also serves as an esteemed advisory board member of the Social Science and Management Welfare Association, Madhya Pradesh. We are grateful for his gracious presence, and I request him to kindly enlighten us with his insights. Welcome, sir. Sir. Professor Rajan, sir. Brijesh sir. सर राजेंद्र सर ज्वाइन है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है. Okay, sir. राजेंद्र सर. Hello, I am audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Audible, sir. Audible. Welcome, sir. Sorry, sir. Sorry. I am actually sorry, first of all, due to the technical glitch, sir. A very good morning respected to all. And first of all, I thanks to the organizers. You have chosen the wonderful topic. I am audible, sir? Yes, sir. Audible, sir. Okay. Thank you so much for giving me the opportunity for the 2 days international conference on the very good topic of the multidisciplinary, that we have the requirement of the right now is the 4 E's, like the education, employment, entrepreneurship, economics. All the 4 pillars is the very, very important in this current scenario. First of all, I will thank to the Professor P.K. Sharma ji, Honorable Vice Chancellor, said the very wonderful. I have joined late, but I am very impressed with
overall the view of the Professor Sharma ji has given to the very good 3 point is the education, entrepreneurship and opportunity. It means there is a Shiksha, Kaushal and Avsar. That is the momentum of the new economy. All these economic going to the all the 3 E's. Also, thank you so much. You have given to the very good point, Professor Sharma ji, and Professor Ruma Lumaji is also given to the very good that interpret with the technically with the new era. So first of all, I will thanks to all the participants from the different parts of the country and abroad also. We can discuss about the education, employment, entrepreneurship and economic development. Such a wonderful pillar because all are the very important pillar for the any country, not in India, except India also and around the world. Globally perspectives in the 21st century depend on the national ability to create the we can say the inclusiveness, knowledge driven, innovation orientation, or you can say the innovative oriented economy for internationally or the inter-concerned pillars like the economic, like the education, like the employment, entrepreneurship, all the 4 pillars from the foundation of the sustainable to the equitable growth. Understanding the pathway, because all without 4 P's we cannot understand the pathway. Then where will we go in the future? But we can rethink about the current scenario. First one thing is the pathway linked to the engagement to the sustainability of the government, policymakers, and like to the scholars and the development of the institution. Firstly, I will discuss with you the concept of the framework of the 4 P's pathway model. We can say first one is the education. Right now we can discuss about the education. Education is one of the most important pillars in any human beings. Like you can say the how many differences in the education in India. Number one, you can see the how many number of private institutions and the government institution in India. Firstly, we should improve our government primary school in India in every state. We can see what is the condition of the basic education in India. We can discuss about the higher education in India. It is okay. We can going to the ahead, but moving as per the infrastructure. But what are the conditions of the government basic school or up to the 12th school specifically? I will be discussing with it, because without education or without basic education we cannot forward in this AI era or the digital era. So these words is the building the human capital and the skill for the modern economy is the very important or the pivotal role of the technology based basic education in our any state or any territory. Second thing is the enhance the digital literacy in our schools, like to the critical thinking or the innovation also. We can say the how to use the technology, how to use the AI, how to use the robotics. So that's all these infrastructure based on the basic level or the 12th school. It is a very important. And another second thing is the education that driven workforce productivity and employability. Because if we have behind it, or if we are not taking the good education, so how we can beat to the any development employment? If you can say that we have so many in India, like to the IITs. But I am seeing that our government has failed to the basic education. My focus on the basic education right now. And next one thing is the reduce inequality and promote the social mobility. Professor Sharma, Honorable Vice Chancellor, has told the already given as the example earlier. Education is a very good education. We can everything is free in education, and who is the capable, so we can take the little fees. And second thing is the
employment. Employment is a very important role and very crucial role, because if we are weak in the education, how we can say that we will go to the very good employment? If we have not the good education, how will can we go ahead for the good job? That's my point. Is the basic education and the higher education is a very big difference. Earlier we can say the difference in the education system only the language. Language means the Hindi medium and the English medium. Is it okay? But right now the infrastructure differences, not the language medium. Infrastructure medium is the difference, is a very huge difference. We will focus on the job-oriented education. We can say that job converts human capital and the economical output also. Quality employment is not possible without the good quality of the education. Next, we can employ the formal work spend and the tax system and the national development also. If we can say that we are the professor, that we are deducting the more than 30% tax, it is a very high rate of the taxes also. Something is we can thinking about here also, and minimum wages also as per the legal or the as per the act also involvement in the employment in India. Now, if we can take the good education, so we can should create the new jobs. Next one is the entrepreneurship. If we are very good academician, or we can put the very good information, very good skill of education, so that we can innovate or we can discuss about the entrepreneurship. India has grown rapidly. We have a lot of thousands of entrepreneurship in India, but mainly our focus on the who or the how of the succeed and how many number of entrepreneurs will be going to ahead. Like without entrepreneurship, we cannot create any job, because manufacturing is our backbone in future also. Not right now and in future also. We can think and we can rethink in the out of the box. It is our entrepreneur based minded. Second one, the driven innovation or the technology adoption and the local solution also. If we can employ a good the new National Education Policy 2020 is a very good implementation by the government, because after that we have so many thinking in the education system, like to the technology base, like to the innovation base, like to the happiness base. We can say that enhance the productivity through our education system. We have improved our MSMEs by the government, social entrepreneurship, and build a resilience of the global market. Next one, if we are success in our first is like education. If we have the good education and we provide the good education in India in every village, so that we can ahead. After that, we have no requirement of the employment, because if we are very good education, or we have find a very good education, that we can rethink about the self-entrepreneurship and the self-business also. So that we have the entrepreneurship, we have the employment, and we have the good education. Automatically, fourth E is the automatically develop. Automatically develop is the economical flow. When we have the earning, when we have the rethink, when we have the innovation in the education system, good. So that economic development is the compulsory. It is the number one in the economic development. Involve infrastructure, informative and the low value or high value sector. Next thing is the depend on the innovation, depend on the infrastructure, depend on the good governance and financial inclusion. That's the main role of the good governance and the finance inclusion in the economic development. Second thing is the economic development that lead to the increased competitiveness and long-term priorities. Especially our government has rethinking again and again about the economic development, because we have the good governance right now. We have no problem in financial inclusion, but we have some problem in our basic education system. Second thing, in the economic development is a very good. The create the environment for the education, employment, and
when we have the money flowing around level, so that economic always is developed. Second thing, in the finally, is the pathway of the global prosperity. Yes, it is an important thing. After that, we have completed the 4 E's, like to the education and the employment, entrepreneurship. Yes, 4 plus. If we have the 4 plus, is very strong. My question is the same with the another plus. The employment number, next one is the agriculture. This is the more important pillar of the Indian economy, because we have survived on the agriculture base also. One of the agriculture is the most important component of the economic development. But we are discussing about the pathway of prosperity. Very important point. Number one is the pathway is the human capital or the human capital. It means that we have the innovative ideas, we have the entrepreneurship, but we are not satisfied our employees. How is that possible? We can improve our productivity. If I am the very good teacher, if we have no any facility, we have no any infrastructure, how is it possible we can our 100% with the students? Because we have no good infrastructure, if we have not a good internet, we have no good any arrangement with the corporate sector and academicians. So that is the very important point, is the human capital productivity manforce. We can provide also the technical vocational education training also, like to the science, technology, engineering and mathematics also. Second pathway is the employment. Employment is the more important role in the any pathway when we will go to the global prosperity. Like employment inculcate with the social economical stability. We should be rethink on the policies for the job creation. We are behind the China because we are not produce or the create the jobs. That is the main reason. We are one consumer in the world. We are not the number one manufacturer in the world. So that a common problem for our young generation is the employment. We should focus on the policy of for the job creation in India. In the employment and the social employment stability, the labor market reforms also. Right now, our marketing is the market is the digital. Right now, so we are rethink about the which type of job we have create or we will create, because you can see sorry, Professor Umal told already the AI. If you can see that after the AI, how many jobs or the AI impact on the how many number of jobs, how many number of quality of job impact, like the banking, the service sector, like the banking, education, must impact on the AI. So we should know about. I am not the Finland, I am not the any small country, I am a very big country. We have a 140 million population. So we think about the AI. Where is the state of the job? That's the point. My question is that it is not the computer. Computer is a machine, but AI is a different type of machine. Professor already discussed about the robotics. You can see that China, you can see anywhere. Now, robotics is a very important role in the future manufacturing. You can take the example of the motor car industry. More than 60% of the robotic industry, like to the Maruti, like to the Hyundai, like to the Kia, there is the 60% of the robotic. That is the employment challenge in future also. Next thing is the pathway is the entrepreneurship. Entrepreneurship is a very important. If we have not entered into the entrepreneurship, we have not the more than entrepreneurship. So that how is it possible we can go ahead? You can see so many companies in India, like to the Paytm, like to the big basket, so many companies, but only the job, only the delivery boy. How is it possible? All the generation paid the delivery boy employment. That is my question. Maximum job paid only the delivery boy. So this is the questionable. We are not focused on these things.
And entrepreneurship always focus on the innovation. So what will we do with the AI? We can increase our employment with the AI. We can increase our education with the AI. How we will compete with the technology? My question. How many number of incubation center in your college and universities? How many condition? What is the condition of your department of the AI? We are discussing. What is very rapidly growing, very rapidly high rate. So that my question is that entrepreneurship rethink and the enabling regulatory framework also. And fourth one pathway is the economical development, like means the structural infrastructure or the structural transformation. You can see the, I will give you one example. How many number of persons will go to the bank directly right now? I think my experience is less than 40 or 30% maximum go to the bank, because we have adapted all these things in the bank as a digitalization and the transformation. You can see we have everywhere Paytm, we have everywhere digital card, we have everywhere the digital money, digital currency. You can see the coming to the digital currency. We have we have maximum people don't know about the digital currency. Digital currency is the separate identity in the coming future. Digital currency, I will give you the one example of that. If you give to the, government give to a subsidy right now for the only the purchase the cylinder, or government give to the digital currency of the 1,000 rupees per head. It means that you will purchase only the cash cylinder 1,000 rupees. You will not purchase anything else on the cash cylinder. It is the digital currency. If you want to purchase 1,000 rupees or the 1,000 digital currency, you will want to purchase wheat or the rice. You will not purchase. Only you will purchase to the gas cylinder. That is the digital currency. Government gives to the subsidy, government gives to the grant also. If you have take the grant for the traveling, that digital currency means that you will be expensive all the amount during the transportation or the traveling. That is the digital currency. If you are as a parent, you will give to the 1,000 rupees of your children for the only for the purchase cloth. So that your son or your children only purchase the 1,000 rupees, only the dress. He will not, or they will not purchase any food item. They will not any movie ticket. That is the digital currency. It is a very sticky future of the digital currency, so that we will be very think about the digitalization in the Indian country. That is the fourth one, the economic development, the structural transformation. And fifth one is the integrated approach, the global prosperities. We think about the condition across the ministry, across the sector, ministry means as well as private sector and the public sector. We think about the SDG, Sustainable Development Goals, link the development strategies. We think about strategies, global partnership, and South cooperation also. That is the pathway of the global prosperities of the fourth pathway. Is the key challenges. Key challenges will be faced. Number one, we will face the key challenges, the skill mismatching between the education and labor, or the education employment. We can take example. We have the professor, we have in the college, you can see the more than maximum, I know the account, but there is no any bursar in the commerce subject. Bursar role is the account, but Hindi teacher or Hindi professor becomes the bursar. That is the talent management. A person knows the very good English, but he job the accountant. That is the mismatch of the education. A person going for the education of the BTech, but he after the BTech he want to join the MBA. What is the intelligent combination, sir? You have preparation for the JEE. You will go to the engineering in the computer science, and after that you have joined the MBA. What is the combination? What is the combination? Next thing is the youth unemployment and
rising unemployment challenge, because we are moving the digitalization area or the digitalization, so that we have given to the all the person give to the example of the AI. That is the big challenge of the rising the youth employment in the future. Second, next one got barrier to finance and market access for the entrepreneurship. Barrier to finance and market, barrier to finance and market access entrepreneurs. It means that where is the finance and where is the market? There is no interpretation. That is a weak governance and policy fragmentation. You can see in the example of the petrol, what is the price of the daily of the petrol? What is the price of the petrol in Delhi? The 94 rupees. And you can see the price of the petrol in the Kerala or the South India, more than 100, more than 108 rupees. That is this type of the policy is the weak policy. We are in the 2 months ago, we are very discussing about the tariff war. Already we are existing in the tariff war in our India. You can see the so many taxes in the different states. That is the big challenge. And last one, the key challenge is the technology disruption, like to the AI, like to the automation, like to the robotics, like to the digital divided. These are the key challenges in the forthcoming or the forwarded to the new generation. In the conclusion, I am not taking the too much time. In the conclusion, education, employment, entrepreneurship, and economical development from the mutually reinforcing pathway forward globally prosperity. Nation that invest strategically in these pillars will be better equipped to the negative complexity of the post 2030 world. After the 2030 world, reduce the inequality, accelerate the innovation, achieve the sustainability and inclusive growth. I think remembering last word, education, health, employment and agriculture is the 4th pillar of the any country of the economy. So these are, I conclude my keynote address in this conference. Thank you so much for giving me the opportunity for this panel. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. We are deeply grateful for your insightful and comprehensive address on the conference theme, Education, Employment, Entrepreneurship and Economic Development, Pathways to Global Prosperity. Your thorough analysis, practical perspective, and inspiring thought have not only enriched our understanding of the topic, but also motivated all participants to engage critically and innovatively in these vital areas. We sincerely thank you for sharing your expertise, time, and wisdom, which will undoubtedly have a lasting impact on this conference and all of us present here. Thank you so much, sir. Thank you, Rajendra. Thank you, Professor Ravinder. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Dear participants, we would like to inform you that our next keynote speaker, Professor Kanchanlata Sinha, will not be able to join us the session today due to her health issue. We sincerely wish her speedy recovery. With this update, we will move now forward to the next scheduled guest and keynote speaker, Professor Preeti Rani ma'am. Now I request all of you to firstly please switch on your camera so we can capture the special moment of this event. Please open your camera. Please open your camera. Thank you. Now, I invite Mr. Tarun Kumar Arya, Assistant Professor Commerce and co-convener of this 2 days international conference, to invite and welcome Professor Preeti Rani ma'am on this virtual platform. Over to you, sir. Thank you, Dr. Ravindra Kumar Dogra, sir. Now,
I would like to invite our next esteemed guest and keynote speaker, Professor Preeti Rani, Head of the Department of Commerce, Dr. Pitambar Dutt, Parthwal Himalayan Government PG College, Kotdwar, Uttarakhand. Professor Rani is a distinguished academician with more than 28 years of commendable teaching experience. She also serves as the principal investigator of a major project titled Microfinance Empowerment for Uttarakhand Women, a project to stem migration, under the Mukhyamantri Uच्च Shiksha Sodh Prosahan Yojana. Her research contributions include the co-supervision of 3 PhD scholars, the authorship of 10 books, and the publication of 34 research papers in reputed national and international journals. She has actively participated in and presented at more than 50 seminars, conferences, and workshops. Professor Preeti Rani has been honored with several prestigious awards, including the Saraswati Bai Dadasaheb Phalke Award 2021, the Fantastic Female Award 2021, the Shikshak Samman Award 2023, and the National Isri Samman 2025. With great respect, I now invite Professor Preeti Rani to enlighten the vision with her scholarly address. Welcome, ma'am. Thank you, Tarun Kumar. A very good afternoon to all keynote speakers, distinguished guests, participants, and my dear colleagues. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. First, I would like to thank Dr. Ravindra Kumar to give me opportunity to speak on this prestigious platform. Thank you, Ravindra, from the bottom of my heart. Welcome, ma'am. Welcome. And Ravindra, you have said so much words which are something touching from my heart, to my heart. Thanks for your kind words. As you all of know that we all are gathered here today for our international conference, I think foundation of progress is not lies in technology and policy. It simply lies in education. And in today's world, as we forward rapidly, it's essential to understand how the resources have shaped our future. Let us embark on this journey together and explore how education shapes our society. मुझे नेल्सन मंडेला सर के कुछ वर्ड्स हैं जो याद आ रहे हैं. उनका कहना था, शिक्षा दुनिया बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है, और अगर आप भारत जैसे राष्ट्र को विकसित करना चाहते हैं तो अपने हर बच्चे को शिक्षित कर दीजिए, भारत खुद विकसित हो जाएगा. तो शिक्षा एक वो चीज है, वो हथियार है हम लोगों के हाथ में. अगर हमने सिर्फ एक काम कर दिया, अपनी पॉपुलेशन को शिक्षित कर दिया, इट मीन्स हमने वर्ल्ड जीत लिया, या आप ये कह सकते हैं वर्ल्ड जीतने की तरफ हमने एक कदम बढ़ा दिया. सो नॉट टेकिंग सो मच टाइम, बिकॉज टाइम पहले ही ज्यादा हो चुका है. आई विल लाइक टू स्पीक ऑन माई टॉपिक, विच इज एजुकेशन as a catalyst for economic empowerment in India. Let's get me please permission to share my PPT. Share, ma'am. You can share your PPT. Okay, thank you. ये आप लोगों को सबको शेयर हो पा रहा है ठीक से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your screen visible, ma'am. Okay, and now am I audible? Yes, ma'am. Okay, okay, thank you. You are audible, ma'am. Okay. So my today's topic is education as a catalyst for economic empowerment in India. सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि एजुकेशन जो है वो शक्तिशाली क्यों है, वो किसी भी नेशन के डेवलपमेंट की आधारशिला क्यों है.
क्यों हम ये कहते हैं कि वो किसी भी नेशन के लिए बेस है? नेल्सन मंडेला जैसे बड़े जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने ये कह दिया। क्यों कह दिया? क्या कारण था कि उन्होंने हमारे से ये बात कही? क्योंकि जो एजुकेशन है वो गरीबी के जाल से मुक्त कराती है, हमारा जो स्किल है उसको बढ़ाने का काम करती है, और जैसे ही हमारी स्किल बढ़ती है हम इंक्लूसिवली ग्रोथ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। हमारा इससे ना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, बल्कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है उसका थॉरो डेवलपमेंट केवल एजुकेशन से ही हो सकता है। इसीलिए इसको इतना पावरफुल वेपन कहा गया है। इसी के साथ साथ जो ये एजुकेशन है ये हमें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराती है, एक कॉन्फिडेंस उस इरा में जाने के लिए प्रोवाइड कराती है जो नॉलेज ड्राइवन इकोनॉमी है। ठीक है, बहुत सी बार ऐसा होता है हम लोग जब सामने वाले को देखते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो बहुत ज्यादा रिच है, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो हमारे सामने ये सारी चीजें दिखा रही हैं, तो ये सब चीजें उनके पास आ कहां से रही हैं? क्योंकि वो लोग एजुकेशन में स्ट्रांग है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा स्किल्ड कर लिया है। इससे जो एजुकेशन होती है, पॉवर्टी का साइकिल टूटता है। पॉवर्टी का जैसे ही साइकिल टूटेगा वैसे ही लोगों में कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। पॉवर्टी का साइकिल टूटेगा कैसे? क्योंकि जब आप को नॉलेज होगी, जब आपके पास एजुकेशन होगी, तब आप ज्यादा अर्निंग की तरफ जाएंगे। ज्यादा अर्निंग की तरफ जैसे ही जाएंगे आपका पॉवर्टी साइकिल टूटेगा, आपका नेशन जो है वो ज्यादा डेवलपमेंट कर सकेगा। तो इस तरह से ये एक चेन है जो एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती है। इसी के साथ साथ भारत जो हमारा देश है, जहां पर हम लोग रह रहे हैं, 1.4 बिलियन पीपल का एक देश है, जहां पर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है। इसकी ग्रोथ के लिए हम बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कैसे अपने इकट्ठे करें, ये सारी चीजें भी एजुकेशन हमें देती है। हमें एजुकेशन बताती है क्रिएट कीजिए, आप नए नए सॉल्यूशन, इनोवेटिव बनिए, एंटरप्रेन्योर्स बनिए, ताकि आप खुद अपना भला नहीं करें, 4 और लोगों को भी आप अपने साथ काम दे सकें। जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है एजुकेशन का, वहां पर अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट 250 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल्ड है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पर, जिसमें से 26% लोग ऐसे हैं जहां पर हायर एजुकेशन में अभी भी स्पेस है। इन हायर एजुकेशन श्रिंक सिग्निफिकेंट रूम फॉर एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट। ये जो रूम खाली है ये हमारा ग्रोथ हो सकता है। हायर एजुकेशन में अभी हमें 26% और तरक्की की जरूरत है। अगर हम इसको गेन कर लेते हैं तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा टेक्नोलॉजी सिस्टम है, वो इम्प्रूव हो सकता है। इसी के साथ साथ हम अगर देखें प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट की बात करें तो ये तो बहुत ज्यादा दिखता है आज की डेट में। 96% एनरोलमेंट है हमारा प्राइमरी एजुकेशन में। लेकिन यहां पर मैं एक बात कोट करना चाहूंगी, इट इज अ नंबर ओनली, इट हैज नॉट अ क्वालिटी। यहां पर हमें क्वालिटी दिखाई नहीं देती। एक्चुअली जो हमारी शिक्षा है, वो हमारी शिक्षा हमें ये कहती है कि आप किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं करेंगे, सभी बच्चे स्कूल आए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव इस चीज के लिए लिए हुए हैं। गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रही है, आप बच्चे को स्कूल भेजिए, मील हम देंगे, पैसे हम देंगे, बैग हम देंगे, बुक्स हम देंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड योर चिल्ड्रंस। सो हम अपने बच्चों को स्कूल तो भेज रहे हैं, बट एक्चुअल में ये 96% जो नंबर है, ये बहुत ही सुंदर एक नंबर हमें दिखाई दे रहा है, बट कहीं ना कहीं इसमें क्वालिटी की कमी है, जिसको बढ़ाना हमारी एक जरूरत हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनुअल ग्रेजुएट्स की, तो
हमारा 15 मिलियन जो एनुअल ग्रेजुएट करके निकलते हैं लोग, वहां पर वो लोग अपने लिए अच्छी क्वालिटी के एम्प्लॉयमेंट की खोज करते हैं, लेकिन सच मानिए दे ऑल आर नॉट गेट द प्रॉपर जॉब्स, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें प्रोफेशनली साउंड नहीं करता, जिसके कारण जो बच्चे हमारे एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेकर के निकल रहे हैं, उनके पास वर्क की कमी रहती है। ना तो वो एंटरप्रेन्योर्स बन पाते हैं और ना ही उन्हें कोई और चीज हासिल हो पाती है। हमारा उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट नो डाउट बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारा जरूरत जो है उसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बनाने की जरूरत है, क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत है, स्किल इनहेंसमेंट करने की जरूरत है। अब यदि हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो हमारी एजुकेशन के आड़े आ रहे हैं और इन बैरियर्स को हम इकोनॉमिक स्टेटस में ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो हमारी एजुकेशन है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो फैमिली लेवल पर हो, पर्सनल लेवल पर हो, गवर्नमेंट लेवल पर हो, मुझे तो सभी जगह वो और कंट्रीज के कंपैरिजन में कम ही दिखाई देता है। हमारा जो इंडिविजुअल है, जो एग्रीकल्चर और खास तौर से लेबर क्लास से आता है, वो लोग इसमें अपना कम पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि दूसरी जगह इससे 3 गुना 5 गुना ज्यादा वो लोग पैसा खर्च करते हैं। तो जरूरत इंडिविजुअल की, क्योंकि जब एक इंडिविजुअल अपने आप को सुधारता है तो नेशन में अपने आप ही इंप्रूवमेंट होता है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपने लेवल पर एजुकेशन में अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें, ताकि हम दुनिया के लेवल पर आ सकें। इसके अलावा जो स्किल एक्विजिशन है, चाहे वो टेक्निकल लेवल पर हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, ये सभी चीजें अगर मिल जाती हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप आ जाती है, और इसी के साथ साथ बहुत सारी करियर की एडवांस अपॉर्चुनिटीज हैं जो लोगों को मिलना शुरू हो जाती हैं। तो स्किल एक्विजिशन वोकेशनल टेक्निकल लेवल पर बढ़ाने की जरूरत हम लोगों को है। अगर इस पर वर्क किया जाएगा तो नो डाउट बहुत सारी चीजें सॉल्व करने में हमारा देश सक्षम हो पाएगा। इसके बाद सोशल कैपिटल, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, एजुकेशनल institutions create networks, mentorship opportunities and social mobility pathways that opens door previously closed to disadvantaged communities. जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन मेंटोरशिप अपॉर्चुनिटीज इस तरह की प्रोवाइड होनी चाहिए उसमें, ताकि जो डोर हमारे लिए प्रीवियसली बंद हो चुके थे, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे हमारे अपने देश में कुछ खास लोगों के लिए बंद हो गए हैं, वो चीजें फिर से हमारे लिए ओपन हो सके। इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरत है एजेंसीज की ऐसी डेवलप हो जो कि बेटर नेगोशिएशन में हमारी हेल्प कर सके। जो राइट्स हैं उन राइट्स को हम कैसे अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं, इसकी नॉलेज हमें दे सके। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उसको एम्पावर करने में हमारी हेल्प कर सके। तो इस तरह से करके जो एजुकेशन है, ये जो बैरियर्स हैं, ये बैरियर्स टूटने चाहिए और ये सब इकोनॉमिक स्टेटस से ही संभव हो सकता है। एजुकेशन डिविडेंड, इंडिया का जो एजुकेशन डिविडेंड है, जो जीडीपी ग्रोथ है, उसमें जितना सरकार खर्च करती है वो अभी तक कम है। नो डाउट कि पीछे सरकारें कंटिन्यूअसली कोशिश कर रही हैं इसको बढ़ाने की। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन बजट 2024 में 1.2 ट्रिलियन डॉलर का रुपीस का इन्वेस्टमेंट एजुकेशन डिविडेंड में किया गया है, बट कहीं ना कहीं ये अभी भी कम है और इसमें और अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है।
और मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट तो फिर भी चलिए हो जाए, बट वो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बहुत सी बार जो हम लोग देखते हैं कि पैसा इन्वेस्ट कर दिया बट उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, पैसा लगा दिया, केवल वो क्वांटिटी है, क्वालिटी इज नॉट देयर। सो इन दोनों के बीच में जब तक जो ये ब्रिज है, ये जो गैप है, ये खत्म नहीं होगा, तब तक क्वालिटी एजुकेशन की हम बात नहीं कर सकते, या जो वास्तव में नॉलेज है उसकी कहीं ना कहीं हमारे देश में कमी रह जाएगी। नेशनल एवरेज, जो नेशनल एजेंसीज हैं वो बता रही हैं कि 77.7% हमारे देश में लिटरेसी रेट है। अगेन इसको फिर से क्वालिटी में कन्वर्ट करने की जरूरत है। जेंडर इक्वलिटी थ्रू एजुकेशन, अभी तक अगर हम प्रीवियस इरा की बात करें तो क्या था कि हमारे देश में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था एजुकेशन में और उसके बाद बिजनेस में या जॉब्स में, वो बहुत कम था। यानी कि एक जो अगर मैं एक मोटा सा आइडिया ले लूं, एक 50% जो एजुकेशन थी हमारी, सॉरी एजुकेशन ही पॉपुलेशन थी, उसको बिल्कुल ही इन चीजों से दरकिनार कर दिया गया था। लेकिन पीछे 30-40 सालों में इसमें बहुत ज्यादा चेंज देखने में मिला है। और आज की डेट में हमारी जो विमेन्स है वो भी पूरा काम कर रही हैं। उसका एक एग्जांपल मैं भी हूं, मैं आज आपके सामने अपना पेपर प्रेजेंट कर रही हूँ। दिस इज बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन पार्ट। अगर एजुकेशन अगर हम लड़कियों को एजुकेट करना शुरू कर देंगे तो जो हमारी फ्यूचर अर्निंग है वो 10 to 20% इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप एक वुमेन को एजुकेट करते हैं तो उसकी एजुकेशन से पूरे देश को फायदा होता है, उसके अपने परिवार को फायदा होता है, अपने परिवार की हेल्थ, न्यूट्रिशन और जो एजुकेशन आउटकम है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक महिला जब एजुकेट होती है तो वो अपने पूरे परिवार के लिए काम करना, उस वे में काम करना शुरू कर देती है। इसी के साथ साथ फीमेल लिटरेसी स्टैंड एट 70.3 कंपेयर टू मेल लिटरेसी रेट एट 84.7। अब डेटा हमें ये बताते हैं, आज का प्रेजेंट जो डेटा है वो ये बताता है कि आज भी हमने नो डाउट, आज हम अपनी लड़कियों को, अपनी गर्ल्स को शिक्षित कर रहे हैं, बट इसका जो रेट है वो एज कंपेयर टू मेल अभी भी कम है और उसमें इंक्रीमेंट की जरूरत है। जो एजुकेशन वुमेन होती हैं आज की डेट में 62% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कर रही हैं वो, और उनका जो है 18% ओवरऑल वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हैं। कहां पर? जॉब्स में। हमें देखने को मिलता है कि 2/3% हमारा जो पॉवर्टी है वो कम हो रहा है। पहले हमारे यहाँ का पॉवर्टी रेट ज्यादा था, लेकिन अब सेकेंडरी एजुकेशन क्योंकि ज्यादा बच्चों ने गेन कर लिया है तो पॉवर्टी रेट कहीं ना कहीं हमारा घटा है, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। और जो लाइफ टाइम अर्निंग है वो 10 लाख रुपीस तक पहुंच गई है, जो कि विमेन्स के पार्टिसिपेशन के कारण, एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किए जाने के कारण, गवर्नमेंट का मोटिव ज्यादा होने के कारण, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने के कारण इन सब चीजों पर फर्क पड़ रहा है। फ्यूचर तक अगर हम कुछ और सालों तक अगर यही ग्रोथ रेट कायम रही तो वो समय दूर नहीं होगा जबकि हमारा देश वास्तव में नेल्सन मंडेला के कहे शब्दों पर खरा उतर जाएगा। स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। स्किल डेवलपमेंट जो है वो हमारा कहाँ जोड़ता है हमें? वो स्किल हमें जोड़ता है कौशल विकास से। कौशल विकास जो है अगर लोगों के पास होगा तो उस कंडीशन में हम अपने देश में बहुत सारे लोगों को काम पर लगा पाएंगे। यही उद्देश्य रखते हुए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के तहत 2025 तक 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित कर लिया है, जिसमें आईटी, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, फोकस मेक इन इंडिया से इंजीनियर, एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरह से, और जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा काम पर लगाकर इस चीज को
या आप ये कह सकते हैं जो हमारा गैप था उसको भरने की कोशिश की है। क्योंकि भारत जो एक 140 करोड़ लोगों का देश है, वहां पर सरकार सबको जॉब प्रोवाइड्स कराएगी, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो सरकार ने इसका एक दूसरा पहलू सोचा और सरकार ने कहा अगर मैं लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देना शुरू कर देता हूं और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अर्निंग की तरफ ले जाएंगे, और कहीं ना कहीं जैसे ही वो उसमें साउंड होंगे, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, सभी चीजें हमारी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ सरकार जो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है वो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, इंजीनियरिंग में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, सरकार इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है। बहुत सारे जो हमारे वर्कर्स हैं वो ये ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक विजिट पर गए थे जहां पर सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो माइक्रो इकोनॉमी है, वहां पर सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है ताकि वहां की जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग मिले, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और जो छोटे और दूर दराज के गांव हैं जहां पर बैंक की फैसिलिटीज भी नहीं है, वहां पर बैंकों को सरकारों ने घर तक ही पहुंचा दिया है महिलाओं को शिक्षित करके। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है, विजन है गवर्नमेंट का, जिस पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और हर क्षेत्र में, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी हो, मैन्युफैक्चरिंग स्किल हो, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग हो, सरकार का एक ही मोटिव है कि वो अपनी पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा स्किल प्रोवाइड करे, एजुकेशन प्रोवाइड करे, जॉब्स प्रोवाइड करे, या कोई भी बिजनेस प्रोवाइड कर सके, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने घर का, अपने देश को, नाम दोनों का ही रोशन कर सके। अब इतना आसान भी नहीं होता है केवल कह देना, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब इंसान काम कर रहा होता है। क्योंकि जब तक हम थिंकिंग करते हैं तब तक वो हमारी एक सोच होती है, और जब हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वहां पर ही हम लोगों को पता चलनी शुरू होती है। और ये मिशन तो एजुकेशन वाला मिशन आज से नहीं चल रहा, कई सालों से सरकार इसमें लगी हुई है, कोशिश कर रही है, जिसका परिणाम धीरे धीरे हम लोगों को दिखाई भी दे रहा है। बट इसमें जो हमारे देश में चैलेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन एम्पावरमेंट में, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है क्वालिटी डिस्पैरिटीज। अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल्स खोल दिए हैं, रूरल एरियाज में है, बैकवर्ड एरियाज में है, शहरों में है, जहां पर स्कूल बिल्डिंग खुल गई है, बट अगर हम बात करें वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, टीचर्स की शॉर्टेज है, और इसी के साथ साथ वहां की जो लर्निंग है उसका आउटकम अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा नहीं है। कहीं कहीं पर यह भी देखने में आता है कि वहां के जो बच्चे हैं वो 10th क्लास तक पहुंच जाते हैं और एक छोटी सी एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाएंगे, या अगर आप उन्हें एक छोटा सा पैराग्राफ दे दीजिए तो भी वो उसको प्रॉपरली नहीं लिख पाएंगे। जबकि और स्कूलों में अगर आप देखेंगे, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां पर ये काम बच्चा शायद सेकंड या थर्ड क्लास में ही कर लेता है। तो कहीं ना कहीं हम क्वालिटी में मात खा रहे हैं। इस चीज में इसका चैलेंज सरकार के सामने सबसे बड़ा है। इसके बाद ड्रॉप आउट रेट आता है हमारे देश में। मैंने जैसे अभी पीछे की स्लाइड में आया था, 96% हम लोग एजुकेटेड कर चुके हैं अपने छोटे बच्चों को, लेकिन जैसे ही वो बच्चे बड़े स्कूल की तरफ जाते हैं, सेकेंडरी लेवल पर जाते हैं, वहां पर 17% ड्रॉप आउट रेशो देखा गया है। हायर एजुकेशन में पहुंचते पहुंचते ये रेशो और भी कम हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में और भी ज्यादा कम हो जाता है, रिसर्च जो है उसमें ये रेशो और भी बहुत ही कम हो जाता है। इतने बड़ा नेशन जो 140 करोड़ लोगों का है, मुट्ठी भर लोग ही होते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे एरिया में वर्क कर रहे होते हैं। तो जो ये ड्रॉप आउट रेशो है, ये जो रेशो है, अगर ये इतना ज्यादा 17% हमें केवल सेकेंडरी लेवल पर दिखाई दे रहा है,
बढ़ता चला जाता है। अगर इसको कम नहीं किया गया तो एजुकेशन जो सरकार का हमारा एक सपना है भारत को स्किल्ड करने का, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। इसके बाद है स्किल मिसमैच। अगर आप बात करें 45% जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो आज भी अनएम्प्लॉयड हैं। कारण क्या है? कारण ये है उनके पास स्किल नहीं है, प्रोफेशनल स्किल नहीं है, टेक्निकल स्किल नहीं है। जो हमारा बच्चा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके इतने सारे साल अपने इन शिक्षा में खर्च कर रहा है, जब वो ये करके निकलता है तो उससे ये कह दिया जाता है यू हैव नॉट प्रोफेशनल स्किल, यू आर नॉट स्किल इन दिस फील्ड। तो उन लोगों को जॉब ही नहीं मिलती, और जब जॉब नहीं मिलती तो वहीं से निराशा शुरू हो जाती है, वहीं से टेररिज्म या आप ये कह सकते हैं चोरी चकारी और जितनी भी बुराइयां हैं वहां से निकलना शुरू हो जाती है। तो इस गैप को भी भरने की कहीं ना कहीं जरूरत है। बैरियर्स हैं बहुत सारे। बैरियर्स जो हैं वो हमारे रूरल एरियाज में अगर आप देखें कॉस्ट में डिफरेंस है। जो खर्चा सरकार रूरल एरियाज में कर रही है और जो ट्राइबल एरियाज में कर रही है वो बहुत ही ज्यादा कम है। वहां पर टीचर्स ज्यादा पहुंचाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की जरूरत है, जो कि ना होने के कारण एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के सामने है। वहां पर डिसेबिलिटी है, लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार लगातार जैसा कि मैंने पहले भी कहा इस चीज में काम कर रही है कि किस तरह से आप इंडिया को एक विकसित भारत बनाने में के लिए अपने सारे ही स्टूडेंट्स को, अपने सारे जितने भी बच्चे हैं उनको एजुकेट कर सकें। इसके लिए सरकार के द्वारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है। आज अगर आप देखें हमारे सभी कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। गवर्नमेंट हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, उनका एक ग्रुप बनाकर जो प्रॉपर आप कह सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर हमारे बच्चों को भेज रही है ताकि वो वहां से सीख करके आए। इसके अलावा सरकार के द्वारा बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी इस फील्ड में किए गए हैं। सरकार ने इसके अलावा और 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया था, जिसमें 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को ये अधिकार दिया गया है कि आप फंडामेंटल एजुकेशन तो प्राप्त करेंगे ही। इसके लिए सरकार ने उन्हें, जैसे मैंने पहले भी बताया, स्कूल बैग्स फ्री दिए जाएंगे, टीचर्स उन्हें कोई फीस पे नहीं करनी है उन्हें, बल्कि स्कूल में खाना दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें पैसे दिए जाएंगे और भी वो आगे तक अगर जाते हैं उनको पूरी तरह से सरकार की तरफ से हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी बनाई 2020 में, जिसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश का जो बच्चा है उसका 50%, एटलीस्ट 50% हायर एजुकेशन में एनरोल्ड हो जाए, ताकि वो बच्चा वोकेशनल इंटीग्रेशन हासिल करे, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग उसे हासिल हो। पहले जैसे मैं कॉमर्स की हूँ, कॉमर्स में ही बच्चा एनरोल्ड होता था, केवल उसे कॉमर्स की नॉलेज मिलती थी, बट आज की डेट में अगर बच्चा चाहता है तो उसे कॉमर्स के साथ साथ साइंस और आर्ट्स की भी नॉलेज मिलती है। तो इस तरह से सरकार ने बहुत सारे डिजिटल लैब्स बना दिए हैं जहां जाकर के बच्चा अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है सरकार के द्वारा, जो बहुत सारे तरीकों से बच्चों को एजुकेशन देने का काम कर रही है। और मैसिव वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए सरकार ने इंडस्ट्री लेवल पर सभी इंडस्ट्रीज को ये कह दिया है कि जो बच्चे हैं आप उनको बच्चे आएंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ ही साथ सरकार ने बहुत सारी ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं जहां पर जाकर के बच्चा अपना स्किल बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीजें सरकार के द्वारा की जा रही हैं। इसके अलावा सरकार ने टेक्नोलॉजी में बच्चों को एम्पावर करने के लिए स्वयं दीक्षा इत्यादि प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जहां से बच्चा पढ़ के अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकता है।
और सरकार ने सबसे बड़ा जो पॉइंट नेशनल पॉलिसी 2020 में रखा था वो है जीडीपी का 6% आप एजुकेशन पर खर्च करेंगे। तो ये भी एक सरकार का बहुत बड़ा कदम है, ताकि क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में ज्यादा होगा तभी कहीं ना कहीं बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी। इसके बाद अगर हम देखें आज पीछे कुछ सालों में सरकार ने इतनी ज्यादा स्कीम चला दी हैं। पहले क्या होता था, एससी और एसटी के जो बच्चे थे वो घर से बाहर नहीं निकलते थे, उन्हें कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम रहती थी। इसके अलावा कहीं और कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। जो हमारी गर्ल्स हैं, जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, इन सबको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। आज सरकार ने कह दिया आप पढ़ने के लिए आगे आओ, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला दिए हैं। अभी हाल फिलहाल में ही हम अपने बच्चों से फॉर्म भी भरवा रहे हैं, जैसे आप सब जानते हो, जिसमें सरकार 18,000 रुपए, 30,000 रुपए, 12,000 रुपए एनुअल बेस पर उन्हें स्कॉलरशिप दे रही है। सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है, हम इनिशिएटिव ले रही है कि आपका जो हमारा जो बच्चा है, जो हमारा यूथ है, वो कहीं ना कहीं स्किल्ड हो और पैसे की जो प्रॉब्लम है उसकी पढ़ाई में आड़े ना आए। अब सक्सेस स्टोरीज है ये कुछ, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैंने देखा है विमेन लेवल पर, क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट का टॉपिक है वो भी विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, एसएचजी से जुड़ा हुआ है वो टॉपिक। मैंने खुद देखा है, मैंने और जो मेरी साथ में जो है डॉक्टर अंशिका बंसल, हम दोनों अभी कुछ दिन पहले ही पौड़ी गए थे। वहां पर हम लोगों ने देखा जो विमेन्स हैं किस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ करके उनका एम्पावरमेंट हो रहा है। केवल एक वुमन का एम्पावरमेंट नहीं होता जब वो काम करती हैं, पूरी पूरी फैमिली का, फैमिली से सोसाइटी, सोसाइटी से नेशन, नेशन का जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं हमने एक औरत का डेवलपमेंट नहीं किया। आज लेडीज जो हैं वो अपने बैरियर्स को तोड़ रही हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम लोगों ने खुद देखे हैं कि किस तरह से वो अपने साथ साथ अपने परिवार की जो अर्निंग्स है उसको बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। बैंक आज की डेट में सरकार के द्वारा छोटे छोटे जो गांव हैं वहां पर बैंक सरकार घरों में भी पहुंचा रही हैं। जो वुमेन्स हैं उनको एम्पावर किया जा रहा है। सिलिकॉन वैलीज का है, आप देखेंगे वहां पर बहुत सारी कंपनीज वगैरह हैं, खोल रही हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती हैं, जिससे हमारा जो इम्प्रूवमेंट है लोगों का वो हो रहा है। बीपीएल फैमिलीज जो थी, आज की डेट में हमारा जो बीपीएल का डाटा है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है। पहले हमारे देश में बीपीएल फैमिलीज ज्यादा थी, लेकिन आज की डेट में वो फैमिलीज कम हो गई हैं। ये सब हो सका है क्योंकि उनकी एजुकेशन बढ़ी, उनकी पेइंग पावर बढ़ी, जिसके कारण ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकी हैं। सरकार के द्वारा समय समय पर हर जगह, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे कंपनीज हो, हर जगह पर सरकार के द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योर्स बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। और इसके लिए सरकार जो विमेन्स हैं उन पर भी बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का काम हो, चाहे उन्हें जैम, जेली वगैरह बनाने का काम दिया जाए। छोटे छोटे काम से उन्हें एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ हेल्थ की तरफ भी सरकार बहुत सारे काम कर रही है। रूरल हेल्थ केयर वर्कर्स सरकार ने तैयार किए हैं, जिसमें आशा वर्कर्स को आप और हम सभी लोग जानते हैं, जो घर घर में जाकर के जच्चा बच्चा का काम करती हैं और उन लोगों को, बच्चों को स्वस्थ रखने की तरफ, जच्चा को स्वस्थ रखने की तरफ इनके द्वारा बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो हमारे देश में जो हमारा यूथ है, जो पॉपुलेशन है, उसको एम्पावर करने की कोशिश कर रही है। सक्सेस स्टोरीज, ये कुछ और सक्सेस स्टोरीज हैं जो आईटी कंपनीज से जुड़ी हुई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं वो ये कहते हैं कि पहले वो आईटी कंपनी में कोई पोजीशन होल्ड नहीं करते थे, बट अब उनका पूरा की पूरा गांव जो है वो उसको लिए एक कोचिंग सेंटर की तरह काम कर रहे हैं और उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से जो वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर के पहले जो व्यक्ति 200 रुपए पर डे कमा रहे थे, वो आज की डेट में 50,000 रुपए मंथली कमाने में सक्षम हो गए हैं। और ये वास्तव में हो रहा है, तभी हमारे देश का जो बीपीएल है
वो आज की डेट में कम हो गया है। बीपीएल से निकल करके हमारा जो फैमिलीज है वो प्रोग्रेस की दिशा में बढ़ रही हैं। अब अगर कुछ रिकमेंडेशन की बात की जाए कि आप क्या रिकमेंडेशन करेंगे कि किस तरह से आप इन चीजों को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने देश को, नेशन को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, एम्पावरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, तो उसके लिए मैं कहूंगी क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए अदर देन क्वांटिटी की तरफ। अगर हम अपनी एजुकेशन को फोकस करें क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ ले जाने में, तो हमारा जो आउटकम है एजुकेशन का वो बढ़ जाएगा। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्यादा होने चाहिए। टीचर्स को पता होना चाहिए कि कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे बच्चों को रिटेन करके रखना है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो कि आज के समय की एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसके कारण कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन गिरती जा रही है। और ये एक चीज देखने में आई है आफ्टर कोरोना, थोड़ा सा पढ़ाई में जो बच्चों का टर्नओवर रेशो था स्कूल की तरफ, कॉलेजेस की तरफ जो ज्यादा आते थे, आज की डेट में वो थोड़ा सा फर्क पड़ गया है। एजुकेशन लिंक्स बढ़ाने की जरूरत है। इंडस्ट्री विजिट ज्यादा होनी चाहिए ताकि बच्चे वहां जाएं, वहां जाकर के देखें कि किस तरह से, किस मशीनरी पर किस तरह से काम होता है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स ज्यादा होने चाहिए और जो डिजाइन बनाया जाए एजुकेशन का, उसी डिजाइन में ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। नो डाउट एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस तरह की कोशिश की गई है, बट अभी धरातल लेवल पर वो इतना सक्सेसफुल होता दिख नहीं रहा है। प्रैक्टिकली ये चीज नहीं दिख रही है। हाँ, पेपर वर्क में ये बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को दिख रहा है, बट जो ऑन पेपर है उसे प्रैक्टिकली अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो नो डाउट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव हो पाएगा। और जो हमारा गैप्स है, उन गैप्स को भरने की जरूरत है। बहुत सी बार हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, बट हम लोगों को उसकी नॉलेज नहीं होती। बहुत सी बार जो लोग हैं वो उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, तो उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव अगर हम कर लेंगे किसी भी लेवल पर, तो हम उभरता भारत नहीं, विकसित भारत की तरफ बढ़ जाएंगे। आज की डेट में बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज है जो हमारे यहाँ यूज की जा रही हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोरोना हुआ था तब हम शुरू में किट्स वगैरह जो हैं वो बाहर के देशों से मंगा रहे थे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि हम लोगों ने अपने ही देश में उसको डेवलप किया और बाद में जो मेडिसिन वगैरह थी वो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। इसी के साथ साथ जो हमारी टेक्नोलॉजी है, रोड्स अगर आप देखें आज की डेट में हर जगह हाईवे बन रहे हैं, बहुत अच्छी सड़कें हो गई हैं, टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है। हम 5G से 7G में प्रवेश कर गए हैं और भी बहुत सारी न्यू टेक्निक्स जो हैं वो हमारे देश में लगातार काम कर रही हैं। आज हमने स्पेस में अपना एक स्पेस बना लिया है, और जो कहीं ना कहीं हमारे विकसित भारत को दर्शाता है। तो टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट डूइंग समथिंग, वी आर डूइंग, बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, लेकिन और इसमें स्टार्टिंग में जो एजुकेशन लेवल पर है वहीं पर थोड़े से सुधार की जरूरत है। एक जो हमारा इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, जो सीए है, वो तो एजुकेट हो चुके हैं ना, वो लोग तो कर ही लेंगे सब कुछ। लेकिन अगर हमने स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर अपने बच्चों को इस तरह की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, तो वो अपने आप से एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, अपने आप से बिजनेसमैन बनेंगे, अपने आप से ही वो नए नए काम शुरू करेंगे, जिससे भारत का विकास कोई भी नहीं रोक सकता। तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड and build economic prosperity for all. India's future depends on ensuring every child has access to quality learning opportunities that unlock their potential. That's it. Thank you. Thanks, ma'am, for delivering an exceptionally enlightening and inspiring session on education as catalyst for empowerment in India. And you well elaborated how technology break poverty through quality education and technology.
Ma'am, your scholarly insights, visionary perspective, and impactful reflection have truly elevated the intellectual spirit of this online conference. Your thoughtful analysis and empowering ideas have given us a deeper understanding of how education shapes economic progress and social transformation. We feel truly honored by your gracious presence and invaluable contribution. Thank you, ma'am, for enriching this academic platform with your wisdom. Thank you so much, ma'am. Thank you, Ravindra. Thank you for providing me these opportunities. Thank you. Welcome. Now, I invite Dr. Harish Chandra Ratudi, Organizing Secretary of International Conference, for vote of thanks. Over to you, sir. Thank you, Dr. Dogra Saab. Honorable Chair, distinguished speaker, respected delegates, and esteemed participants, it's my privilege to extend a heartfelt vote of thanks on behalf of the organizing committee. First and foremost, I express our deep gratitude to our chief guest, keynote speakers, and session chairs for sharing their profound insights, research experiences, and thoughtful perspectives. Your contribution have enriched our understanding of the evolving intersections between education, employability, enterprise development, and economic progress. Our special appreciation goes to the institutional leadership, advisory board, and partner organization for their continuous support and encouragement in making this event possible. We also acknowledge the efforts of our organizing committee, technical team, volunteers, and coordination staff whose dedication and behind the scenes work ensured the smooth conduct of very session throughout the day. To all our participants, we extend our warm thanks for your active engagement, thoughtful questions, and enthusiastic involvement. Your presence and participation are the driving forces that give meaning of this conference. We now look forward to meeting you all in the day of one technical session, which will begin shortly after this inauguration ceremony. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, I request Ms. Hina Nautiyal, Assistant Professor, Commerce, and co-convener of the conference, to kindly commence the technical session of day one. Over to you, ma'am. Thank you, Ravindra sir. Good afternoon, everyone. Sabhi ko namaskar. I am Hina Nautiyal, Assistant Professor Commerce and co-convener of the International Conference. I warmly welcome you all to this technical session of the day one. This session is focused on paper presentation. We have a series of insightful research papers to be presented, and I'm sure the session will be enriching for all of us. Now, I would like to announce that the organizing committee of the International Conference will present 3 awards each day for best paper presentation. The participants will be evaluated based on 3 criteria. Criteria number 1, quality and relevance of the research paper title. Criteria number 2, clarity and design of the PPT presentation. And criteria number 3, completing the presentation within the 4 to 6 minutes time limit. The session expert, Professor Preeti Rani ma'am, Head Department of Commerce, Government PG College Kotdwar, and conference organizing team will score each participant independently, and the result will be announced at the end of today's session. Please be noted that in the technical session of 2 days of conference, we will be announcing the best paper presentation award only. The best research paper awards will be evaluated and finalized by the association team led by Dr. Brajesh sir. The results will be announced by them after completing the review process. We wish all presenters the very best. I request each presenter to kindly keep their presentation within 4 to 6 minutes
so that we can ensure smooth proceeding and give everyone an opportunity to share their work. Please keep your microphone muted when you are not presenting. Let's begin the session. Now, as per the research paper presentation schedule, I would like to invite our first participant, Dr. Jagbir Singh, reference number 101. Yes, ma'am. Sir, please start your presentation. Okay, ma'am. Can I share my PPT? Not yet, sir. Please share your PPT. Good afternoon, everyone. I am Dr. Jagbir Singh. My presentation topic is Ayurveda as a pillar of the global prosperity, a multidisciplinary model for the education, employment, entrepreneurship, and the economic development in the. First of all, the object of this study, that of the growing of the global shift toward the preventive and the holistic healthcare and Ayurveda, emerging the behind of the therapeutics into the education, job, and entrepreneurship, and study with 160 respondents across of the Ayurveda ecosystem, and strong positive link between of the Ayurveda-based training and the income and livelihood growth and rise of the startup and tourism and the herbal product demand and support of the women empowerment, rural industrialization, and youth skill development. And the Ayurveda acts as a socio-economic accelerator for the sustainable development and strengthening the education, research, regulation, and innovation can boost of the global impact. And the introduction of this study, that of the growing of the global shift toward the preventive and the natural medicine and Ayurveda, I've also been therapy into the industry, commerce and innovation and support by the Ministry of Ayush, WHO, and Global Center of the Traditional Medicine, educated workforce and plus community perspective. And the aim and the objective of the Ayurveda in generating the education, employment, and entrepreneurship and the economic development, strengthening of the global prosperity. And the objective of this study of the analysis of the Ayurveda role and skill development include the employment Ayurveda and assess the entrepreneurship across the Ayurveda value chain. Statement of this study, that of the despite of the growing of the global demand inside of the 2005 to 12, that of medicine 2013 to 17, that of the education and competency base of the learning, and 2018 to of the Ayurveda market expansion, and 2022 to 25, that Ayurveda as an economic growth and global prosperity engine. And the hypothesis of this study, that of the null hypothesis, that progress in Ayurveda sector has no significant impact on the socio-economic prosperity, and the alternative hypothesis, that of the H1, that of the progress in the Ayurveda sector has been a significant positive impact on the socio-economic prosperity across of the education, employment, and entrepreneurship, and the economic development. And the methodology of this study, that of the and the description, that of the research type, that of the mixed type of the exploratory and descriptive study, and the sample size, that of the 160 respondent, and the representation, that of the Ayurveda physician, entrepreneurship, farmer, therapist, and student, and the industrial professional, and the sampling techniques, that of the stratified random sampling and tool for the data collection, that of the structure questionnaire plus of the semi-structure interview, and the variable, that of the independent advancement of the Ayurveda
and the dependent of the socioeconomic prosperity, and the statistical tool that of the descriptive statistics that of the chi-square test and the simple regression is also used, and the software that of the SPSS 26.0 that is also used. And the respondent demography data representative of the practitioner that of the 33.75% and entrepreneurship 19.38% and farmer 16.25% and tourism professional that of the 13.75% and student or researcher that of the 16.87%. And the income growth impacted as the category of the entrepreneurship that of the percentage reporting growth that of the 86% and the average rise that of the 40% and the wellness industry 82% of the annual that of the percentage of the reporting of the growth and 37% that of the average rise, and the farmer 79% of the reporting of the growth and that of the averagely 34% increase, and practitioner 74% of the reporting of the growth and 28% of the average. And the major Ayurveda employment sector that of the 55% of the clinical therapy service and 41% of the herbal and nutraceutical manufacturing and the 34% of the wellness, tourism and spa and 26% of the academia and the research. And the Ayurveda and the economic value chain that represent of the cultivation, that of the extraction and manufacturing, branding, packaging and domestic global distribution and tourism and lifestyle medicine and inclusive economic growth. And then the statistical analysis finding that of the all the chi-square value indicator of the significance relationship that of the P is less than of the 0.05, that is highly significant between of the Ayurveda progress and the employment, entrepreneurship and regional economic development. That is also support of the H1 that of the alternative hypothesis. And a result of this study that of the increased employability in the Ayush ecosystem and rise of the Ayurveda entrepreneurship and MSME and the higher farmer income from the medicinal plant and bush in the wellness, tourism and export of the market and multidisciplinary education as of the Ayurveda integrate that of the biology, medicine, nutrition, mental health, pharmacology, psychology and environmental science and emerging program that of the Ayurveda nutrition, public health, Ayurveda psychology and integration of the medicine that of the digital Ayurveda that also support of the global career mobility. And the employment opportunity that of the hospitality, research and development and the pharma and the wellness and the hospitality and the herbal agriculture and skilling and the training industry and entrepreneurship opportunity that of the Ayurveda clinic and the Panchkarma center and the herbal medicine and the nutraceuticals and Ayurveda cosmetic and the beauty products and organic farming and supply chain and tele Ayurveda and digital health platform and the wellness retreat and tourism resort and the economic development that of the Ayurveda support of the rural development and the farmer employment and global wellness export and the tourism startup and the MSME innovation and youth and women empowerment and the sustainable development goal of the alignment that of the 3 for that of the good health and the wellness, 8 for of the decent work and the economic growth and 9 for the industrial innovation and the infrastructure and 12 for the reasonable consumable and production and of the policy support of the Ministry of the IUs, the WHO of the center. Sorry to interrupt, Dr. Jasbir Singh. We are approaching the time limit. Please kindly conclude. Okay, sir. Dr. Jasbir Singh, we are approaching the time limit. Discussion of this study that of the Ayurveda unite of the knowledge, culture and economic sustainability to maximize the socio-economic potential, promote of the evidence-based research, standardize global quality and the safety regulation and standing of the academia of the industry linkage, and the conclusion of this study that of the Ayurveda is a pillar of the global prosperity, enabling of the health and the wellness, livelihood and the employment and entrepreneurship and the export, rural and the global market growth, and investment in research, innovation and the education can transform the Ayurveda into the global economic super sector of the 21st century. These are the references used in my study, and thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now we move to next presentation. Dr. Piyusha Sharma, reference number 102. Dr. Piyusha Sharma, reference number 102. Not available right now. We move to reference number 103, Dr. Chandra Bhalab Nainwal,
Are you there, sir? Dr. Chandra Ballabh Nainwal. Sir, are you presenting there? Sir? Chandra Ballabh Nainwal. Next participant is Dr. Pritam Kumar. Dr. Pritam Kumar. नहीं है रिस्पॉन्स. हमारे अगले प्रतिभागी हैं कृष्णा नेगी. यस सर. हाँ सर, अपना पेपर प्रेजेंट करें. जी सर, मैं स्लाइड शेयर कर दूं. जी सर, करिए शेयर. 500 ये हो गया ना. मेरी पीपीटी शो हो रही है सर? अभी तो शो नहीं हो रही है, पर आप अपना पेपर प्रेजेंट करें, है ना. मैं बिना पीपीटी के ही कर देता हूँ. हाँ, बिना पीपीटी का कर दो सर, है ना. जी. गुड आफ्टरनून ऑल. मेरा नाम कृष्णा नेगी है और मैं HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में शिक्षा विभाग में एक शोध छात्र हूँ. मेरा जो आज का टॉपिक है वो है उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की व्यावसायिक निर्णय क्षमता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका. इसमें सबसे पहले मैंने जब इस पेपर को एक ऑब्जर्वेशन के बेस पे या एक थीमेटिक एनालिसिस के बेस पे तैयार किया था, तो मैंने सबसे पहले देखा था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के क्षेत्र में क्या रोल निभाती है. तो मैंने देखा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आजकल हमारे लिए एक इसेंशियल चीज हो गई है. हमारे चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे हमारे हायर एजुकेशन में हो, चाहे हमारे स्कूल एजुकेशन हो, चाहे हमारे टीचर्स के लिए हो. इसी आधार पर जब हमने देखा कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, करियर पोर्टल, योग्यता मूल्यांकन, सिफारिश प्रणाली, मोबाइल एप्लीकेशन, सारे जैसे हमारे स्किल डेवलपमेंट हो गया स्टूडेंट के लिए. और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो जो हमारा वोकेशनल डिसीजन मेकिंग है, या हम जिसको कहते हैं कि आपका करियर डिसीजन मेकिंग में भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है. उसी परिप्रेक्ष्य में जब हमने इसका थीमेटिक एनालिसिस किया तो हमने देखा कि जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो चाहे 11th-12th के हो, उन पे क्या हो रहा है कि जो आज का बहुत ज्यादा इन पे प्रेशर पड़ गया है, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे ज्यादा फील्ड खुलते जाते हैं उतने ज्यादा दबाव हम पे आगे आते जाते हैं कि हम किस फील्ड को चुने. पहले के जमाने में हमारे पास इतने ज्यादा फील्ड नहीं हुआ करते थे, तो हम किसी भी एक क्षेत्र को चुन लेते थे, जैसे हमारा आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, हमारे छोटी मोटी जॉब्स हो गई. लेकिन आज के फील्ड में हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है. तो इसीलिए जो हमने देखा कि जो हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं 11th-12th के बाद जब वो हायर एजुकेशन में एंट्री लेते हैं और जब हमारा ग्रेजुएशन पूरा करते हैं तो उनके पास एक ज्यादा प्रेशर होता है कि हम किस फील्ड को चुने. तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कैसे करियर डिसीजन मेकिंग को एक लेवल तक, सर्टिफिकेशन लेवल तक पहुंचा सकता है, कि कैसे हम इनमें सर्च करके कि हमारे आगे के फ्यूचर के लिए हम किस प्रकार से इसको तैयार कर सकते हैं, या हमारे लिए कैसे सजेशन ये दे सकता है. तो इसी आधार पर मेरा ये पेपर यह समझने का प्रयास करता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययन जो हमारे हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी पूर्ण यूज करके कैसे अपने लिए एक जो अच्छा करियर जो है वो चुन सकते हैं और कैसे उससे वो अपने कॉन्फिडेंस को बना सकते हैं. इस पेपर के लिए मैंने जितने भी रिव्यू किए हैं पेपर के लिए, ये थीमेटिक एनालिसिस के बेसिस पे किए हैं. टोटल हमने इसमें 87 पेपर लिए थे और जो कंटेंट वाइज हमारी थीम वाइज इसको मैच किए थे, उसमें सेलेक्ट करके हमारे पास 67 पेपर कुल इसमें बचे हुए थे. इस आधार पर हमने देखा, पेपर को एनालिसिस करके देखा जो सीखने की क्षमता होती है बच्चों में, वो हमारे पास जो डेटा आधारित निर्णय हो रहे हैं अब प्रेजेंट में, जो हमारा मशीन लर्निंग के बेसिस पे हम इसको एनालिसिस करते हैं, तो हम क्या करते हैं डेटा बेस्ड ज्यादा डिसीजन लेने में अब ज्यादा विश्वास रखते हैं, किसी के बोलने पे नहीं कि यहाँ एग्जाम हो रहा है, ये जॉब अच्छी है, वो जॉब अच्छी है. इस आधार पर हम निर्णय नहीं ले रहे हैं. अब हम क्या कर रहे हैं, जहां पर डेटा, जिस पेपर ने हमें डेटा बेस्ड परफॉर्मेंस ज्यादा दी है या डेटा बेस्ड एनालिसिस हमारे पास ज्यादा दिया, हम उस पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं. तो इसी आधार पर हमने देखा कि हमने बहुत सारे पेपर को एनालिसिस करके ये देखा कि करियर डिसीजन मेकिंग के लिए हम ज्यादा डेटा पर आधारित हो गए हैं कि इस फील्ड में इतने पोस्टें आई हैं, इसमें से इतने लोग लगे हैं, तो हम इस फील्ड को चुनेंगे.
तो इसी थ्योरी के आधार पर जो इसमें एक थ्योरी यूज हुई है हॉलैंड की थ्योरी, हॉलैंड की जो पर्सनालिटी थ्योरी है और सुपर की लाइफ स्पेन थ्योरी है, इस बेसिस पे हमने इसको देखा था कि जो प्रेजेंट में जो स्टूडेंट है उसके सामने कितने प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं, जो आपका मार्केट में जो जॉब्स हैं या जो आपके करियर चॉइस हैं वो कितने ज्यादा बढ़ती हैं, कितने ज्यादा घट रही है। इस आधार पर हमने इस पेपर को रिव्यू किया था और इसमें से सेल्फ एफिकेसी और डिसीजन पैरालिसिस दो चीजें हमने ऐसी देखी कि जिसमें क्या कर रही हैं, जो डेटा आधारित जो निर्णय प्रतिक्रिया है इनको ये घटा रही है। इसके बाद मेरा था कि इसमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो मेरे 2 ऑब्जेक्टिव बेस्ड ये पेपर है। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की व्यावसायिक निर्णय क्षमता को बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका क्या है उसका परीक्षण करना, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचना की उपलब्धता, सूचना मार्गदर्शन और निर्णय लेने की क्षमता पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, ये मेरा दूसरा उद्देश्य था। इसमें मेरे 2 शोध प्रश्न तैयार किए गए। पहला शोध प्रश्न था मेरा, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के व्यावसायिक निर्णय लेने की क्षमता का समर्थन करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका होगी, और दूसरा शोध प्रश्न मेरा था, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणों की प्रभावशीलता और सीमाओं को किस प्रकार समझते हैं। ये इन 2 शोध प्रश्नों पर आधारित था मेरा ये पेपर। इसके बाद मेरे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी थी, शोध पद्धति थी, इसमें पहली मेथोडोलॉजी मेरी थी कि ये जो स्टडी है हमारी, ये आपका गुणात्मक पद्धति पर आधारित है और यह समझने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया गया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों की करियर डिसीजन मेकिंग या व्यावसायिक निर्णय क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। दूसरी जो शोध पद्धति हमने यूज की है कि इस अध्ययन में हमने जो ब्राउन और क्लार्क की जो 2006 में इन्होंने 6 स्टेप वाली प्रोसेस थ्योरी दी थी, इसका प्रयोग इसमें थीमेटिक एनालिसिस के लिए किया गया है, जिसमें हमारी मेनली 5 थीम सामने आई हैं। इस 5 थीम को मैं आगे इसके रिजल्ट में दिखाऊंगा। इसमें तीसरा जो शोध पद्धति थी हमारी वो प्रयोग हुई थी यह समझने के लिए कि इसका जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है कैसे छात्रों को सोच विचार कर समझदारी से और आत्मविश्वास के साथ करियर संबंधी निर्णय लेने में मदद कर रहा है। ये मेरी 3 शोध पद्धतियां यहाँ पर इसमें इस्तेमाल हुई थी। इसके बाद जब इसमें थीमेटिक एनालिसिस हमने किया था और एनबीओ का यूज किया गया था, प्रिज्मा का यूज किया गया था इसमें, और प्रिज्मा के द्वारा और एनबीओ के द्वारा जब इसका एनालिसिस किया गया, इसका थीमेटिक एनालिसिस किया गया, तो इसमें जब हमारी 5 थीमें उभर कर जो आई थी उसकी पहली थीम थी सूचना उपलब्धता एवं करियर जागरूकता, जिसमें से ये हमारे पास रिजल्ट आए हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है उच्च गुणवत्ता वाली संरचित और नवीनतम करियर सूचनाओं तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाता है। यानी जो हमारे सारी इंफॉर्मेशन आती है उससे ज्यादा हमारे पास क्या हो जाते हैं, करियर से लेकर के हमारे पास ब्रॉडर अप्रोच आ जाते हैं कि हमने किस करियर को चुनना है। और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है हम इतने ही अवेयर अपने करियर के लिए हो जाते हैं कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मिस्टर कृष्णा नेगी। जी सर। मिस्टर कृष्णा नेगी कंक्लूड करिए पेपर अपना। सर लास्ट है। सेकंड थीम थी हमारी व्यक्तिगत मार्गदर्शन कौशल संरक्षण, और तीसरी थीम थी निर्णय आत्मविश्वास एवं सूचित चयन। चौथी थीम हमारी थी सहभागिता, उपयोगिता और इंटरेक्शन, और 5वीं थीम थी नैतिक व्यवहार और चिंतनशील पहलू। ये 5 थीमों पर हमारा आधारित ये पेपर था जब हमारा थीमेटिक एनालिसिस हुआ था, और लास्ट में हमारा कंक्लूजन ये था कि जो ये स्टडी है ये निष्कर्ष निकालती है कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ये करियर डिसीजन मेकिंग में और अधिक सुदृढ़ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो गई है आज के प्रेजेंट टाइम में, जब हमारे पास इतने सारे ओवरथिंक हमारे करियर के लिए हम करते हैं कि हम किस फील्ड में जाएं। इसके लिए फ्यूचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उतने ही तक इम्पोर्टेंट है जब हम इसका उपयोग क्या करें, मानव अंतर्दृष्टि और नैतिक ढांचों के साथ साथ समन्वित कर सकते हैं, और एथिकल यूज हम इसका करें तभी ये हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। थैंक यू। Wonderful presentation, Negi ji. Thank you, sir. Now, we call Dr. Tanya Nautiyal. Dr. Tanya Nautiyal. Yes, sir. Sir, can you hear me? आवाज आ रही है सब? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, मैं start करती हूँ presentation. सर मेरी पीपीटी दिख रही है? अभी तो नहीं दिख रही मैम। हाँ दिख रही है मैम, दिख रही है। दिख रही है? ओके सर, मैं स्टार्ट करती हूँ। Good afternoon, everyone. First of all, I like to introduce myself. My name is Dr. Tanya Nautiyal. I'm an assistant professor at ONS Degree College, Devprayag. So my specialization are macroeconomics, economic growth, time series modeling, and econometrics. So first of all, I would like to express my gratitude towards the organizing committee, which is SN Government PG College, Karanprayag, Social Science and Management Welfare Association, and International Society of Teachers, Administrators, and
and researchers. So the topic of my research is the tripartite nexus, investigating the causal linkages. Sir, can you hear me? Yes, Hello? ma'am. Yeah. Okay. Yes, ma'am. Okay. We hear you. Okay. So the topic is investigating the causal linkages between business sustainability, financial sustainability, and economic growth in India. So first of all, I would like to introduce the sustainability concept. Sustainability concept हमारा ये चीज कहता है कि हम जो अभी की जो जनरेशन है उनकी जितनी भी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करें, बट आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज भी बचे रहे, which means that it is an idea which focuses on meeting the current needs without actually harming the ability of future जो है generations to meet their own. So next is my financial sustainability and economic growth. So financial sustainability is the ability of an organization, entity, and also government to maintain its financial health and actually operations in the long run. Financial sustainability का बहुत हद तक हमारी जो है आर्थिक जो विकास है, which is the economic growth, उसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है, because financial sustainability is all into link today. आजकल हमारी जितने पेमेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, it is all actually digitalized, and payments को भी हटा दिया जाए, अब सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, whether it's in college, school or any place, अब सब जो चीजें हैं डिजिटलाइज हो रही हैं. So financial sustainability and also digitalization has a wide role in economic growth. So there have been empirical study which has also confirmed the role of financial development in the economic advancement of a country. So जो हमारे economic growth models हैं, जैसे कि मार्क्स का मॉडल है, शुम्पीटर का मॉडल है, उसमें ये चीज उन्होंने प्रूव करी हुई है कि किस तरह फाइनेंशियल डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे शुम्पीटर का मॉडल था, उसमें एक लाइन थी जो उन्होंने कही है, दैट बिजनेस इनोवेशन एंड बैंक क्रेडिट आर द टू टूल्स which can lead to development in the economy. So ये जो मॉडल्स थे ये पूरी तरह वेरीफाई हो चुके हैं, प्रूफ हो चुके हैं एक टाइम पे हिस्ट्री में, which has shown that financial sustainability and economic growth are linked together. Now we'll talk about financial inclusion. Financial inclusion के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने financial sustainability के लिए जो parameters लिए हैं, they are linked to financial inclusion. So financial inclusion का जो होता है, दो sides होते हैं, which is demand side and the supply side. Supply side of जो financial inclusion है, that is totally dependent on the government and the banks, whereas the demand side of financial inclusion is actually dependent on the people. So जो supply side of financial inclusion है, which actually includes number of bank branches, number of credit accounts, deposit accounts, that is entirely up to the government. क्योंकि जब तक गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब एम्पल अमाउंट में सप्लाई नहीं करेगी, तब तक उसकी डिमांड नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, लाइक पीपल लिविंग इन उत्तराखंड में इतनी सारी हिली स्टेट्स हैं जहां पे अब जाके बैंक ब्रांचेस खुले हैं बहुत ज्यादा. नहीं तो एक टाइम पे ऐसा था कि बहुत सारे गांव से मतलब बैंक में आने में तकरीबन 1 घंटा 2 घंटा जो जाता ही था. सो बैंक ब्रांचेस की जो सप्लाई है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टारगेट है किसी भी गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल डेवलपमेंट करने के लिए. So next is my business sustainability and economic growth. So जिस तरह अभी जो है हमने जो है समझा कि financial sustainability और economic growth का कैसे link है, अब जो next target है वो है business sustainability and economic growth. Business sustainability actually is a practice of operating a company in a way that it achieves its long term goals. For example, अगर हम history में देखें तो history में इंडिया में जो businesses थे उनका सिर्फ एक ही target था, that is to make profit. But nowadays the things have changed because profit के साथ साथ अब एक्चुअली जितने भी बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनको एक जो परसेंटेज अपना एनवायरनमेंट एंड पीपल के लिए भी देना होता है. लाइक दे हैव टू मेक फेयर जो है लेबर प्रैक्टिसेस इन और जो है ग्लोबल जो उनका पोल्यूशन है, ये सब चीजें भी उन्हें कम करनी है. सो अब बिजनेस सस्टेनेबिलिटी में भी इंडिया काफी कुछ कर रहा है. Sorry to interrupt, Dr. Tanya Nautiyal. Please conclude your paper. Okay, sir. Okay, then I'll skip the literature part. बस मैं इतना आपको बताना चाहूंगी कि बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए मैंने जो प्रॉक्सी वेरिएबल्स ली हैं वो MSME लिया है एंड द लेंडिंग रेट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट.
So due to the time limit, I will just come to the objective. These are my objective. First one is to evaluate and quantify the contribution of MSME in the GDP. Next is to conduct an empirical investigation on the causal relationship and impact of financial sustainability and business sustainability on economic growth. So the research methodology is I have taken 25 years of data from RBI, Ministry of MSME and PIB. So this is my model. ये जो model है इसके लिए मैंने multiple regression model run किया है EViews से, and सारे जो normality test हैं, heteroscedasticity test हैं, वो सारे satisfy करे गए हैं. So this is my first objective, जिसमें हमें दिख रहा है कि share of MSME का जो है GDP of India में is 30.1 right now. And मतलब like हम ये कह सकते हैं. Please conclude your paper. Okay sir. ये रिजल्ट है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का, जिसमें ये चीज कह रही है कि 99% ऑफ द मॉडल इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. Lastly, I would come to the conclusion which says that MSME sector is a fundamental component of India's economic and social growth, whereas the integration of financial assistance, technological advancement, and a strong policy structure will be vital for India's MSME. Lastly, the multiple regression analysis strongly supports the idea that financial sustainability and business sustainability are current drivers of India's economic growth. So these are my references which I have taken. Thank you so much for letting me do my presentation. Thank you so much. Nice presentation, ma'am. Thank you, sir. अगली प्रतिभागी है सुजाता कुमारी. सुजाता कुमारी. Yes, sir. Thank you, sir. मैम अपना पेपर प्रेजेंट करें. वेलकम मैम. जी सर. थैंक यू. आदरणीय सभापति, विद्वज्जन और उपस्थित सभी प्रतिभागी और निर्णायक समिति, सभी को मेरा सादर प्रणाम. मैं सुजाता कुमारी. आज मेरा टॉपिक है जनजाति ग्रामीण महिलाओं के कौशल संवर्धन, शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता पर एक अध्ययन. जब भी हम ग्रामीण महिलाओं की बात करते हैं तो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा ना हो, उन्हें याद ना किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं की शिक्षा के लिए, विशेषकर ग्रामीण जनजाति महिलाओं के लिए ही नहीं, देश के पूरे नागरिकों की शिक्षा के लिए उन्होंने विचार किया कि किसी भी देश की प्रगति तभी हो सकती है जब वहाँ की शैक्षिक उपलब्धि की दर उच्चतर हो और शिक्षा सिर्फ पुरुषों तक ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी शिक्षित की जाए. जिस प्रकार घर परिवार में महिलाओं की भागीदारी समान होती है, उसी प्रकार देश की प्रगति, राष्ट्र की प्रगति और समाज की प्रगति में भी महिलाओं की समान भागीदारी होती है, उनकी भूमिका समान होती है और इसके लिए उन्हें शिक्षित किया जाए. सिर्फ साक्षरता से ही बात नहीं बनेगी. जैसे कि आज हमारा राज्य केरल राज्य संपूर्ण साक्षरता के रूप में माना जाता है, 100% साक्षरता, महिलाओं की साक्षरता. उसी तरह से अन्य राज्यों में भी साक्षरता की आवश्यकता है और महिलाएं साक्षर होंगी, शिक्षित होंगी तो ही उनका आत्मिक विकास होगा, उनकी चेतना जगेंगी. और शिक्षा जो है न सिर्फ आत्मविश्वास जगाता है बल्कि निर्णय क्षमता जगाता है और रोजगार के लिए अवसर भी प्रदान करता है. तो आज की महिलाएं सिर्फ घर परिवार तक ही सीमित नहीं रही हैं बल्कि वह देश और राष्ट्र के योगदान में भी अपनी संपूर्ण भागीदारी दे रही हैं. और जब हम यहाँ जनजाति ग्रामीण महिलाओं की बात कर रहे हैं तो उनकी उद्यमिता, उनके अंदर कौशल में वो दक्षता प्राप्त उनको पहले से ही है. वो सिर्फ घर परिवार तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी के साथ साथ वह इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, खेल और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं. और उनको उचित कौशल और शिक्षा की व्यवस्था ही उनकी
उद्यमिता को आगे बढ़ा सकता है। ये जनजातीय महिलाएं बहुत ही परिश्रमी होती हैं, कठिन परिश्रमी होती हैं, लेकिन कई बार संसाधन उपलब्ध कराए जाने पर भी उनके पास वह साधन उन तक पहुंच नहीं पाती है, उनको उनका ज्ञान नहीं होता है, उनके पास सुविधा नहीं होती है और जानकारी के अभाव में कई बार महिलाएं उसका समुचित संसाधन का उपयोग नहीं कर पाती है और उन तक पहुंच नहीं पाता है। तो इसके लिए महिलाओं की जागरूकता के लिए शिक्षा ही वह माध्यम है जिन्हें उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है। कई घर परिवारों में ग्रामीण महिलाएं बच्चों को सिर्फ इसलिए स्कूल भेजती हैं कि उन्हें भरपेट भोजन मिलता है और भोजन के बाद वो बच्चे चाहे पढ़े या ना पढ़े उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। बस बच्चे को सरकारी स्कूल में देने के पीछे सरकार की जो भी योजनाएं हैं, अगर उन्हें बताया जाता है कि तुम स्कूल भेजोगे तो तुम्हारे बच्चों को साइकिल दिया जाएगा, उनको कपड़ा दिया जाएगा, ड्रेस दिया जाएगा, उनको खाना दिया जाएगा और फल दिया जाएगा, हर तरह की खाने पीने की सुविधा दी जाएगी और किताब कॉपी भी फ्री दिया जाएगा, तो वो बच्चे को इस सोच के साथ भेजते हैं कि कम से कम वो उनके अगर पास आर्थिक कमी है, आर्थिक परेशानी है, तो उनके बच्चे उन्हें उनके भोजन और कपड़ा उनको मिल जाए। लेकिन इसके लिए शिक्षित होना और शिक्षित होकर रोजगार के अवसर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इसका अभाव उनमें इसलिए पाया जाता है क्योंकि वह स्वयं शिक्षित नहीं होती हैं। इसलिए ऐसे बच्चों की माताओं को भी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है और ग्रामीण परिवार मैम कृपया कंक्लूड करें मैम। अगर उन तक प्रशिक्षण और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो ये महिलाएं अपने बच्चों के साथ साथ स्वयं भी शिक्षा के महत्व को समझ पाएंगी और उनका विकास के साथ उनके खुद के विकास के साथ साथ परिवार और समाज राष्ट्र के भी योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगी। धन्यवाद सर। Thank you, ma'am. Our next presenter is Dr. Richa Jain. Dr. Richa Jain. I think she is unavailable. Next participant, Dr. Samina Qureshi. Dr. Samina Qureshi. Next participant, reference number 110, Dr. Ravindra Kumar. Yes, sir. Sir, please present your paper. ओके सर। नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज भट्टू कला, फतेहगढ़, हरियाणा से। जो आज का मेरा विषय है वो है आयुर्वेद का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव। आयुर्वेद का मनुष्य के जीवन पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह केवल बीमारियों का इलाज करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देती है। आयुर्वेदिक, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान, भारत की एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है जिसकी जड़ें। डॉक्टर रविंद्र सर। जी सर। It seems we are having difficulty seeing you. Could you please check your camera? Turn on your camera. Okay, visible. आयुर्वेद, जिसका शाब्दिक अर्थ जीवन का विज्ञान है, भारत की एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है जिसकी जड़ें 5000 साल से भी अधिक पुरानी हैं। इसे दुनिया की सबसे पुरानी व सर्वोत्तम होलिस्टिक उपचार प्रणालियों में से एक माना जाता है। आयुर्वेद के मुख्य सिद्धांत होलिस्टिक अप्रोच, यह शरीर, मन, आत्मा के बीच संतुलन बनाने पर जोर देता है। इसका उद्देश्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं है, बल्कि पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना है। 3 दोष आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मांड और मानव शरीर 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये तत्व शरीर में 3 जीवन शक्तियों, दोषों के रूप में प्रकट होते हैं: वात, पित्त और कफ। वात वायु और आकाश से संबंधित है। ये हमें गतिशीलता और हमारे नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है।
पित्त अग्नि और जल से संबंधित है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस और डाइजेस्टिव सिस्टम को नियंत्रित करता है। कफ पृथ्वी और जल से संबंधित है, जो हमारी लुब्रिकेंट हमारी बॉडी को लुब्रिकेंट प्रदान करता है। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, व्यक्तिगत उपचार, प्रत्येक व्यक्तियों में दोषों का एक अनूठा संतुलन होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में किसी व्यक्ति के प्रमुख दोष या असंतुलन की पहचान करके उनके अनुसार ही आहार, जीवन शैली और उपचार योजना तैयार करते हैं। प्राकृतिक उपचार में मुख्य रूप से जड़ी बूटियां, पौधों के अर्क, तेल, मसाले आदि खनिजों का उपयोग किया जाता है। जीवन शैली और रोकथाम, लाइफस्टाइल एंड प्रिवेंशन। आयुर्वेद बीमारी के इलाज की बजाय रोकथाम पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इसमें स्वस्थ जीवन शैली की आदतें जैसे उचित आहार, योग, ध्यान और दैनिक दिनचर्या शामिल है। भारत में आयुर्वेद की आधुनिक चिकित्सा एलोपैथी के साथ साथ आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के विकास और विनिमय को बढ़ावा देता है। आयुर्वेद का मनुष्य के जीवन पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव है। आयुर्वेद के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद का मुख्य ध्यान प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक प्रवृत्ति के आधार पर संतुलित आहार, जीवन शैली, हर्बल उपचार के माध्यम से बीमारी को रोकना है। यह पाचन सुधार में विषाक्त पदार्थों के उन्मूलन और त्रिदोषों वात, पित्त, कफ के संतुलन पर जोर देता है, जिसमें पुरानी बीमारियों की रोकथाम और समग्र जीवन शक्ति में वृद्धि होती है। मानसिक और भावनात्मक कल्याण, आयुर्वेदिक मन की शांति और स्पष्टता प्राप्त करने के लिए ध्यान, प्राणायाम, सांस लेने के व्यायाम और योग जैसी प्रथाओं को शामिल करता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। भावनात्मक स्थिरता और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देता है। निरंतरता और दीर्घायु, आयुर्वेद का उद्देश्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं है, बल्कि दीर्घायु और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। दैनिक मौसमी दिनचर्या का पालन करते हुए व्यक्ति उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और एक लंबा स्वस्थ जीवन प्राप्त करते हैं। और निष्कर्ष में हम यही कहें कि आयुर्वेद मानव जीवन की एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें स्वास्थ्य की जिम्मेवारी लेने और स्वाभाविक रूप से जीने और एक संतुलित और पूर्ण जीवन का आनंद लेने के लिए एक सशक्त बनाता है। यह आधुनिक जीवन शैली की चुनौतियों के बीच संतुलन और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एक कलातीत ज्ञान है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नाइस प्रेजेंटेशन। Next participant, Damini Goswami. Reference number 111. Damini Goswami. Our next participant, Dr. Monica Chaudhary. Yes, sir. Ma'am, please present your paper. Yes, sir. सर ये शेयर हेलो Sir, madam, your PPT not visible. Is it visible? Yes, ma'am. Okay, thank you, sir. Thank you. Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Good afternoon. Your screen to is visible. everyone. Please proceed, ma'am. Okay, thank you, sir. Good afternoon to everyone present here. I extend a warm welcome to all participants to this insightful session. This program has been organized under the guidance of our session expert, Professor Preeti Rani, Head of the Commerce Department. We are honored to have here expertise and academic leadership for today's event. I am Dr. Monica Chaudhary, Assistant Professor at Hariom Saraswati PG College, Dhanori, Haridwar. Today, the topic of my research paper presentation is the role of hydrochar in green chemistry. This research explores
how hydrochar, a carbon-rich material produced through hydrothermal carbonization of biomass, contribute to environmentally sustainable chemical practices. Green chemistry focuses on the designing the chemical process that reduce environmental impact. Hydrochar produced through hydrothermal carbonization of biomass offer a sustainable pathway to convert organic waste into valuable carbon-rich material. It is a tunable property and eco-friendly synthesis make it an important contributor to green chemistry and circular economic solution. Water polluted by various toxic dyes, especially cationic dyes, pose serious environmental and health risk due to their toxicity and persistence. The selection of carbonaceous raw material for activated carbon via hydrothermal carbonization depend on its high carbon content, availability, and suitability for producing a porous and stable carbon structure. Hydrothermal treatment was used an effective method to produce hydrochar for lignin by heating the biomass water mixture in an autoclave at 180 degrees Celsius under autogenous pressure and then isolating and drying the resulting carbon material. And it showed the overall process of my research work. In this research, hydrochar was produced using an autoclave physically activated and thoroughly characterized by FTIR, SAM, nitrogen adsorption, desorption, isotherm analysis. And this is the material basic red 9. In the present study, we focus on the removal of basic red 9, which is a cationic dye, poses serious environmental hazards. Basic red 9 was effectively removed using the prepared hydrochar as an adsorbent. The adsorption of the basic red 9 on the hydrochar and activated carbon was studied using a simple batch technique method, monitoring dye removal over the time with the UV visible spectrophotometer and analyzing the adsorption kinetic at different concentration. Characterized by the XRD analysis of hydrochar produced from the craft lignin at 180 degrees Celsius show characteristic peak at 2 theta 16 degree and 22 degree, indicating partial conversion of amorphous carbon. Next one is the characterized by FTIR. FTIR analysis of the hydrochar reveal functions groups such as OH, CH, aromatic carbonyl group, OH bending, CN, and CO stretching, with OH indicating its rich surface chemistry for the adsorption application. This one is the SAM EDX analysis show that the hydrochar from craft lignin retain fibrous structure with a rough surface and contain elements like calcium, phosphorus, cobalt, sulfur, potassium, and copper and zinc were negligible. Next one is this figure show how the removal of the basic red 9 by the hydrochar derived activated carbon varies with different initial dye concentration at 25 degrees Celsius. With the increase of the dye concentration, the amount of adsorption is also increased. Next one is the adsorption isotherm. This figure illustrates the adsorption isotherm showing how basic red 9 interact with the hydrochar derived activated carbon at equilibrium. Next one, at a different temperature, this figure shows that the adsorption of the adsorption removal of basic red 9 on hydrochar drive activated carbon at different temperature, highlighting that the temperature effect on the dye removal. Next one is the experimental data obtained from the adsorption isotherm. We can remove we can apply the Langmuir and Frenderlich isotherms, and the Langmuir adsorption isotherm of basic red 9 on this activated carbon at different temperature, indicating monolayer adsorption behavior. And if we compare with the Frenderlich, the Langmuir model provides the best fit for the experimental data. Now the conclusion. Therefore, hydrochar transform biomass and organic waste into a versatile carbon-rich material through energy
efficient hydrothermal carbonization, supporting sustainable eco-friendly chemical process. Its application in soil improvement, water purification, and catalysis demonstrate its growing role in advancement of green chemistry and circular economic principle. Thanks you all for kind attention. I hope this presentation has highlighted the promising role of hydrochar in promoting sustainable and green chemistry technology. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Our next participant is Sumedha Pandey. Reference number 113. Next participant, Rajesh K. Govindan. Dr. Sophia. Move to next participant. Reference number 115. Bhuvan Lal Tandedkar. Next participant, Mr. Sujit Kumar Nandi. Yes, sir. Yes, sir. Sir, please present your. Please, sir. Welcome. Please present your paper. Okay, sir. Good evening, everybody. Myself Sujit Kumar Nandi. I am from Kolkata. मेरा जो टॉपिक से analysis on the role of independent directors in promoting transparency and accountability in Indian corporate entities. Introduction. The independent directors play a vital role in ensuring corporate governance. They act as a bridge between the management and the shareholder. Their independence enhances objectivity, fairness, and transparency in decision making. Concept of independent directors. The independent director defined in under section 149 subsection 6 of Companies Act. They are not involved in day-to-day management. They should have not material relationship with the company. Expected to bring unbiased and professional judgment. The next, legal and regulatory framework. The minimum number of independent directors in board, 1/3 for listing companies. Key responsibility. They ensure integrity of financial reporting, review internal control and risk management, safeguard interest of minority shareholder, evaluate performance of board and management, oversee ethical conduct and complaints. The next role of promoting transparency, minority disclosure, practice and related party transaction, ensure timely publication and accurate financial data, encourage open boardroom dialogue, insist on auditor independence and fair reporting. Role of promoting accountability. They hold management accountability for decision, participate in audit and remuneration committees, ensure compliance with law and corporate ethics, recommended corrective action in case of misconduct. The next follow challenge phase. The lack of true independence, social or financial ties, limited access to internal data, inadequate training or time commitment, or pressure from promoters and management. Then we have suggestion for improvement, strange selection process and tenure limits, regular evaluation and training of independent directors, enhanced disclosure norms and mechanism, encourage gender and professional diversity on board. Conclusion. The independent directors are guardian of the corporate integrity. Their role is central to maintain public trust and investor protection. Strengthening the independence will ensure long-term sustainability of Indian corporate entities. That's all. Thank you, sir. Thank you, sir. Our next participant, Dr. Harshita Gupta. Harshita Gupta. Reference number 118. Next participant, Miss Nishita Maheshwari. Yes, sir. And Dr. Salu Sehgal.
Ma'am, please Yes, sir. present your paper. Sir, is it visible? Yes, ma'am. Visible. Good afternoon to all the respected dignitaries, fellow presenters, and participants. I am Nishta Maheshwari, working as Assistant Professor, Bhara University, Himachal Pradesh. The topic of my research paper is Green Finance in India, Fueling a Sustainable Future, co-authored with Dr. Shalu Sehgal. In a world where climate risk, environmental degradation, and resource scarcities are reshaping economic priorities, green finance has emerged as a powerful catalyst for sustainable development. This study explores how India can mobilize sustainable capital for renewable energy, climate action, and inclusive development while overcoming regulatory and structural changes. Green finance channels capital into eco-friendly projects like renewable energy, energy efficiency, and climate-resilient infrastructure through instruments such as green bonds, green loans, and sustainable funds. Importance and sustainability. Green finance drives sustainable development by addressing pollution, resource depletion, and climate risk, enabling economic growth that protects ecosystem and supports long-term viability. It bridges financing gaps in conventional models that undervalue environmental benefits, funding initiatives like smart cities and emissions reductions. Role in achieving sustainable development goals. Green finance helps the India in achieving Sustainable Development Goal 7, Development Goal 13, Climate Action, and Sustainable Development Goals 11, Smart Cities. Regulatory frameworks form standardized green bonds and scaling investments for inclusive growth. The objective of this paper was to look into how green finance has grown, where it stands now, what rules shape it, also the many hurdles tied to it in India. The analysis aims to add value to existing talks about eco-friendly funding while offering practical takeaways useful for decision makers, banks, and funders, pushing India towards a cleaner, clear growth paths. Analysis covered historical evolution, instruments like green bonds and loans, regulatory frameworks from RBI and SEBI, India-Paris Agreement commitments supported by a quantified progress such as $55.9 billion in green bonds issuance by 2024. Challenges like greenwashing and MSME excess were identified alongside pathways like taxonomy development and blended finance. How green finance supports social benefit. Green finance benefits society by directing investment towards projects that protect the environment, such as renewable energy, pollution control, and conservation efforts. This leads to a cleaner air and water, reduced greenhouse gas emissions, and enhanced climate resilience. Economically, green finance stimulates job creations, innovations, and new markets in sustainable industry. Socially, it expands access to green products and services, improves public health, supports equitable infrastructure development, and encourages corporate social responsibility. Ultimately, green finance helps build a sustainable economy that balances ecological preservation with inclusive growth and financial stability. Conclusion. In closing, green finance represents not just a funding strategy, but a transformative pathway towards a sustainable and resilient India. As we align a financial system with environmental and social imperatives, we unlock vast opportunities for clean energy, climate resilience, and inclusive growth. The road ahead challenges us to innovate, collaborate, and commit boldly. Together, by scaling green finance, we can secure a healthier planet, stronger economy, and better future for generations to come.
Green finance is vital for India's net zero by 2070 with $55.9 billion in green bonds and RBI or SEBI framework driving progress despite challenges like taxonomy gaps and greenwashing. It bridges financing for renewable resilient infrastructure and SDGs reshaping growth as low carbon and inclusive. Path forward, Sorry to prioritize. interrupt, ma'am. Please kindly conclude your paper. Yes, sir. Prioritize national green technology, blended finance for MSME, investors education, fintech integration to scale investment. Call for the action. India can lead global sustainability by aligning finance with climate goals, turning challenges into opportunities for a greener, prosperous tomorrow. These are some of the reference papers that we have used for the paper and the links. Thank you. Thank you, ma'am. Nice presentation. Next participant is Dr. Vinod Kumar. Yes, sir. Good Sir, afternoon. please present your paper. Good afternoon. Okay. Good afternoon. Good afternoon. With the permission of chairperson technical session, myself, Dr. Vinod Kumar, I am presenting my presentation, Mental Health and Well-being. Mental health and well-being are related. The concept encompassing different aspects of individual state of being. Promoting mental health and well-being involve raising awareness, reducing stigma, increasing access of mental health care, supporting environment, and encouraging self-care practices. Mental health is the state of mental well-being that enable people to cope with the stress of life, learn and work well, realize their ability and contribution to their community. Key component of well-being include physically health. A state of physical health is the fundamental aspect of well-being. Mental health, positive mental health is crucial for the well-being. Life satisfaction is a subjective assessment of one own life's sense of purpose. A sense of purpose and meaning in the life contribute significant to the well-being. Financially security, financial stability and security play a role to overall well-being, as economic stress can negatively impact one's sense of comfort and happiness. Disability and the mental health. Disability and mental health are two interconnected aspects of overall well-being, and it is important to understand and address them in a holistic manner. Promotion mental health and well-being. Reasonable accommodation at the work, adapt a working environment to capacity, need, and performance of a worker, return to work program, combined work, direct care with the ongoing clinical care to support worker in the meaningfully returning to the worker. Supported environment initiative help people to get into the paid worker and maintain their time at the work, continue to provide mental health and vocational support. Awareness and advocacy training, raising awareness but mental health issue with the disability community and among healthcare provide is also important. The role of different stakeholder advocacy group, the role of organizations led by the self-advocates, parents and family member has a mark to be significant in adopting the voice of individual with the disability. Healthcare provider, healthcare professional require better training to better understand the specific need of individual with the disability and how these needs can impact mental health. Community support, developing strong sports network, both formal or informal, can provide individual with disability the resources they need to maintain good mental health. Conclusion, mental health folks specifically on the psychologically and emotional aspect of well-being and include the diagnosis and treatment of the mental disorder. Well-being, on the other hand, is a broader concept. There encompass multiple dimensions of an individual life, including physical, mental, emotional, social, and even
existential aspects. And last, I thankful the organized committee and other listening my presentation. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Now we move to next participant, Ekta Chaudhary. Reference number 121, Ekta Chaudhary. Reference number 122, Dr. Munna Lal Yadav. Next participant, Sarla Mehra. Sarla Mehra. Reference number 124, Dr. Ramesh Kumar Pokhriyal. Dr. Ramesh Kumar Pokhriyal. Next participant, reference number 125, Dr. M.K. Tamta. Dr. M.K. Tamta. Next participant, Dr. Disha Sharma. Dr. Disha Sharma, reference number 126. Next participant, Dr. Seema Pokhriyal. Dr. Seema Pokhriyal. Are you there, ma'am? Next participant, reference number 128, Gauri Shankar and Dr. Ravendra Rajput. Dr. Gauri Shankar and Dr. Ravendra Rajput. Next participant, Dr. Kavita Pathak. Yes, sir. हाँ सर. हाँ, ma'am, please present your paper. Yes. Good afternoon to all. I request all participants to please keep their microphones muted to avoid disturbance. Myself, Gauri Shankar, I am presenting the research paper. Topic: Understanding Student Experience with E-Learning, Perceptives on Motivation, Engagement and Learning Outcomes in Higher Education. Abstract of the paper: the rapid expansions of digital technology and online platform has reshaped the landscape of higher education, creating a new mode of the instruction, delivery, and learning engagement. The study explored student experience with e-learning, focus on how motivation, engagement, and perceptive learning outcomes involve in digitally mediated environment. Using a qualitative description approach, the research synthesized secondary data from the academic publication. Introduction of the increasing penetration of the digital technology has transformed the landscape of higher education, altering how knowledge is created, delivered, and consumed. E-learning, broadly defined as use of digital platform, multimedia resources, and online instrumental strategy, and move beyond being an alternative mode of education, become a mainstream academic pathway. Universities and colleges across the world now incorporate learning management system, virtual classroom, video-based instruments, learnings, collaborate online tools, and create flexible and student-centered learning environment. Need of important of the studies: the rapid expansion of e-learning in higher education has broadly new opportunities for flexible student-centered instructions, yet it has also exposed the significant difference in how learners experience digital environment. And next, objective of the studies:
to explore how e-learning platform influence students' motivation in higher education. Second, to examine the level and patterns of students' engagement in online learning environment. Third, to analyze the impact of e-learning on students' perceived learning outcomes. Next, research method. This research adopts a qualitative descriptive research designed to understand students' experience with e-learnings in higher education, focusing on motivation, engagement, and perceived learning outcomes. The research relies entirely on the secondary data resources, including peer-reviewed and journal articles, governments and the institutional reports, policies, documents, learning analysis studies, and publishing survey related to the e-learning in India and awards. Understanding key dimension of students' experience in online learning. E-learning has transformed higher education by the providing flexible, accessibility, and technology-driven learning opportunity students experience in online environment and shaping by the three interrelated dimensions: motivation, engagement, and learning outcomes. Students' motivation in learning. Motivation is the foundation psychological force that drives students willing to participate the achievement activities, particularly in the digital environment where the external supervision is limited. In e-learning, motivation become more complex, become learners are required to take greater responsibility for the managing their times, navigating digital tools. Student engagement in online learning environment. Student engagement reflects the degree to which a learner activities participate in the academic process, and it is commonly understood through behavior, emotional, and cognitive dimensions. Behavior include. Sir, we are approaching the time limit. Please conclude your paper. Okay. Conclusion: the study concludes that the e-learning in higher education possibility impact the student motivation, engagement, and learning outcomes, providing the platform are interactive, well structured, and supporting by the adequate resources. Thank you, sir. Thank you, sir. Next participant 129, Dr. Kavita Pathak, ma'am. जी sir. Welcome, ma'am. I am present. Please present Yes, your ma'am. paper. जी sir. Myself, Dr. Kavita Pathak, Assistant Professor, Government PG, Dr. Shivanand Nautiyal, Government PG College, कर्णप्रयाग चमोली. सबसे पहले मैं इस टीम के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आप सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मेरे पेपर का विषय है शासन एवं लोकतंत्र भारतीय संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र और सुशासन आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था के दो परस्पर पूरक स्तंभ हैं जो नागरिकों की भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, विधि का शासन और समतामूलक विकास को सुनिश्चित करते हैं। भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में एक जटिल राजनीतिक प्रशासनिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, जहां शासन का स्वरूप केवल चुनावी प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं, बल्कि नीति निर्माण, संसाधन प्रबंधन, तकनीकी हस्तक्षेप, नागरिक अधिकारों की रक्षा तथा सामाजिक आर्थिक न्याय की उपलब्धि से भी संबद्ध है। लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं, बल्कि एक जीवन मूल्य और दर्शन है, जिसमें नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया के केंद्र में होते हैं। भारत में लोकतंत्र का निर्माण संविधान की नींव पर आधारित है, जो सार्वभौमिक मताधिकार, मूल अधिकारों, न्याय और समता के सिद्धांतों से प्रभावित है। दूसरी ओर शासन को व्यवहारिक क्रियान्वयन का उपकरण प्रदान करता है। आधुनिक विश्व में वैश्वीकरण के युग में सूचना और
और बहुसांस्कृतिक समाज की जटिलताओं ने शासन के स्वरूप को विस्तृत किया है, जहां सरकार के साथ साथ नागरिक समाज, मीडिया, बाजार और न्यायपालिका भी निर्णय प्रक्रिया के अभिन्न अंग बन गए हैं। लोकतंत्र का सिद्धांत और भारतीय संदर्भ। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता का मूल स्रोत जनता होती है और शासन की वैधता नागरिकों की सहमति से प्राप्त होती है। यह मात्र राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक दार्शनिक विचार है जो स्वतंत्रता, समानता, भागीदारी और मानव गरिमा जैसे मूल्यों पर आधारित है। भारत ने संविधान के माध्यम से लोकतंत्र को संस्थागत रूप दिया, जिसने सार्वभौमिक मताधिकार, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और विधि के शासन को स्वीकृति दी। भारतीय लोकतंत्र की विशिष्टता यह है कि यह विविधता में एकता, बहुलवाद और भाषाई सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित रखते हुए राजनीतिक प्रक्रियाओं को संचालित करता है। भारतीय शासन प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाएं। भारतीय शासन प्रणाली संविधान पर आधारित एक जटिल, बहुस्तरीय और लोकतांत्रिक ढांचा है जिसमें सत्ता का मूल स्रोत जनता मानी जाती है और शासन का संचालन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के त्रिसूत्रीय सिद्धांत पर आधारित होता है। भारत में शासन प्रणाली संसदीय ढांचे पर आधारित है, जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और नागरिकों की भागीदारी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। संविधान न केवल शासन की प्रक्रिया को दिशा देता है बल्कि नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों और प्रशासनिक जवाबदेही के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा भी प्रदान करता है। ई गवर्नेंस और डिजिटल क्रांति। आज वर्तमान में ई गवर्नेंस और डिजिटल क्रांति का युग है, जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग सरकारी सेवाओं के कुशल, पारदर्शी, सुलभ और उत्तरदायी संचालन के लिए किया जाता है। यह शासन प्रणाली के पारंपरिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला उपकरण है, जिसने नागरिकों और सरकार के बीच संवाद के पैटर्न को बदल दिया है। भारत में ई गवर्नेंस का उद्देश्य केवल तकनीकी सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य लोकतंत्र को अधिक सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। डिजिटल तकनीक शासन को नागरिक केंद्रित बनाते हुए सार्वजनिक सेवाओं को कविता सभी मैम, के लिए। प्लीज पेपर कंक्लूड कीजिए। ओके मैडम। भारतीय लोकतंत्र और शासन व्यवस्था समय के साथ साथ विकसित हो रही है और आज यह एक जटिल, गतिशील और निरंतर प्रगतिशील राजनीतिक ढांचे के रूप में स्थापित है। इस व्यवस्था ने न केवल संविधान के मूल्यों, निकृत न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को संरक्षित किया है, बल्कि इसने सामाजिक विविधता और लोक सहभागिता को लोकतांत्रिक शक्ति में परिवर्तित किया है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट वंदना शर्मा एंड अनिल कुमार नौटियाल, प्लीज इफ यू आर देयर प्रेजेंट योर पेपर। वंदना शर्मा एंड अनिल कुमार नौटियाल। प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। Good यस मैम। afternoon. Am I audible to you? या मैम, ऑडिबल। Are my slides visible, sir? यस मैम। Hello. यस Okay. मैम, Shall I start, sir? विजिबल। Shall I start, sir? यस सर, यस मैम। Okay. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be the part of this international conference. My name is Vandana Sharma, a research scholar from the Department of Education at Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University. The paper which I am presenting here is titled as Decolonizing Higher Education for Sustainable Future, a literature review shaped by insight from the Mahabharata. This paper is a joint effort of me and my colleague, Professor Anil Kumar Nodyal. Shall I start, sir? Yes, ma'am. Please proceed. Okay. This study begins with very simple yet very interesting questions like, can ancient Indian knowledge, particularly the ethical and the ecological insight of the Mahabharata, help us reimagine higher education? Can it guide us towards systems that are fair, culturally rooted, and aligned with sustainable future?
Over the course of this research, I sought to weave together thread from classical wisdoms, indigenous knowledge system, decolonial thoughts, and modern sustainability frameworks. My goal was to imagine higher education not merely as a place for transferring knowledge, but as a space for transformation of student, institution, and society. As we all are very much familiar with this fact that our higher education system still carries deep colonial imprint. Much of what we value and teach come from the Western tradition, often overshadowing the rich intellectual heritage of indigenous communities, including India's own. This research seeks to address that imbalance by exploring how the Mahabharata, alongside broader indigenous knowledge system, can help decolonizing education. The core objective was to examine whether ethical, ecological, and relational knowledge tradition can strengthen contemporary education. This research paper is based on actually 5 research questions, which are, the very first one is, how does Western knowledge dominance shape higher education today? What ethical and pedagogical lesson does the Mahabharata offer? How do decolonial theory, sustainability, and indigenous knowledge intersect? What challenges exist in integrating classical knowledge into universities? And how can Mahabharata-inspired framework foster more inclusive and sustainable education? Methodological part of this study followed a qualitative literature-based approach. I analyzed scholarly writings, interpretive studies of the Mahabharata, ethnographic accounts of the indigenous knowledge, policy documents like NEP 2020, UNESCO's sustainability guidelines, and pedagogical case studies. Using thematic content analysis, I coded ideas, identified patterns, and grouped them into major themes. This method allowed me to connect historical knowledge tradition with modern educational and sustainability debates. The findings revealed remarkable convergence across 6 areas, which are classical texts, sustainability framework, empirical studies, and policy reports. Clear pattern emerged: the need for multiple ways of knowing, the relevance of indigenous ecological ethics, the value of narrative and dialogic teaching, and growing recognition of cultural heritage in education policies. Historically, this journey moved from the rich traditional knowledge through colonial disruption, late 20th century scholarly recovery, policy recognition in the 21st century, and recent practical experiments. Each stage deepen our understanding of how knowledge systems evolve and how they might guide sustainable future. Yet, colonial knowledge structure remains strong. Despite growing awareness of knowledge plurality, Western frameworks still dominate curricula, assessment, and institutional expectations. Here, the Mahabharata and the indigenous knowledge tradition offer inspiring alternatives. Its teaching on dharma, moral complexity, ecological care, and relational thinking resonates strongly with moral sustainability goals. In conclusion, decolonizing higher education and fostering sustainable future requires reshaping knowledge priorities, institutional culture, and teaching practices. The Mahabharata, alongside indigenous knowledge system, offer a multi-dimensional foundation for this transformation, which integrate thoughtfully these traditions can nurture ethical leadership, ecological awareness, culturally belonging, and socially just educational practices. Ultimately, higher education should be more than knowledge transfer. It should be a transformative arena where students learn to navigate moral complexity, environmental responsibility, and collective well-being. By aligning decolonial theory with the classical Indian wisdom and sustainability imperative, we can imagine education that is equitable, inclusive, culturally resonant, and capable of addressing the complex challenges of our 21st century world. Thank you. Thank you, ma'am. Next participant, Dr. Reena Unyal Tiwari. A very warm namaskar to everyone present. Am I audible enough? Yes, ma'am. Thank you, sir. I am presenting my screen now. Is it visible? Yes, ma'am. Thank you, everyone. As we all know, education is central to achieving sustainability because it shapes the knowledge, values, skills, and agency of current and future citizens.
So the topic of my presentation is pedagogical approaches for fostering sustainability competencies in students. And myself being a teacher educator, I have tried to work on what are the various sustainability competencies. They represent the knowledge, skills, values, and attitudes that enable individuals to contribute to sustainable development. ये केवल theoretical concept नहीं है, ये वो practical capabilities हैं जो students को empower करती हैं कि वो real world की जो environmental problems हैं, जो social challenges हैं, उनको tackle कर सकें. और इन competencies में जो सबसे important competencies हैं, उनमें systems thinking है, ताकि वो interconnection जो environment, social और economic systems का है, उनको न सिर्फ समझें, बल्कि वो anticipatory thinking भी करें कि future scenario क्या होगा और जो actions हम करते हैं उनके consequences क्या होंगे. इसके अंतर्गत normative competence भी आएगा, ताकि जिसमें हम बात कर सकें कि values क्या क्या है और sustainability principles जो हैं अलग अलग context में वो क्या है, और strategic action जिसमें कि डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट करना है इनोवेटिव इंटरवेंशंस को, ताकि सस्टेनेबिलिटी के जो ट्रांजिशंस हैं वो पॉसिबल हो. कुछ और की कॉम्पिटेंसीज हो सकती हैं जिनमें कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है. हम सभी जानते हैं आने वाले युग में सबसे इंपॉर्टेंट 3C जो होने वाले हैं, उनमें से 2 कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अक्रॉस डिसिप्लिन्स और कल्चर्स जब काम किया जाए तो कॉम्प्लेक्स सस्टेनेबिलिटी के जो चैलेंजेस हैं उनको पार पाया जा सकता है. क्रिटिकल थिंकिंग में क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, assumptions क्या हैं, सस्टेनेबिलिटी के जो क्लेम्स होते हैं उनको एनालाइज करना और रिकॉग्नाइज करना कि पर्सनल वैल्यूज जो हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को. और इन सब के लिए बहुत आवश्यक है सेल्फ अवेयरनेस की कॉम्पिटेंस. मेरा अपना रोल क्या होगा लोकल और ग्लोबल कम्युनिटीज में, और अपने आप को मोटिवेट करना ताकि आप सस्टेनेबिलिटी के लिए मीनिंगफुल एक्शंस भी कर सकें. बीइंग अ टीचर एजुकेटर, मुझे लगता है एजुकेशन एक बहुत पावरफुल टूल है सस्टेनेबिलिटी के लिए, और उसके लिए जो हम टीचर एजुकेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन्हें कोर पेडागोजिकल अप्रोचेस को लाना होगा अपनी टीचिंग में. तो ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन जो है उसमें ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन से हटके एक्टिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और ऐसी मेथोडोलॉजीज जो स्टूडेंट्स को इस प्रकार से एंगेज करें कि वो चेंज एजेंट्स बन सकें. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, where the students engage directly with the sustainability issues. They work in the field, in the community projects and real-world problem-solving activities. In the collaborative inquiry one, students and the learners work together to investigate the complex sustainability questions. और यहाँ critical thinking को foster करना, और जो knowledge building है वो एक एक individual की ना हो, बल्कि collective knowledge building हो, और students develop करें, implement करें ऐसे sustainability के interventions को जो केवल उनको अवेयरनेस तक सीमित ना रखें बल्कि एक्शन ओरिएंटेड हो, मीनिंगफुल एक्शंस जो हैं वो उनको ले सकें. इसके लिए टीचिंग स्ट्रेटेजीज कौन सी सबसे इफेक्टिव हो सकती हैं, उनमें प्लेस बेस्ड एजुकेशन की बात होती है, जिसमें हम लर्निंग को लोकल, एनवायरमेंटल और सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट कर सकें. हियर द स्टूडेंट्स कैन इन्वेस्टिगेट इश्यूज इन देयर ओन कम्युनिटीज. दे कैन मेक द सस्टेनेबिलिटी पर्सनली रेलेवेंट एज वेल एज एक्शनेबल. तो जो लोकल इकोसिस्टम है उसको स्टडी करना, कम्युनिटी की सस्टेनेबिलिटी के ऑडिट करना और नेबरहुड में मैपिंग प्रोजेक्ट्स करना सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है. आज हम एनईपी के बेसिस पे मल्टीडिसिप्लिनरी या ट्रांसडिसिप्लिनरी की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट्स को आपको ये देखना होगा कि सस्टेनेबिलिटी की जो थीम है वो मल्टीपल डिसिप्लिन जो है उनमें कैसी हैं, ताकि स्टूडेंट्स इंटरकनेक्टेडनेस देख सके. वो केवल एक ज्योग्राफी से रिलेटेड डिसिप्लिन नहीं, वो साइंसेस का भी हो सकता है, वो फिलोसॉफी का भी हो सकता है, वो सोशियोलॉजी का भी हो सकता है. तो जो प्रोजेक्ट के डिजाइन हो वो क्रॉस करिकुलर हो, जो टीचिंग की टीम्स हैं वो भी कोलैबोरेटिव हैं, और जो स्टूडेंट्स लर्नर्स की जो वर्किंग टीम्स हैं वो भी कोलैबोरेटिव हो, और रियल वर्ल्ड की जो केस स्टडीज हैं उनको जानना और समझना बहुत आवश्यक है. जैसे कि अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो बहुत ज्यादा थराली जैसी स्थितियों की जब हम बात करते हैं या जोशीमठ की स्थिति की बात करते हैं, जहां जो आपदाएं हैं वो प्राकृतिक आपदाएं नहीं है बल्कि मानव जनित आपदाएं हैं, तो सस्टेनेबिलिटी के लिए इस प्रकार के फील्ड प्रोजेक्ट पे वो काम कर सकते हैं. और जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो, जो उनकी Sorry to interrupt you, ma'am. Please conclude your paper. Yeah, I'm concluding. So the learning experiences can be immersion in real context, critical reflection, collaborative solution development,
इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट। और जब आप सस्टेनेबिलिटी कॉम्पिटेंसीज के थ्रू आप उनको पढ़ा रहे हैं, आप डेवलप कर रहे हैं, तो असेसमेंट भी पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट से, परफॉर्मेंस असेसमेंट से और रिफ्लेक्टिव जर्नल से हो सकता है। होलिस्टिक असेसमेंट फ्रेमवर्क ऐसा हो जिसमें फॉर्मेटिव फीडबैक दिया जाए, सेल्फ असेसमेंट स्टूडेंट्स करें, और उसके साथ साथ कम्युनिटी का इवैल्यूएशन जिसमें एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी पूरा का पूरा रोल हो। इम्प्लीमेंटेशन के बहुत चैलेंजेस भी होंगे और उनके कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। करिकुलम के कंस्ट्रेंट होते हैं, टीचर प्रिपरेशन के कंस्ट्रेंट होते हैं, वो एक चैलेंज है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, असेसमेंट कॉम्प्लेक्सिटी होती है। लेकिन इन सब के लिए सॉल्यूशंस जो है वो आपसी बातचीत से और किसी प्रोग्राम से डिसाइड किए जा सकते हैं। और इसके लिए हम कर सकते हैं करंट प्रैक्टिसेस को ऑडिट करें, कोलैबोरेटिव नेटवर्क्स को बनाएं, पायलट करें और रिफ्लेक्ट करें, शेयर करें और इंस्पायर करें। These are the references and thank you. Thank you so much, ma'am, for your insightful presentation. Our next participant, Dr. Sheetal Bhasin Kapoor. Reference number 132, Dr. Sheetal Bhasin Kapoor. Next participant, reference number 133, Madhu Chanda. Yes, sir. I'm there, sir. Okay, ma'am. Please present your paper, ma'am. So screen is visible to you? I hope the screen is visible to everyone. Yes, ma'am. So a very warm good afternoon to one and all present here. So today I'm presenting my research paper that is titled Pathways of Inclusive Development in a Remote Tribal Valleys of Himachal Pradesh. So this study focuses on how development can become more inclusive in remote tribal regions where geography, culture, and governance plays a very important role. So coming towards the next slide. Not working. So without it's not moving. I don't know why. So inclusive development is not only about the economic growth. It means providing equal opportunities, access to resources, participation for all sections of society, especially the marginalized tribal communities. So my research focuses on the remote tribal valleys of Himachal Pradesh, which are characterized by the high altitude, physical isolations, governance, and socio-cultural factors together influence the development. So I use the mixed method approach, including secondary data, field observation, and interaction with the local people. So what are the three findings? That is geography, policy, and the challenges. So these valleys are physically isolated, which affects the transportations, education, healthcare, and access to the markets. So there is also a unique mix of traditions, tribal governance, and the modern administrations. So although the government such as the tribal sub-plans, welfare schemes such as the tribal, so many people still face the problems like weak infrastructure, poor connectivity, climate change, and limited access to quality education. And the main problem is migration of youth to cities. So these challenges slow down the process of truly inclusive development. So despite of these difficulties, the tribal community shows a strong resilience and the innovation like self-help groups, women collectiveness, youth networks are working together for the economic independence, skill development, environmental conservation, and new opportunities such as horticulture, ecotourism, sustainable agriculture are helping in improving the local livelihoods. So these community-led efforts to play a major role in promoting inclusive development from ground level. So concluding my topic, the development in these tribal regions is shaped a complex relationship between geography,
culture, and governance. For inclusive development, it is very important to strengthen the local governance, improving the infrastructure, basic services, promoting the culturally sensitive education, and supporting the sustainable livelihood. So I would like to end with this. Let us turn the awareness into the actions to build a future that includes everyone. Thank you for your time. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Next participant, Dr. Asha Kumari. Yes, sir. मैम कृपया अपना पेपर प्रेजेंट करें। जी, सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर आशा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, SRKG कॉलेज, सीतामढ़ी। टॉपिक है मनोविज्ञान, परामर्श और मानव विकास। मनोविज्ञान, परामर्श और मानव विकास तीनों का आपस में गहरा संबंध है। ये तीनों मिलकर मानव व्यवहार, उसकी मानसिक प्रक्रियाओं, भावनात्मक आवश्यकताओं और पूरे जीवन में होने वाले परिवर्तन को समझने में सहायता करते हैं। मनोविज्ञान मानव के विचारों, भावनाओं, व्यवहारों का अध्ययन करता है। यह समझने का प्रयास करता है कि व्यक्ति क्यों सोचता है, महसूस करता है और विभिन्न परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देता है। मनोविज्ञान विभिन्न उपक्षेत्रों जैसे विकासात्मक, सामाजिक, व्यक्तित्व और परामर्श मनोविज्ञान के माध्यम से मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाता है। परामर्श एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को उसकी समस्याओं, तनाव, भावनात्मक संघर्ष, संबंधों की जटिलताओं और जीवन के निर्णयों को समझने में सहायता करता है। परामर्शदाता सक्रिय सुनने, सहानुभूति और मार्गदर्शन के माध्यम से व्यक्ति की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। परामर्श व्यक्तियों को आत्म जागरूकता बढ़ाने, सकारात्मक निर्णय लेने और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव विकास जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह विकास चरणबद्ध और आजीवन चलता रहता है। बाल्यावस्था में जिज्ञासा और सीखने की क्षमता तेजी से विकसित होती है। किशोरावस्था में पहचान, आत्मसम्मान और सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वयस्क अवस्था में कार्य, परिवार और जिम्मेदारी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जबकि वृद्धावस्था में अनुभव, आत्मचिंतन और सामाजिक समर्थन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार को समझने में आधार प्रदान करता है। परामर्श व्यक्ति की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है और मानव विकास व्यक्ति के संपूर्ण काल में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। Our next participant, Sandeep Kumar, reference number 135. Next participant, Mrs. Divya Shri N. Namaste, sir. Namaste, ma'am. Please present your paper. Yes, sir. Humble pranams to everyone present here. I am Divya Shri N from Department of English, RNS First Grade College, Bangalore, Karnataka. Today I am going to present a paper on the international conference 7th theme, that is humanities and languages, under the sub-theme called philosophy, ethics and human values. So let me justify why I have taken this particular topic for the sake of this conference. So here we can see that in the present scenario, whatever happens in the society, it's all based upon the values. Just a second, I would like to share the PPT, sir.
Sir, is it visible, sir? Your screen is not visible yet, ma'am. No, not visible. Okay, sir, fine. Without PPT, I'm going to present the paper. So here, why I have taken this particular concept is, so in the present scenario, we can see that even it is good, even it is bad, even it is meritorious or demeritorious, pleasantful or unpleasantful, all the circumstances we judge upon values. For example, if any corruption happens, if any indiscipline happens, misbehavior happens, behavioral issues are going to take place, at that time what we are going to say, we will question them. We will judge, look at the values, look at the ethics, what they have taught. So here we can see that the values are the foundation of entire civilization, and even the society runs according to the traditions, customs, values, and based upon the righteous things. So hence we can understand that values are going to play a vital role in the society as well as in individual's life. So here I would like to give some of the instances, best noble intrinsic values such as beauty, karma, truthfulness, goodness, wisdom, knowledge, dharma, karma. So these are the values which comes under intrinsic values. So here to give some of the best noble personalities are, so we know the story of Raja Vikramaditya. So here, why he is so famous? All the time we will be giving one example of folk story that he went to the forest and he captured the spirit of Vetal. But it was not easy to go and capture the spirit of Vetal. Only the person who was carrying 36 qualities, virtues in himself, only that person was able to go and capture the spirit of Vetal. So one more person we have in our history and mythology, Raja Bhagiratha. So his constant trial, his constant struggles brought the river Ganga to on earth. So here every time knowledge, dharma, karma plays a vital role. And top of that, the values also carry the concept of beauty. Beauty doesn't mean that the physical appearance. Whenever we go to any temple, we have seen the idol of the god, but on top of that, we can see an idol of called Kirtimukha. So Kirtimukha, when we see that, he is not that much pleasantful, beautiful, but the sacrifices he has made for himself and the sake of God and goddesses, we can see in the story of mythology. So that is real beauty. And when it comes to knowledge, the best example is we have Kautilya. So one who belongs to Maurya dynasty, he has written the book called Arthashastra. He talks about administration, he talks about marital institution, he talks about penalty, he talks about taxations, all those things. If you see the vision which he has written, it is all based on values. How much tax should be given for the lower community? How much tax should be imposed on the higher community? What could be the judgment about minor mistakes for major punishments? How we have to decide? All those things are based Sorry to upon interrupt you, madam. Values. Kindly conclude your paper. Yes, hence without values, the society, the civilization, the personal life could not be balanced. Whatever the troubles, whatever the antisocial crimes and other things we are seeing in the society, it is all because of lack of values. Hence, the need of value is very much important in the contemporary society. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Our next paper presenter, Dr. Nishita Sharma and Pankaj Bhatt. Nishtha, Dr. Nishtha Sharma and Pankaj Bhatt. Next participant, Dr. Urvashi. Reference number 138. Next participant, Dr. Priyanka Agarwal. Next participant, Mrs. D.A. Pathrave. Reference number 140. Mrs. D.A. Pathrave. Reference number 140.
Next participant, Rimpi Singhwal. Yes, sir, I'm here. Ma'am, please present your paper. Yes, sir. So my screen is visible? Yes, ma'am. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. I'm Rimpi from BPS Women University, Sonipat, and now today I will briefly present key insights from our study on how artificial intelligence is transforming workflow management and employee experience. And there's an introduction. Wait a second. AI technologies such as chatbot, machine learning, automation, and predictive analysis are rapidly reshaping our HR functions. They streamline processes, reduce manual works, and support faster decision making. However, research findings on exact impact remain scattered. To bring clarity, we would conduct a systematic review of current studies, and my methodology is a systematic review was conducting using the Prisma methodology, and the data sources. Our review includes 29 peer-reviewed Scopus indexed articles published between 2014 to 2024. And our key findings is some AI technologies in HR like chatbots, predictive analysis, automation, and recommendation system. At chatbots for first level HR communication and onboarding, and predictive analysis to forecast turnover and performance trends. Automations for repetitive workflows and recommendation system for personalized learnings. And it's also helpful for employees' experience in their journey. Like AI reduces human biases by relying on data-driven evolutions. This makes performance assignments, rewards, and promotions more trans. It's also helpful and creates customized learning paths. Employees receiving training that matches their needs, improving development outcomes. And also helpful for better employee experience and well-being. Work-life balance through smarter scheduling, well-being through wellness monitor, collaboration via intelligent communication tools, reduce burnout through workload optimization. Overall, AI contribution to more positive employee journeys. And then we also despite its benefit, AI adoption faces important challenges. Challenges like ethical biases. If algorithm use flawed data, privacy concern with continuous monitorings, digital skill gaps among HR teams, employees' resistance due to fear of job loss, data quality issues that limit AI accuracies. And the last is conclusion, a dual approach. In conclusion, AI clearly enhances productivity, fairness, and employee satisfaction, but its success depends on responsible, ethical, and human-centric use. Organization must balance technology-driven efficiency with empathy, transparency, and trustworthy. Thank you for your attention, and thank you. Thank you, ma'am. Our next participant, Deepa Nathwani, reference number 142. A very good afternoon to one and all. Am I audible?
Yeah, ma'am. Very good afternoon. I'll present my screen, and thanks for giving me an opportunity to present this paper. Okay, I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Yeah. It's visible. A very good afternoon. The topic for presentation which I have selected today is hybrid work implementation and its strategic influence on business continuity and global prosperity. Understanding what is hybrid work culture, a system where you can work from home, a workplace model where employees partly work on site in offices or any remote location, maybe home or anywhere. It blends traditional office with flexible remote arrangements. It helps in productivity, employee well-being, and organizational efficiency. It's a combination of remote and in-office models. It has flexible schedules and digital collaboration. It helps in increased reliance on cloud, automation, and communication tools. The benefits of hybrid work model are better life balance, diminish expense and factory costs for the organizations. It fortifies employees' productivity because they can work 24/7 anywhere at their convenience. Models of hybrid work environment includes flexible hybrid, fixed hybrid, remote first hybrid, office first hybrid. Let's quickly understand. Flexible, employee can choose the location. Fixed, few days fixed from the office and few days from remote locations. Remote first hybrid, exceptional tasks to be done from remote places. Office first, limited resource availability in the office, otherwise on-site. Need for hybrid work culture in business environment in today's situation. Pandemic-driven disruptions exposed weakness in physical dependencies. Due to COVID-19, we were at home and everything was hand still. But due to these technological innovations, we could be at home and do all our jobs without stoppage. And this increased the income also, the work income flow was there and the expenses were also being met with. Otherwise, this would have been a very difficult situation to tackle. Increased digitalization's talent demand. One more increased opportunity here is workforce can be available anywhere. I can sit here and do a job for US. Organization need to remain operational amidst natural crisis. The objectives of this study is to assess the impact of hybrid work on business continuity and operational resilience, to examine the role of hybrid work in enhancing global opportunities, to identify technological, cultural, and managerial enablers of hybrid work success. It includes office, remote, and hybrid integration. Strategic importance of this kind of work systems enhances workflows, agility, and adaptability, attracts global talent, reduces operational costs. It drives innovation through digital transformation, improved productivity, of course, cost efficiency is there, access to global talent, better life work balance. Impact of hybrid. This is just a diagrammatic presentation of the same. Influence on global prosperity. It helps in economic growth as work talent is available everywhere, so they can do the jobs 24/7. Businesses can hire employees across the borders, reduces shortages. Environment sustainability, reduces traffic pollution, lower carbon, gives a good air quality. Inclusive development, employee opportunities extend beyond urban centers, support regional and rural economies as well, which helps in reduce inequalities. A small study was carried out wherein a primary research was conducted on around 100 people working in these kind of situations. They all felt that 82% of the people here felt, the respondents said that due to flexibility in their work culture, they can work on these different locations. The organizations have very well examined the policies and employed digital skills for their better outreach and outcome. Findings on business continuity. Second finding was 85% of agreed that hybrid work helped in retain operational flow during unexpected disruptions. Due to rains, people were at home. Hybrid work is a proven resilient strategy ensuring continuity and reducing operational risks. Findings on organizational performance and productivity. 80% of the respondents experienced an increase in personal productivity due to hybrid flexibility, which otherwise people cannot do.
These efficiencies drive to stronger business growths. Findings on global prosperity contribution. 72% agreed that hybrid job promotes broader job access and global talent. Hybrid work supports both economic inclusion and environmental sustainability. 79% of the respondents said that it helps in employee well-being experience and they can have a good work-life balance. This helps in boosts employee morale and retention, which helps the organization's stability. And quickly conclude on this, hybrid work improves continuity by reducing physical dependencies, enhances productivity through flexibility, expands access to global talent, economic research, reducing commuting environment sustainability, boosts innovation via collaborative. Hybrid work enhances productivity and global development. Organizations adopting these achieve long-term sustainability and competitiveness. Thank you so much. Thank you, ma'am. Next participant, Tanuja Rawat. Thank you so much. Next participant, Tanuja Rawat. Reference number 143. Tanuja Rawat. Next participant, Mrs. Madakani Kumari Chandra. जी सर, मैं हूँ। रेफरेंस नंबर 144, मदाकनी कुमारी चंद्र। जी सर। मैम अपना पेपर प्रेजेंट करें मैम। जी सर। मैं श्रीमती मंदाकिनी चंद्रा, सहायक प्राध्यापक भूगोल। आप सभी को धन्यवाद। वेरी गुड आफ्टरनून। मैं शासकीय लक्ष्मणेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरोद जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर इसका प्रभाव। जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों में से एक है, जो धरती की समृद्ध जैव विविधता पर व्यापक प्रभाव डाल रही है। वर्तमान में बेतहाशा बढ़ता वैश्विक तापमान, अनियमित वर्षा, पिघलते ग्लेशियर, बाढ़, सूखा, बादलों का फटना, समुद्र स्तर का बढ़ना, महासागरों में बढ़ता प्रदूषण एवं अम्लीकरण और पर्यावरणीय प्राकृतिक आवासों का विनाश विश्व के लाखों प्रजातियों एवं जीवधारियों को अस्तित्व को भयावह संकट में डाल रही है, जिससे कई प्रजातियां अपने अनुकूल पर्यावरण न मिलने के कारण विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी के तापमान में 1 सेंटीग्रेड वृद्धि कई विशिष्ट प्रजातियों के विलुप्ति के जोखिम को बढ़ा देता है। आईपीसीसी के विश्लेषण में 6116 पूर्वानुमानों के आधार पर 2700 प्लस प्रजातियों में से लगभग 44% को उच्च विलुप्ति हो रही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रिपोर्ट के अनुसार गर्म पानी वाले कोरल की लगभग 44% प्रजातियां अब विलुप्ति के जोखिम में हैं। वही हाल में वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 चौंकाने वाली है, जिसके अनुसार केवल 50 वर्षों में 1970 से 2020 के बीच में वन्य जीव आबादी के औसत आकार में 73% की भारी गिरावट आई है। सबसे अधिक गिरावट मीठे जल के पारिस्थितिक तंत्र में 85%, उसके बाद स्थलीय 69% और समुद्री 56% पारिस्थितिक तंत्र का स्थान रहा, जो कि भविष्य की खतरे को दर्शा रहा है। पृथ्वी की समृद्ध जैव विविधता संसाधन के वे स्तंभ है जिन पर हम सभ्यताओं का निर्माण करते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए संरक्षण आधारित नीतियां, वनीकरण, जीव आवासों की रक्षा, सतत कृषि, ग्रीन ऊर्जा का उपयोग, प्रदूषण पर नियंत्रण, जागरूकता और स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाकर पृथ्वी की जैव विविधता को अच्छी तरह से देखभाल करना तथा उसको अपनी अगली पीढ़ी को प्रदान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। यह शोध पत्र जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के बीच अंतर संबंध, उनके प्रभावों, कारणों और संरक्षण के व्यवहारिक उपायों का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है। धन्यवाद सभी का।
मैम आपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया? जी सर, जी हो गया। ओके मैम, थैंक यू। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं शुभी मिश्रा। Yes, sir, present. मैम प्लीज प्रोसीड। Yes, sir. So my slide is visible to you. Yes, ma'am. Okay. So I'm going to start with my introduction. My name is Shubhi Mishra, and today I will be presenting on how integrating Zumba and yoga can provide a comprehensive solution for women health. This talks focus on bridging modern fitness trends with traditional holistic practices. And see the slide. Modern women face professional and family and social demands equally. As we seen in our daily life, that women are doing their household chores and professional life equally. They are dividing them in an equal manner. So Zumba provided energetic, enjoyable cardio activity, while yoga offers mindful and recovery. When combined, these two creates a holistic approach benefiting physical, mental, and emotional health. In this slide, you can see Zumba sessions typically burns 300 to 600 calories, making them extremely effective for weight management. They improve aerobic fitness, metabolism, and even support bone health, and essential factors for women. Its interval based format helps elevate heart health efficiently. And in the yoga, you have seen that improve flexibility and mobility. At the same time, they are enhancing core health too. It regulate the nervous system, reduce cortisol level. As we guys know that women have a lot of cortisol level in herself, and yoga also improves balance and postures. These benefits counteract the stress and physical fatigue that many women experiences. In the slide 6, we are seeing synergistic integration. This integration works on the simply principle. Zumba provides the intensity and yoga efforts recovery. The combination reduce injury risk, balance training load, and improve movement quality. It ensures a complete fitness routine addressing all components. In the slide 7, we are seeing hormonal and women health. Women health is closely tied to hormonal balance. Both practices help regulate cortisol, supports reproductive health, improves metabolic function, and enhance body satisfactions. Yoga particularly helps stabilize menstrual and thyroid functions, while Zumba boosts energy and overall health. In the slide 8, we are seeing that psychological benefits. By doing yoga, we can instantly elevate mood through the music. As we all know that in the music there are some beats which are very high and some are very low. In yoga, we use the music which is very useful for meditation, and these are basically very slow in terms of rhythm, and it gives very mindfulness and promote mental clarity. Together, they can create a balanced psychological state and improve productivity. In the slide 9, we can see stress and emotional resilience. Zumba serves as an active stress release outlet, while yoga activates the parasympathetic nervous system. As we all know that parasympathetic system, we can say, is a relaxing hormone in which promoting relaxation and better sleep. And do you guys know that research has been gone that in women need more sleep than men? Their combined effect enhance immunity, emotional resilience, and the ability to manage daily stress effectively. And this is the 10th slide. Practical integration strategies. A practical weekly plan would include 3 Zumba and 3 yoga sessions. Combination sessions starting with the Zumba and ending with the yoga are also effective. Training must be personalized. Age, fitness level, and health condition should guide the intensity and type of sessions.
research evidence, and future directions. Many studies independently support the benefit of both yoga and Zumba. However, research on their combined effect is still limited. Future studies should explore long term interventions, optimal training ratios, and comparative benefits for women of different age group. So, this is my last slide. In this, I am going to conclude my whole study. To conclude, integrated Zumba and yoga offers a powerful holistic solution for women's physical, mental, emotional well being. This approach harmonizes intensity with relaxation and connect modern fitness practices with ancient cultural tradition. Thank you so much. Thank you, ma'am. Next participant, Mohan Prasad. Next participant, Mohan Prasad. कृपया अपना पेपर प्रेजेंट करें सर. जी सर. मैं मोहन प्रसाद, रिसर्च स्कॉलर HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन. अपार्ट ऑफ लिविंग ऑल फॉर्मेलिटीज, आई वुड लाइक टू स्टार्ट. जो पेपर का शीर्षक है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सीखने की प्रक्रिया, आलोचनात्मक शिक्षण एवं सांस्कृतिक प्रतिक्रियाशीलता के अंतर संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन. इसमें हमने कंटेंट एनालिसिस किया है, कुछ पिछले पेपरों का अध्ययन कर फाइनल करने की कोशिश की, कुछ निष्कर्षों तक पहुंचने की कोशिश की. जिसमें पहला सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत जो स्टूडेंट हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और उनका कक्षा में जो सहभागिता है उसको पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया जाता है. तो उसी को रेखांकित करता है यह प्रश्न पत्र कि शिक्षा एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है जो केवल पाठ्यक्रम और शिक्षण रणनीतियों से इतर जाती है. तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के जो अवयव हैं कि बालक की सामाजिक और पारिवारिक परिवेश, उसकी भाषा या मातृभाषा, मूल्य और विश्वास, स्थानीय ज्ञान एवं लोक परंपराएं. नेक्स्ट है आलोचनात्मक शिक्षण. ये इस संकल्पना का प्रतिपादन 1970 में पाउलो फ्रेरी के द्वारा किया गया, जो बैंकिंग मॉडल की अवधारणा का विरोध करता है कि बालक का मस्तिष्क एक बैंक है और उसमें अध्यापक ज्ञान को भर रहा है, जमा कर रहा है. आलोचनात्मक शिक्षण के जो अवयव हैं वो ये कहता है कि कक्षा में संवाद होना चाहिए, चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षा क्रियात्मक रूप से होनी चाहिए और उससे परिवर्तन होना चाहिए. नेक्स्ट है जेनेवा गे और लैंडसन बिलिंग्स के द्वारा प्रतिपादित सांस्कृतिक प्रतिक्रियाशीलता की संकल्पना, जो यह मानता है कि प्रत्येक बालक को कक्षा में भाषा, उसकी परंपराएं, उसका स्थानीय ज्ञान, इन सबको स्थान दिया जाना आवश्यक है. और इसके अवयव हैं जैसे बहुभाषिकता और उसकी मातृभाषा का प्रयोग, स्थानीय ज्ञान एवं समुदाय आधारित उदाहरणों का कितना समावेशन हो पा रहा है, शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पहचान की स्वीकृति कितनी है. इन सभी अवयवों को मिला दें तो कुछ कंक्लूड अवयव एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं जो आलोचनात्मक शिक्षण और सांस्कृतिक प्रतिक्रियाशीलता के संयोजन के रूप में प्रस्तुत हैं, जिसमें संवेदनशील और समावेशी परिवर्तनशील शिक्षा, आलोचनात्मक चिंतन और आत्मविश्वास, सामाजिक न्याय और समानता, लोकतांत्रिक सहभागिता मूलक और समावेशी कक्षा, सांस्कृतिक पहचान और जीवन अनुभवों को, संवाद अनुभव और सामाजिक न्याय को शामिल किया जाता है. इस शोध के जो उद्देश्य थे, छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अधिगम प्रक्रिया के अंतर्संबंधों का विश्लेषण करना, आलोचनात्मक शिक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक प्रतिक्रियाशीलता को समझना, समावेशी शिक्षण पद्धतियों की संभावनाएं और चुनौतियों को पहचानना. इन शोध उद्देश्यों पर आधारित इन शोध प्रश्नों का निर्माण किया गया, जो इस प्रकार हैं कि छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनके अधिगम अनुभवों को कैसे प्रभावित करती है, आलोचनात्मक शिक्षण कैसे सांस्कृतिक प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ावा देता है, उच्च शिक्षा संस्थानों में सांस्कृतिक समावेशन के क्या अवसर और चुनौतियां हैं. इस कार्य को करने के लिए हमने गुणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया है, जिसमें विभिन्न
शोध पत्रों को, दस्तावेजों को लेकर के उनका दस्तावेजीय विश्लेषण किया गया है और इस विश्लेषण करने के लिए थीमेटिकल एनालिसिस किया गया। इस थीमेटिकल एनालिसिस में 4 थीमें चयनित की गई, जिसमें थीम 1 सांस्कृतिक विविधता की पहचान करना, जिसके अंतर्गत बालकों की भाषा, क्षेत्र, सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रभाव क्या है, स्थानीय आदिवासी ज्ञान की क्या भूमिका है, पहचान आधारित या आइडेंटिटी क्राइसिस जो स्टूडेंट्स की है उनकी क्या क्या चुनौतियां हैं और उनको अध्यापक में कैसे समझा जाता है अध्यापक के द्वारा कक्षा में। थीम जो दूसरी है अधिगम प्रक्रियाएं, इसके अंतर्गत छात्र केंद्रित अनुभवात्मक अधिगम है कि वो छात्र केंद्रित है, अनुभव जनित है कि नहीं है, सहयोगात्मक लर्निंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। थीम तीसरा जो आलोचनात्मक शिक्षण को रेखांकित करता है, इसके अंतर्गत संवाद आधारित शिक्षण और समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित शिक्षण को रेखांकित किया। थीम 4 के अंतर्गत समावेशी शिक्षण और उसकी रणनीतियां किस प्रकार पहचान होती हैं और उनको कैसे विश्लेषित किया जाता है। इसके अंतर्गत विभेदित शिक्षण और रेफरेंस बेस्ड इवैल्यूएशन हो पाता है कि नहीं, इसको देखा गया। इन विश्लेषणों के आधार पे जो हमारे रिजल्ट निकले वो इस प्रकार निकले, जैसे एक थीम के आधार पे जो पहली थीम है उसमें सांस्कृतिक पहचान अधिगम रणनीतियों और सहभागिता को प्रभावित करती है। भाषिक जो विविधता है वो अवसर और चुनौतियां सर कक्षा आपने में दोनों पेपर उत्पन्न कंक्लूड करती करिए। हैं। ओके सर, ये कंक्लूजन ही पे हैं। अगला जो निष्कर्ष हमें मिला वो ये मिला कि जो समावेशी रणनीतियां हैं समान अवसरों के लिए नींव बनाती हैं। छात्रों में सांस्कृतिक शिक्षण के द्वारा आलोचनात्मक चिंतन और सामाजिक चेतना का विकास होता है। तीसरी थीम के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ वो ये हुआ कि सांस्कृतिक रूप से जो प्रासंगिक उदाहरण हम दे पाते हैं, जैसे रामायण का उदाहरण है, घुघुती बाछुती वाले जो छोटी कक्षाओं में गीत किए जाते हैं, इनके द्वारा विभेदित निर्देशन दिया जाता है और लर्निंग प्रभावित होती है और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। धन्यवाद सर। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है रेफरेंस नंबर 147 बबीता मिश्रा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट बबीता मिश्रा। जी सर, मैं प्रेजेंट करूं सर? यस मैम, यस मैम, वेलकम मैम। यस मैम, प्लीज प्रोसीड टू प्रेजेंट योर पेपर। मैम अपना पेपर प्रेजेंट करें। जी सर, जी सर, ये शेयर हो रहा है? यस मैम। ओके। I'm Bobita Mishra, research scholar from Mangalayatan University, Aligarh, and my research topic is women's empowerment through cooperatives in Nepal, a study of skill development and labor participation. Sorry, it's not working. You can present your paper, ma'am, without the PPT. Yes, sir, it's not working, sir. Please take a moment to fix it. Otherwise, you can proceed verbally. Okay, sir. Sir, it's not working, sir. May I proceed, sir? My abstract is women's empowerment continues to be a top developmental concern, especially in light of gender-based inequality, social exclusion, and rural poverty in Nepal. With an emphasis on skill development and labor engagement, this study investigates the connections between women's empowerment and cooperative membership using a mixed method approach that includes focus groups, field surveys, and secondary literature. The study examines how cooperatives help Nepali women increase their economic independence, social mobility,
mobility, decision-making authority, and livelihood security. The result shows that women who belong to cooperative have a greater levels of self-assurance, entrepreneurial skill, employment chances, and income. Nonetheless, issues including restricted financial resources, lack institutional backing, enduring patriarchal standards, and insufficient training facilities continue to exist. The study concludes that cooperatives could change the world if they are given the backing of inclusive governance structure, gender-sensitive policies, and capacity-building programs. I have keep on in my presentation introduction part. There is the introduction part. This presentation highlights the significant role of cooperatives in empowering women in Nepal. It covers cooperative efforts in socio-economic development, and also this study looks at two important aspects of cooperatives' role in women's empowerment in Nepal. Skill development, one is skill development and the other is labor involvement. It aims to ascertain whether women's competencies, career opportunities, and decision-making authority with their homes and communities are improved by cooperative involvement. My statement of problem is disparities persist in leadership, wages, and training access for Nepali women. Cooperatives aim to bridge gaps, but questions remain on skill gains, leaderships, and barriers. There are so many barriers and limited formal finance, patriarchal norms, and low-wage sectors. So my research objective is access female involvement in socio-economic profiles in cooperatives, evaluate skill programs, impact on economic activity, measure effect on income, workforce entry and decision makings, identify obstacles, and recommend policy enhancement, women's empowerment. My research questions are: how much do women's skill and labor force involvement actually improve as a result of cooperatives? Are programs for cooperative training sufficient, available, and pertinent to the requirement of women? Do women who participate in cooperative activities acquire leadership positions and decision-making authority? What institutional, cultural, and structural obstacles prevent them from being fully empowered? These deficiencies support the need for in-depth investigations into Nepali women's cooperatives and their revolutionary possibilities. My theoretical framework, I have taken 3-4 theories from capability approach. One and the another is social from cooperatives, and 3 officials from NGOs and government sectors. And there I have taken the focal groups discussions, observations, and evaluations of cooperative documentations. And I have taken only 5 districts of the Nepali country. Data analysis, I have taken quantitative data as well as qualitative analysis, percentages, mean, and scores utilizing descriptive statistics. And also in qualitative data were examined using theme analysis. Examination and interpretation of field survey data, I have taken so many percentage, what women's, their age groups and their secondary education syllabus. Please conclude your paper. Okay, sir. So what I challenge found is limit access opportunities patriarchy from an inadequate advanced level training. So my conclusion is cooperative boost skills, income, and agency, but need policy support, gender policies, capacity building, and digital literacy, leadership training, call for inclusive governance to advance Nepal's goals. Thank you very much. Thank you, ma'am. Sir, I have finished. Our next participant, Bhupendra. Next participant, Parmanand Chauhan. Yes, sir. Reference number 148. Sir, yes, sir. Please present your paper. Yes, sir. I am presenting my paper. My name is Parmanand Chauhan, Assistant Professor and Head Department of Economy, Government Degree College, Nainba, Tehri Garhwal. My topic is impact of SSGs and microfinance on household income, a case study of Tehri Garhwal. Introduction, the main key points of introduction is SSGs promote financial inclusion and rural empowerment.
Microfinance supports income and livelihood generation, significant in geographically challenging regions like Tigri Garhwal. Background of SSGs started to encourage group saving and collective strength, key driver under NRLM, National Rural Livelihood Mission for Women Empowerment, acts as bridge between rural households and formal finance. Significance of microfinance provides collateral-free loans, support micro enterprises, dairy, tailoring, agriculture, enhances consumption smoothing and income stability. Study area is Tigri Garhwal, mountainous district of Uttarakhand, limited livelihood opportunities and migration is common. SSGs are crucial for supplementary income sources. Objectives are to assess income changes after joining SSGs, analyze saving and financial inclusion, evaluate livelihood diversification, study women empowerment, identify challenges faced by SSG member and policy recommendation. Research questions: how do SSGs influence household income? What is the change in saving behavior? Do SSGs support livelihood diversification? How empowered are women after joining SSGs? Methodology: descriptive and analytical research design adopted. Sample size is 50 SSGs member, tools, questionnaire and interviews, analysis, descriptive and statistics. Sampling details: block Chamba, Jaunpur, Dholdar and Narendra Nagar, stratified random sampling and ensured representation across multiple villages. Data collection tools: structured questionnaire, key informant interviews, focus group discussion. Profile of respondents: mostly women aged 25 to 50, agriculture and livestock, major occupations, mixed literacy levels. Findings: income before joining SSG, majority had low and inconsistent income, dependence on agriculture and wage labor, seasonal income fluctuation common. Income after joining SSG: significant increase in earnings, new income sources emerged, better financial stability. As shown in figure, red color pillar is shows before joining SSG income, and green pillar shows income after joining SSG, which is clearly shows that income increased after joining SSGs. Saving behavior: shift from irregular to regular saving, higher financial discipline, saving doubled for many members. As so in the figure, red line shows before joining SSG saving, and green line shows after joining SSGs, which is clearly shows that before joining SSG saving are below 2000 and after joining SSG saving increased up to 4000. Livelihood diversification: multiple income streams developed, reduced dependence on agriculture, improved resilience to economic shocks. Women empowerment: increased confidence, mobility, greater role in household decisions, better control over finances. Challenges identified: limited market linkages, small loan size, low financial literacy, poor access to technology. Policy recommendation: increase loan size and credit access, strengthen market linkages, provide skill and digital training, improve SSG capacity building. Major findings: SSGs significantly improve income and savings, support micro entrepreneurship, enhance women empowerment, vital for rural economic growth. Conclusion: SSG play a transformative role in Tigri Garhwal, effective in promoting livelihood security, need ongoing support for sustainability. Future scope: comparative study across Uttarakhand, use of digital SSG and fintech, long-term impact assessment. Thanks a lot. Discussion and question and discussion welcome. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Our next participant, Bhupendra Singh and Rajdeep Singh. I am present here, sir. Okay, please proceed. Okay, sir.
I am audible. Yes, sir. Uh, Myself, Bhupendra Singh, research scholar, Department of Computer Science and Engineering, IFTM University, Moradabad. My topic is smart technology, smart economies, and IoT as a driver of global prosperity. Introduction: IoT involves a network of interconnected devices, sensors, and systems that can collect and exchange data in real time. This technology enables the monitoring, automation, and optimization of various processes, leading to improved efficiency, reduced waste, and lower environmental impact. Billions of connected devices from industrial sensors to wearables and agriculture crops are constantly creating data that can be analyzed to optimize process, reduce cost, and create entirely new business model. The global IoT market was valued at approximately 714 billion US dollars in 2024, and it projected to exceed 4 trillion by 2032. This paper examines how IoT can serve as a smart economy and driver of global prosperity, focusing on India as a case study. Objective of this paper, the to review global IoT trends and their macroeconomic impact, mapping India IoT policy and market landscape, to analyze IoT applications across sectors, smart cities, agriculture, manufacturing, and healthcare, to identify the key challenges and suggest a policy framework for using IoT to create a smart economy in India. Research methodology. This study adopts descriptive analytic approach based on secondary data, literature synthesis, and source include market research and industry report on global and Indian IoT market, government policies and mission document NDCP 2018, and academic articles and technical reports on IoT deployment in smart cities, agriculture, and healthcare in India. Recent news and particular practitioner and accounts detailing concrete IoT implementation like smart parking, health ATMs, remote monitoring, global IoT trends in smart economies, market growth. Spending on IoTs has grown rapidly across the globe across industrial, consumer, and public sector domains. Worldwide IoT market values will be approximately 714 billion US dollar in 2024, and it is projected 4 trillion by 2032. There will be approximately 18.5 billion IoT devices in 2024, which expected to cross 21 billion by 2025 and 39 billion by 2030. Smart cities and green transitions around the world, IoT has become central to smart city programs aimed to improve urban mobility, energy efficiency, waste management, and public safety. Market reports estimate that IoT smart city market will be worth approximately 195 billion USD billions in 2023, and is expected to exceed 950 US dollar by 2032. IoT is also playing a growing role in the green transition through smart grid, smart meters, and real-time environmental monitorings.
Sir, please conclude your paper. Okay, sir. Okay. When IoT is combined with AI, advanced connectivity, and supportive institutions, it has the potential to reset the economy, create and distribute values around the world. IoT is central to the development of smart cities, industry 4.0, and green transitions. For India, the stakes are especially high. IoT can help address structural challenges like congestion, resource stress, uneven service delivery, and the productivity gap, while also creating new opportunities for entrepreneurship, employment, and inclusion. This paper shows the India has made considerable progress in creating an enabling policy environment and deploying IoT solution in smart cities, agriculture, manufacturing, and healthcare. Thank you, sir. Thank you, sir. Our next participant, Dr. Bhagwati Prasad Purohit. Reference number 150, Dr. Bhagwati Prasad Purohit. Next participant, Dr. Mamta Bhatt. Yes, sir. Hello. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Hello, sir. हाँ जी, sir. Ma'am, namaskar. Please Namaskar, sir. proceed your PPT. Yes, sir. Sir, PPT is not here. I am presenting paper verbally. I am audible, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sir. Okay. So, firstly, I'm congratulated to entire team of this international conference and introduce myself, Dr. Mamta Bhatt, Assistant Professor, Commerce, Government PG College, Agastmuni. Today's my topic for this conference, NEP 2020 and its vision for transforming Indian education, a study of its features and challenges. And this paper highlights the key features of NEP, implementation issue, and future challenges in the Indian education system. After the gap of 34 years, the Union Cabinet of India approved the new education policy 2020 of India on 29 July 2020. First education policy of the century in India and alters the traditional and outdated 34 years old national education policy since the year 1986. The main focus of the National Education Policy 2020 to transformation of reforms in school education and higher education system in India. Vision of NEP 2020, education rooted in India ethos and values, develop deep sense of respect towards fundamentals, rights, duties, prompt constitutional values, conscious awareness of role and responsibilities, ensure universal access, equity, and quality education. And also, it's also focused on developing the knowledge, skill, and value needed the human rights, sustainable development, responsible living, and global harmony. The vision of this policy is to build pride is being Indian not only in thinking, but also in attitude, behavior, and actions. My objectives of this paper to analyze key features of NEP 2020 and to identify the major challenges in implementation. This study is based on secondary data, data collection from government websites, journals, magazines, and published resources. The main reforms of NEP, firstly, school education reforms. Then NEP replaced the old 10th plus 2 system with a new 5+3+3
5+3+3+4 structure for school education. Under this model, schooling is divided into 4 stages. Number 1, fundamental stage is it 3 to 8 years, preparatory stage 8 to 11 years, and middle stage 11 to 14 years, and the secondary stage 14 to 18 years. The main objectives of school education reforms is flexible multidisciplinary learning, vocational education from class 6, reduce rote learning, like that traditional ratta type education, and focus on critical thinking, inclusive and equitable education. And same things in reforms in higher education. After completing 1 year of study, student will receive a graduation certificate. After completing 2 years of studies, student will receive a graduation diploma. After completing 3 years of study, student will awarded a graduation degree. Those who completed the 4-year undergraduate program will receive a research-oriented graduation certificate. Focus on innovation and incubation centers. PhD maybe 4-year maybe 4-year PhD time period, and main focus on research innovation incubation center. And the current gross enrollment ratio GER, like that gross enrollment ratio GER जिसको हम कहते हैं of higher education of 26.3% will be raised to be 50% by 2030. जैसा कि पेपर में मैंने बताया था कि हमारा जो पेपर है वो मेन हाईलाइट है इसका जो इश्यूज एंड चैलेंजेस, फ्यूचर चैलेंजेस हैं उनके बारे में. तो जो इसके मेन इश्यूज हैं वो हैं आपके शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर, डिजिटल डिवाइडेड रूरल और अर्बन एरिया में अभी भी वो गैप बना हुआ है कि लोगों के पास उतना एक्सेस इंटरनेट का भी मौजूद नहीं है, जिससे कि वो चीज़ों को जो नई NEP में जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कहते हैं कि हमें जो है ऑनलाइन कोर्सेज से हम उनको कंप्लीट कर सकते हैं. तो अभी भी जो है रिमोट एरिया जो है वहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं है. फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट्स है. लैंग्वेज इशू सबसे बड़ा है, क्योंकि जब उसमें क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस चलती हैं, तो अगर टीचर इधर उधर उनके ट्रांसफर्स होते हैं तो उनको लैंग्वेज इशू जरूर आता है. जो लैंग्वेज पे फोकस किया जा रहा है कि मदर टंग में जो है आपको जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में करनी है, वो वाला इशू है. वीक इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल एंड कॉलेजेस, ये है. एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन इन न्यू असेसमेंट सिस्टम, जो नया असेसमेंट सिस्टम हमारे पास है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन हमारे पास बहुत ज़्यादा है. एंड द लास्ट कंक्लूजन ऑफ माई स्टडीज, NEP 2020 is a transformative policy of modern India. Focus on holistic, flexible and skill-based learning. Success depends on effective implementation, funding and training. Potential to make India a global knowledge superpower in 2030. Then thank you very much and congratulations to my colleagues, Ravindra sir, Raturi sir, Hinama and Deep sir. And thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Our next participant, Swati Sundaryal. Yes, sir. मैम कृपया अपना पेपर प्रेजेंट करें. मैम सर मेरी PPT शो हो रही है. हेलो. Yes, ma'am. Okay. Myself Swati Sundaryal, Assistant Professor History, Government PG College, Karanprayag, Chamoli. मेरा जो रिसर्च पेपर का टॉपिक है वो है औपनिवेशिक काल में स्वदेशी उद्यमिता का समालोचनात्मक अध्ययन. इसको मैंने कुछ अलग अलग स्लाइड में डिवाइड किया है. सबसे पहले औपनिवेशिक काल में स्वदेशी उद्यमिता को समझने के लिए हमें थोड़ा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के ढांचे के विषय में पता होना आवश्यक है. तो औपनिवेशिक शासन में भारत की आर्थिक संरचना मूलतः ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की सेवा के लिए तैयार की गई थी. मुक्त व्यापार के नाम पर लागू की गई नीतियां वस्तुतः एक तरफा और असमान थी. जैसे भारत को कच्चे माल का स्रोत और ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बनाया गया. भारतीय उद्योगों पर 70 to 80% शुल्क, जबकि ब्रिटिश वस्तु जो होते थे वो लगभग शुल्क मुक्त होते थे. इससे भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते थे. 1879 में भारतीय कपड़ा मिलों पर जो उत्पादन शुल्क था वो इस असमानता को और ज्यादा बढ़ा देता है. इन सब बाधाओं के कारण स्वदेशी उद्यमिता केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रह गई जहां ब्रिटिश पूंजी की रुचि कम थी या फिर जहां पे परंपरागत भारतीय व्यापारिक नेटवर्क जो थे वो मजबूत थे.
स्वदेशी उद्यमिता केवल सीमित क्षेत्रों जैसे कि जूट, कपड़ा उद्योग इन्हीं तक सीमित रह गई थी। परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता के समय आधुनिक उद्योग का केवल 6 to 7% भाग ही भारतीय हाथ में था, जबकि लगभग 90% या फिर इससे अधिक ब्रिटिश नियंत्रण में था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का यही संरचनात्मक विषमता जो है वो स्वदेशी उद्यमिता की सबसे बड़ी सीमा और आर्थिक राष्ट्रवाद का मूल स्रोत बनी। नेक्स्ट मैं इसको आगे बढ़ा देती हूँ। स्वदेशी उद्यमिता के उद्भव की हम बात करते हैं। ब्रिटिश भारत के इतिहास में 1905 से 1947 तक का काल न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम का दौर था, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की खोज का भी दौर माना जाता है। इस कालखंड में स्वदेशी शब्द केवल बहिष्कार का पर्याय नहीं रहा, बल्कि उसने एक नई उद्यमशीलता को जन्म दिया, जिसे आज हम स्वदेशी उद्यमिता कहते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण बना था। जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आह्वान किया था। दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त जैसे लोगों ने, विद्वानों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी के द्वारा आर्थिक शोषण जो था भारत में हो रहा था उसको उजागर किया। दादा भाई नौरोजी ने तो अपना बहुत फेमस जो उनका पेपर था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले धर्म का जो आर्थिक निकासी भारत से हो रही थी उसकी आर्थिक जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने इसको धन के निष्कासन को एविल्स ऑफ एविल्स की संज्ञा दी थी, मतलब अनिष्टों के भी अनिष्ट की संज्ञा इसको प्रदान की। इसको हम ज्यादा अच्छे से तो समझ सकते हैं जब हम सुलिवान के कोटेशन को देखें। वो कहता है कि ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था एक स्पंज की तरह है जो गंगा के पानी को सोखता है और टेम्स नदी में निचोड़ देता है। मतलब भारत से जितना कच्चा माल तो तैयार होता है और लंदन के सामने टेम्स नदी है, मतलब लंदन में जाके, मतलब इंग्लैंड में जाके पूरा का पूरा क्या होता है, कच्चा माल वहां से इंग्लैंड ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट मैं प्रारंभिक स्वदेशी उद्यम की बात करती हूँ। स्वदेशी उद्यमिता का पहला सबसे प्रभावशाली क्षेत्र जो है वो कपड़ा उद्योग रहा है। 1906 में कलकत्ता में बंग लक्ष्मी कॉटन मिल्स, मोहिनी मिल्स, बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स ये सब स्थापित हुई थी। 1907 में बहुत फेमस जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से शॉर्टकट में कहते हैं, उसकी नींव रखी थी। स्वदेशी बैंकिंग के उदय में 1895 से सबसे पहले पीएनबी, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1940 में यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक और 1943 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई, जो स्वदेशी उद्यमों को पूंजी उपलब्ध कराने का एक प्रकार से माध्यम बने थे। नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ रही हूँ। गांधी जी ग्रामोद्योग और संगठनात्मक विकास की ओर। महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी को केवल आर्थिक बहिष्कार का आंदोलन न मानकर एक जन आधारित आर्थिक सामाजिक क्रांति में परिवर्तित किया। 1919 के बाद उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को चरखा और खादी से जोड़ा, जो ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता, जिसको हम आज की डेट में मेक इन इंडिया कहते हैं, और स्वराज का आधार माने गए। 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में खादी को राष्ट्रीय नीति का दर्जा दिया गया। 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ और 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना हुई। 1927 में फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई, जो कि स्वदेशी पूंजी के संगठित रूप का एक निर्णायक प्रारंभ मानी जाती है। स्वदेश इसमें हम आगे बढ़ते हुए द्वितीय विश्व युद्ध और स्वदेशी उद्यमिता का स्वर्णिम काल जो माना जाता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से 45 तक, उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटेन को, मतलब उस दौरान ब्रिटिश आयात जो था वो एक प्रकार से रुक सा गया था, जिससे बहुत ज्यादा जो बेनिफिट मिला वो भारतीय उद्योगों को मिला, उसको उनको एक अवसर मिला। बिरला समूह ने हिंदुस्तान मोटर्स, टैक्समैको, सेंचुरी टेक्सटाइल, ये इन सब की शुरुआत की। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों की अगर मैं बात करूं, जैसे बंगाल केमिकल्स, अलेम्बिक और सिप्ला जैसी फार्मा कंपनियां जो थी, वो तेजी से उनका एक प्रकार से विस्तार हुआ। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो टाइम पीरियड था वो भारतीय उद्योगपतियों के लिए एक प्रकार से गोल्डन एरा माना जाता है। मैम प्लीज कंक्लूड कीजिए। कंक्लूड, ये कुछ मैंने फोटोग्राफ्स लिए थे, ठीक है, मैं कंक्लूड ही इसको कर लेती हूँ लास्ट में। निष्कर्ष में मैं कहना चाहूंगी, औपनिवेशिक काल में स्वदेशी उद्यमिता भारतीय आर्थिक इतिहास की एक बहुआयामी, सीमित, फिर भी निर्णायक अध्याय माना जाता है।
ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने जहां भारतीय उद्योगों को कमजोर किया, पूंजी संचय की संभावनाओं को हटाया और स्वदेशी व्यापारिक वर्ग को हाशिए पर धकेला, वहीं उसी दमनकारी संरचना के भीतर भारतीय उद्यमियों ने उपलब्ध खाली आर्थिक स्थानों को पहचान कर उनका उपयोग किया। यह उद्यमिता न तो पूर्णतः राष्ट्रवादी प्रेरणा से संचालित थी और न ही औपनिवेशिक सत्ता का परतंत्र पूंजी, बल्कि यह औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अंतर विरोधों की एक प्रकार से उभरते अवसरों का रणनीतिक उपयोग मानी जाती है। कुल मिलाकर अगर मैं कहना चाहूँ तो विदेशी जो आपकी स्वदेशी उद्यमिता है उसको एक ऐसे ऐतिहासिक अनुभव के रूप में समझना आवश्यक है जिसने औपनिवेशिक दमन की भी भारतीय समाज की आर्थिक संरचनात्मकता, व्यापारिक ऊर्जा और राष्ट्रीय चेतना को जीवित रखा और आधुनिक भारत के औद्योगिक विकास की आधारशिला रखी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर चंद्रावती टमटा, रेफरेंस नंबर 153। जी सर। हेलो। हाँ मैम नमस्कार, कृपया अपना पेपर प्रेजेंट करें मैम। नमस्कार आप सभी को जो भी इस द्विदिवसीय भव्य सेमिनार से जुड़े हैं। सर्वप्रथम मैं वाणिज्य विभाग के सभी प्रोफेसर्स को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतना सुंदर ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं डॉक्टर चंद्रावती टमटा, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करणप्रयाग। मेरा जो पेपर का विषय है वह है आयुर्वेद के अनुसार गर्भिणी स्त्री में जनित ज्वर का पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा निदान। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सृष्टि का उद्भव यानी निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है एवं इन महाभूतों से मनुष्य का निर्माण भी हुआ है। इन पंच महाभूतों से ही त्रिविध दोषों की उत्पत्ति हुई है जो कि सभी मानवों में उपस्थित होता है। वह दोषों के साम्य होने पर स्वस्थ, सुदृढ़, बलशाली होता है एवं प्रकोपित होने से व्याधियां यानी रोग जो होता है हमारे शरीर में वो पैदा हो जाता है। व्याधियों का शमन करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ मानव के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आयुर्वेद आधार स्तंभ के समान विद्यमान है। आयुर्वेद का उद्देश्य यह भी है जैसे कि हमारे संस्कृत में बताया गया है कि प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यस्य रक्षणम मातुरस्य विकार प्रशमन च, यानी आयुर्वेद में स्वस्थ मनुष्य उसे कहा गया है जिसके तीनों दोष यानी अग्नि, धातु एवं मल क्रियाएं अच्छी प्रकार से कार्य करती हैं एवं जिसकी इंद्रियां मन प्रसन्नचित होती हैं। आयुर्वेद के विषय में संक्षिप्त रूप से कहना चाहूंगी कि सर्वप्रथम जो प्रश्न उद्घटित होता है कि आयुर्वेद किसे कहते हैं, यानी आयुर्वेदाचार्यों ने आयुर्वेद की परिभाषा देते हुए कहा है कि आयु अस्मिन् विद्यते अनेन वायुर्विन्दति इत्या आयुर्वेदः, यानी अर्थात जिसमें जीवन से संबंधित ज्ञान एवं लंबी आयु जीने के उपायों की चर्चा होती है उसे आयुर्वेद की संज्ञा देते हैं। चरक ने भी आयुर्वेद की परिभाषा को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है जिसमें हितायु, अहितायु, सुखायु एवं उसके लिए किस प्रकार का आहार आचार हितकर या अहितकर हो, इस प्रकार का विवेचन इस चरक संहिता के द्वारा किया गया है तथा आयु की अवधि बताई गई है उसे आयुर्वेद कहा जाता है। तो विद्वानों ने वेदों के 4 उपवेद स्वीकार किए हैं। इन उपवेदों में आयुर्वेद में ऋग्वेद का उपवेद स्वीकार किया गया है। तो सर्वप्रथम अष्टांग आयुर्वेद और दूसरा काय चिकित्सा, तीसरा शालक्य तंत्र और चौथा कौमार्य भृत। तो इसके अंतर्गत गर्भावस्था की चिकित्सा संबंधी जानकारी दी गई है किसमें, कौमार्य भृत में। तो जिस शास्त्र में गर्भावस्था के अंतर्गत गर्भिणी के स्वास्थ्य की रक्षा तथा उत्पन्न व्याधियां, व्याधि माने रोग की चिकित्सा का वर्णन, प्रसव के उपरांत नवजात शिशु से संबंधित देखभाल एवं चिकित्सा की जाती है, कौमार्य भृत तंत्र कहलाता है। जैसे हमारे आचार्य सुश्रुत ने कौमार्य भृत के संदर्भ में कहा है कि कौमार्य भृतम नाम कुमार भरणम धात्री क्षीर दोष शोभनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानम च व्याधिनाम उपशमनार्थम, यानी जिसमें शिशु का पालन पोषण, गाय के दूध में दोषों का शमन, दूषित दूध एवं ग्रहों से पैदा होने वाले व्याधियों का वर्णन हो उसे कौमार्य भृत कहते हैं। आज के वर्तमान समय में स्त्रियों में गर्भावस्था के दौरान कई समस्याएं और रोग उत्पन्न हो जाते हैं जैसे अंतःस्रावकी एवं पुनः गर्भधारण को धारण करना से संबंधित व्याधियां आती हैं जिसे वर्तमान में गायनो डॉक्टर्स या चिकित्सक कहते हैं। ऐसी व्याधियों को देखते हैं और उसका
इलाज करते हैं। गर्भिणी स्त्री को 9 मासों में आहार और विहार जैसे ऋतु परिवर्तन के कारण अनेक शारीरिक मानसिक रोग हो जाते हैं, जिसके कारण गर्भिणी एवं गर्भस्थ शिशु दोनों क्षतिग्रस्त होते हैं। कई बार हमारे सामने ऐसे तथ्य भी आते हैं, जैसे 2-3 महीने में गर्भधारण यानी गर्भपात के रूप में जो शिशु हो जाता है वो खराब हो जाता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान गर्भिणी को सामान्य विशिष्ट व्याधियों से बचाना ही आयुर्वेद का एक परम ध्येय रहा है। गर्भिणी ज्वर रोग पर एक शब्द कहना चाहूंगी कि चरक संहिता में गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ माँ और शिशु के लिए विस्तृत गर्भिणी परिचर्या का वर्णन किया गया है, जिसमें आहार, जीवन शैली और आचरण के लिए निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि आहार उनको किस प्रकार का करना चाहिए। पेय पदार्थ में सूप, दूध आदि जो भी चीजें होती हैं वो लेनी चाहिए। अंकुरित सब्जियां हो गई, फल ताजे हो गए, इस प्रकार से नेक्स्ट मेरा है ज्वर रोग में औषधि प्रयोग, यानी हमारे आयुर्वेद के अनुसार हम क्या औषधि उसमें दे सकते हैं एक गर्भिणी स्त्री के लिए। तो त्रिमास यानी 3 मासों में हम वह औषधि नहीं दे सकते हैं, तो चतुर्थ मास में औषधि देना इसमें उपयुक्त माना गया है। तो कश्यप ने भी गर्भिणी स्त्री को उपवास का विधान भी इसमें बताया है। तो इसमें मैं खत्म करना चाहूंगी यहाँ पे अपना पेपर। मैंने यथाशक्ति यथामति इस शोध पत्र के माध्यम से गर्भिणी के गर्भावस्था के दौरान होने वाले सामान्य रोगों के निदान और उपचार को आपके समक्ष रखा। तो आप सभी का धन्यवाद, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट डॉक्टर प्रियंका गोसाई। डॉक्टर प्रियंका गोसाई, रेफरेंस नंबर 154। डॉक्टर सुगंधा वर्मा। Yes, sir, I am here. Yes, sir, I am here. वेलकम मैम, प्लीज प्रेजेंट योर पेपर मैम। Sir, is my PPT visible to you? Yes ma'am. Yes ma'am. It visible. Okay, okay. Thank you so much. And good afternoon and warm greetings to all the respected organizing team members, respected session chair, Professor Preeti ma'am, and all the participants joined over here. I am Dr. Sugandha Verma, Assistant Professor, Department of Commerce from Rajkiya Mahavidyalaya, Chinyali Saur, Uttarkashi. And I am going to present my paper on bridging survey mode gaps in omni-channel commerce, RAM-based design for robust CX, CSAT, and NPS metrics. So, if we see the background of omni-channel commerce, the reality is that today's consumer have many touch points like e-commerce websites, mobile apps, social media and WhatsApp links, in-store kiosks, tablets, etc. So here comes the research challenge in the form of that consumer is the same, but survey modes are different. And from that, the key question arises that do we consider these responses on same scale came from different modes? So the problem statement is, we can say that we have one questionnaire, one mode, and one context. However, the reality at present in front of us, that same questionnaire and multiple modes like mobile, desktop, WhatsApp, tablets, etc. So the mode effect become different. And here the core problems emerges like without proper methodology, comparisons across modes may be biased. On the basis of literature review, that I found that numerous studies on online versus offline surveys were present, but few of those are based on omni-channel or multi-platform and real consumer context. There is method of measurement invariance, multi-group SEM, but it has been rarely conceptualized in the form of deliberate cross-platform survey design. So a unified conceptual and statistical framework is required for us, for researchers, for handling cross-platform survey data. Ultimately, the objectives of my study present here in the form of
proposed a new framework, that is Response Equivalence Modeling Framework, REM framework, for cross-platform consumer surveys that may recognize the mode-based response biases. It may facilitate statistical correction or adjustment, and it may also facilitate the researchers and practitioners in interpreting the omni-channel survey data. Now, the key concept we can say that in omni-channel consumer research, consumer journey is spread across online and offline touchpoints. And response equivalence, when responses from different platforms can be treated as comparable and combinable. So again, what I was talking about, the response equivalent modeling framework, here I am presenting in my slide this framework, and you can see that as independent variable I have placed mode characteristics, and as dependent variable I have placed mode based responses. Now the proposed research structure, we can say in the form of example, like measuring customer experience, e-service quality of a retail brand or e-commerce platform. This proposed framework will work with the help of these type of proposed instruments, like multi-item Likert scale will be required, same core items across all platforms, mode adaptations, font size, scrolling, paging, question per screen versus multiple questions per screen. And proposed analytical strategy will constitute like confirmatory factor analysis for each platform separately, configural invariance, metric invariance, scalar invariance, and etc. Expected findings from this framework will be like mobile users may show higher satisficing, in-store tablet users may show social desirability bias, desktop users may give more elaborate and differentiated ratings. So ultimately, RAM framework shows that without adjustment, cross-platform data comparison may be misleading. And this will be the theoretical contribution of my framework, that RAM framework will provide a new methodological lens to the researchers. And these are the practical implications, like for firms, business firms, they have better benchmarking across touch points, accurate view of customer experience by platform. For informed decision making, they can decide which platform is better for which type of question, designing campaigns through understanding mode specific biases. And ultimately we can we have to talk about limitations about also, like it is a single country research, specific brand context, limited number of platforms included, and future research may include all social media polls, voice-based surveys, combined survey responses with behavioral and transaction data. And in the form of conclusion, I can say that without response equivalent modeling, omni-channel consumer insights may be convenient, but not correct. So thank you so much for giving me this opportunity. Thank you, ma'am. Now we move ahead to our next presenter, Dr. Nikesh Kumar, Assistant Professor Hindi, Ram Bahadur Singh College, Andor, Samastipur. Yes, sir, I am presenting here. Education, ethics, and employment. Okay, Dr. Nikesh Kumar, you can proceed with your presentation. A very good afternoon, Suprabhat, Subaprahan, Kamakhari, and Wanakam to all of you. First of all, I would like to heartily congratulate and warm welcome to each members of organizing committee. Myself, Dr. Nikesh Kumar, Assistant Professor Hindi, RVS College, Samastipur, Bihar. Earlier, I was serving in Indian Air Force, and today I would like to elaborate my topic, education, ethics, and employment. Education is not only a 9-letter word carrying all 5 vowels in it, but also it is our base, our foundation, and our path of life. Through the mother womb to the last breath, we keep learning. We keep learning from our surroundings, livings, non-livings, visuals, and invisible phenomena. In Sanskrit, it is well said, Manusya sansare sarvshrestha prani asti. Why? Because of our thought processing, because of our curiosity, and because of our thirst for knowledge. There is another quote in Sanskrit, Yesam na vidya na tapo na danam na jnanam na silam na guno na dharma te martyaluke bhuvi bhar bhuta manusya rupen mrigas sharanti.
We are always surrounded by various perspectives and multidisciplinary approaches. Like each subject we study from class first to the last breath plays a vital role in our day-to-day life. We solve many of our issues socially, economically, philosophically, logically, mathematically, scientifically, with holistic approach of multidisciplines. Education is omnipresent, from twinkling of stars, chirping of birds, dancing of bees, thundering of clouds, and very beautiful flying formation of birds to first word of an infant like mama, papa is a great example of education. If education is air, then values or ethics are its oxygen. Each story from Dadi, Nani memorizes some lessons or some inspirations to us. Ethics are the main stream of education, or we can say values are the byproduct of education. In Sanskrit, there is a quote, Vidya dadati vinayam, vinyad ati patratam, patratvat dhanmapnopti, dhanat dharma tatatah sukham. As due to the weight of the fruits, branches of trees bends. Similarly, due to the power of wisdom, a great personality always becomes lenient and polite. Education with values makes a person self-confident, critical thinker, socially responsible, empathetic, disciplined, and empowered. This empowerment has various aspects like personal empowerment, social empowerment, empowerment to challenge oppressions, economic empowerment, and global citizenship. Today is the era of computer, robots, and AI, and the demand for employer changes nowadays. Children are like mud of a potter who shapes them as desired character. If good surroundings and molding given, he can be Abdul Kalam, else can be Laden. Live examples are stone pelter boys of Kashmir. India is a country of great saints and monks like Buddha, Mahavira, Sufis, Nath. In old days, we were called World Guru and Golden Bird. Many foreign tourists like Hwensang, Fahian came to India to attain knowledge. Yoga, Ayurveda, dance, sculpture, meditation, many perspectives were born in India and spread throughout the world. Thus, we can say that India is rich in values and ethics, and all generations carry forward it to the upcoming generation for humanity and mankind. In present scenario, education and ethics both creates employment. Today, analytical, logical, skill-oriented, ethical, and holistic approach are required in an employee. So, our education system has also modified their pattern as per requirement. Currently, NEP 2020 is a boon of Indian knowledge system. There are so many flexible, knowledgeable, skill-oriented, value-added, and ability enhancement courses have been drafted in new education policy. After liberalization of age of 1990, we have experienced never forgettable COVID 2020 pandemic. It has totally changed the offline mode philosophy of education and created many employment in virtual mode. Baiju, Physics Walla, Unacademy, Oda, there are so many online teaching platforms. No need to say that development always creates trouble if it is beyond control, such as cybercrime, bullying, sextortion, unemployment due to robots. How to tackle these unwanted byproducts? Definitely by our core ethics or moral values, we can curtail it. Last week, we see Indian GDP as 8.2%. FIIA and DIIA are looking towards us and investing here. GST rate cut is definitely a new trick to boost our economy. Government is planning to apply for 8th pay commission in coming year. India ranks as the 4th largest economy in the world in 2025 based on nominal GDP projection. Meaning thereby, India is really now a great India, young India, skilled India, and the day is not far. We will say India is a developed country, and again it will be known as the world guru. Thus, we can conclude that education, ethics, and empowerment all are the three pillars of a tripod stand that carries a basket of human basic needs: bread, clothes, health, and center. In perspective of India, all three E's, education, ethics, and employment, has a bright future. Thank you so much, sir. Jai Hind. Thank you so much, Dr. Nikesh Kumar, for your valuable presentation. Now I would like to call Dr. Manpreet Singh, Assistant Professor Commerce, Rajkesh Nathkota Mahavidyalaya. Thanks. Thanks. I present. You can proceed with your presentation, sir. Thanks. My topic is innovations in India's banking sector. This research aims to. I am audible? Hello? Yes, you are audible, sir. This research aims to analyze the aspects of product orientation
connected to technology and to evaluate significance new technology used in the Indian banking industry. The banking business is evolving quickly. The objective of digital banking is to offer extensive advantage to their client. Innovation in technology will play a key role providing a wide range of clients with affordable, personalized banking services. Several financial products depend on cutting-edge technologies that could outpace actual market demand according to this study. Introduction. India's banking industry has been undergoing fast transition driven by changes in customer behavior, regulatory reform, technology breakthrough, and more competition. Bank now rely heavily on innovation to reduce risk, increase customer satisfaction, increase efficiency, and stay relevant. Technology is the application of new solutions that will meet the new and exciting requirement. This will throw new effective product, service, process, technologies, ideas that are readily available to the market, society, and government. Currently, the technology innovation considered is one of the most important tools that can affect the banking sector and the economic sector. The advent of digital banking revolutionized the banking industry by offering client easy access financial services at any time and from any location. India's banks are making significant investments in digital infrastructures, including services like digital wallets, mobile banking, and online banking. Peer-to-peer payment have been transformed by the use of a unified payment interface (UPI), which allow save money transfers between bank accounts. Fintech collaboration, bank and fintech firms and working together more and more frequently, utilizing one another advantage of provide creative solutions. Banks are collaborating with fintech companies to improve their digital services, including chatbots driven by AI, customer support, robo-advisors for financial advice, and blockchain for safe transaction and intelligent contracts. Role of banking innovations for economic growth through enabling financial inclusion, forecasting efficiency, promoting growth, and mitigating risk. Banking and innovation plays critical role of propelling economic development. The following are few ways banking innovation advances economic growth: financial inclusion, efficiency and cost reduction, access to capital, encouraging innovation ecosystem, financial education and literacy. Benefit of banking innovation: enhanced customer experience, increased efficiency and productivity, expanded access to financial services, enhanced security and fraud prevention, cost reduction and revenue growth, regulatory completion and risk management, competitive advantage and differentiation. Statement Sorry of to the interrupt you, Dr. Manpreet Singh. Yes, sir. We are approaching the time limit. Please conclude. सर शाम तक वेट किया है, सुबह से बैठा हूं मैं वेट कर रहा हूं. No problem. Conclude your paper, sir. Thank you. My objective to study the technology innovation available in banker sector to highlight a new financial innovation in the banking sector. Sir, sorry, and final around sir, मैं concluding. Finding: according to the study, people the newest innovation technology available to them order complete their task much more quickly, intelligently.
The banking industry operate a fundamentally different way now because technology advancement suggestion the banking sector must promote digital self-services. Conclusion, in the modern scenario, people go the innovation, latest technology to get their work done much faster, smarter. Banking innovation supporting economic growth several ways, including the increasing financial access, improving efficiency, control risk, enhance entrepreneurship, and boosting financial including literacy. Thanks, sir. Thanks, Ravinder, sir. Thanks, Notel, madam. Thanks, Deep Singh, sir. थैंक यू सर। मैं मदन लाल शर्मा सर को आमंत्रित करना चाहूंगी, प्लीज अपना पेपर प्रेजेंट करें। नमस्कार मैम, धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार सर। मेरा जो टॉपिक है वो भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता, नीतियां, प्रगति और सामाजिक न्याय के आयाम है। जो देश के अंतर्गत सबसे बड़ी भागीदारी जिन महिलाओं की है, उस विषय पर मैं आपके सामने टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूँ। शायद मेरी पीपीटी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। पीपीटी दिखाई दे रही है? ओके। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने संवैधानिक प्रावधानों, नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं और न्यायिक सक्रियता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को राष्ट्र निर्माण के केंद्रीय उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद को देखें हम तो 14, 15, 16, 39 और 42 सहित अनेक ऐसी धाराएं हैं जो पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता तथा राज्य द्वारा सकारात्मक भेदभाव की व्यवस्था को वैधता प्रदान करती है। मैं यहाँ पर सीधा अमर्त्य सेन की एक जो कोटेशन है उस पे आऊंगा कि क्षमता दृष्टि के अनुसार विकास का अर्थ केवल आय वृद्धि नहीं है, बल्कि व्यक्तियों की वास्तविक स्वतंत्रताओं एवं क्षमताओं का विस्तार है। इस दृष्टिकोण से महिला सशक्तिकरण का मतलब कि महिलाओं के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी, अभिव्यक्ति और सुरक्षा से संबद्ध वास्तविक विकल्प मौजूद हो। जो हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं उसके अंतर्गत सामाजिक, जो ये आपके सामने एक डायग्राम है जिसके अंतर्गत महिलाएं एक छोटे से दायरे से लेकर और बाहर के दायरे तक बहुत बड़े बदलाव के रूप में दिखाई दे रही है। सामाजिक अधिकार जो सम्मान, गरिमा और सक्रिय भागीदारी, आर्थिक सशक्तिकरण, संसाधनों तक समान पहुंच और आजीविका, कानूनी व राजनीतिक अधिकार, निर्णय में भागीदारी और कानून की सुरक्षा, संरचनात्मक बदलाव के रूप में सांस्कृतिक और नीतिगत परिवर्तन। बहुत सारे ऐसे प्रावधान भी हम संविधान के अनुसार जब हम देखते हैं, यद्यपि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत जाएं तो पितृसत्तात्मक संरचना से मुक्ति की जो यात्रा है वो ऐतिहासिक संदर्भ से प्रारंभ होकर जो सामाजिक परिवर्तन की चुनौती है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि सामाजिक सुधार आंदोलन और विभिन्न प्रकार के जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हुई उन्होंने इस विभाजन को चुनौती दी। आदर्श महिला की छवि आज भी त्याग, सहनशीलता और अधीनता से जुड़ी हुई है। वैश्विक और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को जब हम देखते हैं तो एसडीजी लक्ष्य 5 जो है, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने विकास के लक्ष्यों में लैंगिक समानता, सभी महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया है। उसी के अनुसार भारत की प्रतिबद्धता जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति ही है विशेष रूप से। उसके जो एसडीजीएस है उसको अपनाना विकास को केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित न रखकर अधिकार आधारित और समावेशी प्रक्रिया के रूप में समझने का संकेत है। मुख्य रूप से जब देश की अर्थव्यवस्था की बात आती है तो केवल आर्थिक वृद्धि तक ही महिलाओं को सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि उनको पूर्ण रूप से अधिकार, जो पुरुष प्रधान समाज या पितृसत्तात्मक व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, उसके अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों के समान ही समान अधिकारों की आवश्यकता है। नीति और व्यवहार का अंतर देखें तो नीतिगत संकल्प और सामाजिक व्यवहारिक वास्तविकताओं के बीच का अंतर शोध की केंद्रीय समस्या है। यहाँ पर अमर्त्य सेन की मैंने यहाँ पर बात की थी, जिन्होंने बहुत वर्क किया है। सत्ता संबंधों का पुनर्गठन है, वास्तविक समानता की बात की गई है, संवैधानिक और कानूनी आधार जो विभिन्न प्रकार के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल्स है उनके अंतर्गत भी महिलाओं के लिए समानता के स्तर की बहुत अलग अलग स्तरों पर, जहां राजनीतिक भी कह सकते हैं, कानूनी भी कह सकते हैं, वो भी प्रमुख रूप से बातें की गई है।
मुख्य जो कानून है विभिन्न समय पर, जो भारतीय समाज के सामने एक बड़ी विडंबना रही है, दहेज रहा है, तो विभिन्न समय पर हमारी सरकारों ने महिला भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए और महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान, जिनमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का, पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 का, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। अब यहाँ इस डायग्राम के अंतर्गत आप देखोगे कि नीतिगत ढांचा और कार्यक्रम जो आप 2001, 2014 जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी आया, 2016 में राष्ट्रीय महिला नीति प्रारूप, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो प्रावधान है जिसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, 2023 में 106वां संविधान संशोधन, जिसने लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण की बात कही गई है और ये संशोधन हो चुका है। लेकिन ये अगला जो परिसीमन होगा और अगली जो जनगणना होगी उसके बाद में 106वां संविधान संशोधन लागू हो जाएगा। तो ये महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर है कि जहां पर उनके लिए कानून की आवश्यकता है वहां पर महिलाओं की भागीदारी कम से कम आधी होनी चाहिए थी, लेकिन जो एक पुरुष प्रधान समाज की सोच है वो अभी तक 1/3 तक महिलाओं को सीमित करने के प्रावधान में रही है। प्रगति के जो संकेत हम देखते हैं, लंबे समय से सरकारों का प्रयास रहा, सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रयास रहा, तो घरेलू निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जो वित्तीय समावेशन है वहां पर महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। वहां पर आज महिलाओं के नाम से बहुत सारे अकाउंट सरकार के द्वारा मुख्य रूप से खोले गए। डिजिटल पहुंच हर घर में, कंक्लूड कीजिए। बस मैम 2 मिनट, हर घर में और हर महिला के पास मोबाइल पहुंचना, ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति हम कह सकते हैं। मुख्य रूप से जब हम कहें तो जो चुनौतियां हैं या भविष्य की जो हम नीतिगत सिफारिशें करते हैं, एक तो गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन होना चाहिए, तकनीकी शिक्षा, वास्तविक जेंडर बजटिंग, संवेदनशील न्याय तंत्र, पुरुषों और लड़कों की भागीदारी किस रूप में हो, उस रूप में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। निश्चित रूप से देश की सामाजिक और आर्थिक दशा हमें बदलती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट डॉक्टर योगेश चंद्र नैनवाल। Yes, sir. I am present here. Good afternoon. Welcome, sir. Honorable Chairperson of this session and the co-chairperson. Myself, Dr. Yogesh Chandra Nainwal from Government PG College, Maldevta, Raipur, Dehradun. Before starting my presentation, I would like to thank all the members of the Commerce Department of Dr. Shivanand Nautiyal Rajkiya Snatakotter Mahavidyalaya, Karanprayag, for giving me an opportunity to be a part of this conference. And my topic is climate change and extreme weather events, trends and future projections. I would like to share my slides. I think it's taking time. Is this slide is visible? Not yet, sir. I think it should be. Is it visible? Not yet, sir. Just I'm trying to. Okay, I take my paper from just not saying this slide. You can also present without PPT, sir. Okay. As we all know, the climate change is a phenomena. We frequently encountered with this phenomena from last couple of years, and we see a lot of weather events. The paper examines the complex and interconnected impacts of climate change, particularly in Uttarakhand. The study reveals shift in temperature, altered precipitation patterns, glacier retreat,
increased forest fire, on all these events which promote climate change. We know our state, Uttarakhand, is often called land of gods. The state features high relief, fragile geology, sensitive ecosystem, and the livelihood of people is generally dependent upon agriculture, forest, hydropower, and tourism. Ecosystem of the state ranges from subtropical forest in lower elevations to alpine meadows and glaciers at higher altitudes. Wide variety of flora and fauna, which are many species are endemic, are highly sensitive to the environmental changes. Elevation dependent warming is seen. This elevation dependent warming is particularly, if we go higher, the warming will be higher, and if we go in lower heights, the warming will be lower. So it's EDW we generally call elevation dependent warming, means the places located at the higher altitude will warm up fast, and this promotes glacial retreat. Changes in precipitation regimes, which are mainly the rain, has fostered the incidents like floods, droughts, and landslides. Furthermore, the state is facing unplanned urbanization, which is the main cause of this climate change, population growth, and resource exploitation for infrastructure development. Melting of glaciers threatens long-term water security, because if there are no glaciers, there will be no water. Increased incidents of forest fire further promote this climate change. Climate change also promotes migration and socio-economic instability. Now, how can we see this observed climate change? We see that the retreat in the glaciers and the phenomena of elevation-dependent warming, where higher altitudes are warming faster and the lower elevation are having lower temperature. In general, it is seen that warmer days and nights compared to the lesser number of colder days and nights. And besides this, there are some erratic precipitation patterns, which is the rain. In past few years, we have seen that cloudburst is there, and so many incidences of cloudburst have happened. This increased heat promotes forest fire, besides unplanned urbanization. This is also one of the main cause, where we do not see which kind of land is there, and we just construct our houses on that. The cutting of trees and the cutting of hills is also one of the cause. The climate change can be well observed by early flowering of various plants like rhododendron. बुरांस का फ्लावर अगर हम देखें तो उसमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी हो जा रही है. This is also one of the change which we can see, and the retreat of glaciers itself. There are so many complex effects of climate change which encourages the erratic rainfall, landslides, and soil erosion, thereby making agricultural decline. अगर एग्रीकल्चर कम हो जाएगी तो हमारा जो हमारे जो किसान हैं या जो हमारे जो लोग हैं उत्तराखंड के, उनका लाइवलीहुड भी कम हो जाएगा. And this also impact the tourism. It has been seen that in 2013 disaster provoked most of the people to migrate. And what are the drivers or the mechanism of this climate change is mainly the mountain slope, steep gradient, glacial legacy, EDW, elevation dependent warming, human development pressures is also there, unplanned urbanization, forest fire, and glacial retreat. All these environmental changes in Uttarakhand affect the natural mountain ecosystem of the state and biodiversity. Alteration in ecosystem invites disaster, thereby assisting loss of livelihood, economy, and human sufferings. Adaptive efficiency of species is also good, leading to the increased vulnerability of the state. Dr. Yogesh Nanwal, sir, we are approaching the time limit. Please kindly conclude. Okay, I will take only one minute. The Uttarakhand state has a fragile mountain ecosystem, highly vulnerable to the small climatic change. Small climatic change may lead to the cloudburst, glacial retreat, and forest fire. So we can say that here nature is at risk, and so we as a community must work hard, and we must see the situations where we can stop this change. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, yes, complete, sir. I want. Okay. Next participant, Dr. J. Marisa Rose. Yes, sir. I am here, sir. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Please present your paper, ma'am. Yes, sir.
Is it visible, sir? Not yet, ma'am. No worries, ma'am. You can present your Okay, sir. paper without PPT as well. Good evening all. I am J. Mirza Rose, Assistant Professor, Government Law College, Tirunelveli. I am going to present my topic, Forensic Methods in Criminal Justice System of India. Coming to introduction, forensic methods are synthesis of nearly every branch of knowledge. It is a vital component of criminal justice system and possibility of providing solutions to crucial questions. It may establish the guilt of the accused or innocence in criminal trials through the identification, examination, and assessment of tangible and other evidences gathered by crime scene investigators. The objectives of the studies are to explore the various forensic methods in criminal investigation, to identify the legal frameworks for forensic evidences, to analyze the shortcomings in applicability of forensic methods, and to provide suggestions for admissibility of forensic methods in criminal justice system. Regarding forensic methodology, the present study is based on secondary sources. The study is undertaken by the information collected from various primary and secondary sources such as reports of commission, committee, journals, websites, barracks, and books. Next, coming to various forensic methods in criminal investigation. There are more forensic methods in criminal investigation such as polygraph test, brain mapping test, narco analysis, and DNA fingerprinting. Coming to polygraph test, it is generally referred to as the lie detector test. Interrogative question makes changes in blood pressure, skin conductance, heart rate, and pulse rate of the accused. After being interrogated on the target question, an expert examines such a graph and discusses the physiological responses before the court. The Supreme Court recently addressed in the case of Selvi versus State of Karnataka. After analyzing the test approach, the court concluded that this is not a test that can be stated to be completely accurate. Coming to brain mapping test, brain mapping is one of the deception tests which is effective in recovering the secret information linked to the crime by inserting electrodes on the scalp of the person to capture the electrical inclination from the brain. Third test is narco analysis test, supplying particular psychoactive drugs to stop the barriers given by the accused with the intention that the accused may openly reveal information and emotions. Certain drugs negate the capacity for imagination, causing the person to enter a semi-conscious condition. In the case of Jitruboy Babuboy Patel versus State of Gujarat, the Supreme Court ruled that whether or not the consent of the accused is required in order to do a narco test is an academic question that it must be determined based on the specific facts of each case. Fourth test is DNA fingerprinting and familial test to identify specific perpetrators by comparing DNA evidence gathered from crime scenes with those from suspects, victims, or reference DNA from known persons. Familial DNA searching is a crime investigation technique that consists of the search for potential offender through the person's blood relations using DNA databases in the internet. Coming to legislative frameworks for forensic evidence, Bharatiya Nagara Suraksha Sanhita. This law outlines political investigation under Section 194, Magistrate Inquest Section 196, and it provides legal examination to sudden and suspicious death. It also provides categories of government scientific experts under Section 329. Next, the Act is Bharatiya Sakshi Adhiniyam. Facts that would otherwise be irrelevant may become relevant under Section 40. Additionally, when a court must determine who wrote or signed its document under Section 41 of the Act. Shortcomings in forensic methods in Indian criminal justice system. Following are the shortcomings in forensic methods. These techniques may violate several fundamental rights enshrined under the Indian Constitution.
their application can itself cause harm to the individual being examined. Prevention of torture bill has still not been enacted, so police torture may be which are promoted as alternative to the police third degree methods. Finally, I conclude that forensic technological methods should be legalized through separate enactments for the purpose of implementing them upon the perpetrators. When these methods are applying in the criminal justice system, functionaries of the system can end the case speedily and the case flowing levels will be improved. Criminal justice system should be reformed for better utilization of the forensic methods to expedite trial in the court. Forensic science education with legal knowledge should be improved for the purpose of detecting crime in the criminal investigation. Privacy of the subject should be protected and brutality against suspects should be wiped out. Thank you. Thank you, ma'am. Dr. Kirtiram Dangwal sir, प्लीज आप अपना पेपर प्रेजेंट कीजिए. ठीक है मैम. डंगवाल सर. मेरी आवाज आ रही है? यस सर. हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है मैम? सर आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है सर. अपना पेपर प्रेजेंट करें सर. थैंक यू सर, थैंक यू. सभी जी सर. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे पेपर का विषय है उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण एवं विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. यह जो शोध पत्र है ये उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण एवं विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण प्रस्तुत करता है. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया, जिसे उत्तराखंड ने संशोधन करके 50% तक किया और ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व, निर्णय निर्माण और विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ाया है. इस अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के आधार पर उत्तराखंड के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, पंचायतों में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी, उनकी उपलब्धियां, चुनौतियां तथा सशक्तिकरण पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया है. अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, परंतु सामाजिक और कई पारिवारिक अवरोध, संसाधनों की कमी, क्षमता निर्माण का अभाव और प्रॉक्सी नेतृत्व जैसी समस्याएं आज भी मौजूद हैं. शोध पत्र के अंत में सशक्तिकरण को और सुदृढ़ करने हेतु नीति सुझाव भी प्रस्तुत किया गया है. महिला सशक्तिकरण भारत के लोकतांत्रिक विकास का प्रमुख आधार रहा है. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग में ही आती रही है. पंचायती राज संस्थाओं के व्यवस्था के बाद उन्हें जमीनी लोकतंत्र पर सक्रिय अंग बनाने का मार्ग प्रस्तुत किया है. उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में महिलाओं की भूमिका हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है, चाहे वो कृषि हो, जल, वन, भूमि प्रबंधन या परिवार और समाज संचालन में है. मैं जो हमारा जो मुख्य रूप से इस शोध पत्र का सारांश है, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा कि महिला सशक्तिकरण पर पंचायतों का क्या प्रभाव का विश्लेषण इस शोध पत्र के माध्यम से जो रखा गया है. सामाजिक सशक्तिकरण महिलाओं में आया है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भूमिका मजबूत हुई है, ग्राम सभाओं में बोलने की आदत विकसित हुई है, महिलाओं की शिक्षा, स्वच्छता और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता मिली है. आर्थिक सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के में महिलाओं की भागीदारी के बाद सरकारी योजनाएं, मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, पशुपालन जैसी विषयों पर महिलाओं को लाभ हुआ है. कई महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से सक्षम भी हुई हैं. पंचायती निधि के प्रबंधन में वित्तीय समझ भी महिलाओं की बढ़ी है. अगर हम राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें तो स्थानीय नेतृत्व विकसित हुआ है. कुछ महिलाएं दोबारा से चुनकर पंचायती राज संस्थाओं में आई हैं, तो इससे पता लगता है कि राजनीतिक स्थायित्व भी महिलाओं को मिला है. जिला पंचायत तक पहुंचने वाली कई महिलाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है. अगर विकासात्मक प्रभाव का देखें तो गांव में पेयजल, सड़क, स्वच्छता, शिक्षा के विकास में
महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निगरानी महिलाओं द्वारा बेहतर रूप से की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी इस शोध पत्र के माध्यम से हमारे सामने आई। जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रॉक्सी नेतृत्व। आज भी पति प्रधान जैसे शब्दावली आज भी हमारे समाज में चल रही है। सामाजिक रूढ़ियों की बात करें तो महिलाएं आज भी सार्वजनिक रूढ़ियों के कारण सार्वजनिक भूमिका में उनको सीमाओं में बांधा जा रहा है। शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी, तकनीकी फाइलों, बजट योजनाओं की समझ आज भी महिलाओं में कम देखी जा रही है। आर्थिक निर्भरता, आर्थिक असुरक्षा निर्णय क्षमता को प्रभावित कर रही है महिलाओं की। संसाधनों की कमी, आज भी पंचायत निधि में उच्च स्तर पर अधिकारियों का सहयोग न मिलना, इस प्रकार की समस्याएं चलती आ रही हैं। अगर हम इस शोध पत्र के निष्कर्ष की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी केवल सांकेतिक नहीं, वास्तविक नेतृत्व धीरे धीरे उभर रहा है। पंचायतों ने महिलाओं में आत्मनिर्भरता, नेतृत्व विकास और जागरूकता निश्चित तौर पर बढ़ाई भी है। पर्याप्त प्रशिक्षण और सहयोग मिलने पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक नेतृत्व क्षमता दिखा रही है। चुनौतियां अभी भी हैं, प्रमुख बाधाएं हैं, परंतु धीरे धीरे इनमें सुधार आ रहा है। अंत में अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं तो पंचायती राज संस्थाओं ने उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। यद्यपि चुनौतियां मौजूद हैं, परंतु महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, जागरूकता और निर्णय लेने की ताकत लगातार बढ़ रही है। ये हमारे ग्रामीण विकास में महिला सशक्तिकरण का एक सबसे प्रभावी माध्यम सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद मैडम। Thank you, sir. With this, we conclude all the presentations scheduled for the technical session. I extend my heartfelt appreciation to all presenters for their valuable contribution. I also thank all participants and attendees for their time, attention, and cooperation throughout the session. On behalf of organizing committee, I express my sincere thanks to everyone present here. Thank you once again. And now I hand the session to Professor Preeti Rani, subject expert of today's session. Professor Preeti Rani, ma'am. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. First of all, जिन्होंने पेपर प्रेजेंट किया और जिन्होंने इस पूरी सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। इतने बड़े लेवल पर इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना एक आसान काम नहीं है। डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर तरुण कुमार, सर प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए, हिना नौटियाल और बाकी पूरी टीम जो कर्णप्रयाग कॉलेज के भी बहुत सारे टीचर्स लगे हुए हैं, ब्रिजेश सर की पूरी टीम, इन लोगों ने एक कलेक्टिवली जो एफर्ट किया है आज के कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए, वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इतने सारे व्यूज आज हमें देखने को मिले हैं, जो मुझे लगता है एक ही अम्ब्रेला के नीचे तो शायद कभी कभी ही संभव हो पाता है। लेकिन आप लोगों ने इन चारों टॉपिक्स को 4 E's जो हैं उनको लेकर के आज का जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही फ्रूटफुल है। और मुझे लगता है सरकार भी इस तरफ जरूर ध्यान देगी कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो पेपर प्रेजेंट हुए हैं वो आगे कोई ना कोई रिजल्ट लेकर जाएंगे। और सबसे अवेटिंग जो चीज है आज की, जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं, वो रिजल्ट हम लोगों के हाथ में है। और मैं बधाई देना चाहती हूँ पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। आज मैं सोच रही थी शायद अब ये एंड होगा, लेकिन इतने सारे कंटिन्यूअस पेपर्स प्रेजेंट होते गए, तो उन सभी ने जो पेपर प्रेजेंट किया है सबका पेपर बहुत ही अच्छा था। और सबसे बड़ी बात, आप इतना टाइम निकाल रहे हैं, वैल्यूएबल टाइम, शाम के 5:45 बज रहे हैं, कंटिन्यूअस सेमिनार चल रही है, 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं हुआ है। अगर हम लोग फिजिकली करते हैं तो 1-1.5 घंटे का तो ब्रेक ही ले लेते हैं, लेकिन ये कलेक्टिवली एफर्ट जो आपने किया है आज पूरी टीम ने, तो मैं समझती हूँ कि सभी लोग पुरस्कार के भागीदार हैं,
केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड ही नहीं, सभी लोग इसके हकदार हैं, लेकिन फिर भी एक परंपरा है। तो मैं अनाउंस करना चाहूंगी, जो थर्ड आए हैं, बहुत बहुत बधाई हो उनको, मिस निष्ठा माहेश्वरी। इनका रेफरेंस नंबर 119 था और ये थर्ड आई हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो निष्ठा जी। थैंक यू मैम। ओके। सेकंड पोजीशन होल्ड कर रही हैं डॉक्टर सुगंधा वर्मा, whose reference number was 155. Are you there? Sugandha Verma. Yes, ma'am. I'm here. Thank you so much, ma'am. Grateful and honored, ma'am. Thank you so Congratulations, much, ma'am. Sugandha जी. Thank you so much. And फर्स्ट पोजीशन जो होल्ड कर रहे हैं आज के पेपर सेशन में, वो है दीपा नाथुवानी, whose reference number is 142. दीपा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। Are you there, दीपा जी? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होल्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑनर है। जो तीनों लोग 142, 155, 119 रेफरेंस नंबर वाले हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और बधाई है रविंद्र जी आपको, आपने इतना अच्छा एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है और आपकी जो एंटायर टीम कंटिन्यूअसली सुबह से लगी हुई है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Now, for conclude of day one, with the successful completion of today's technical session and the announcement of the Best Paper Presentation Award, we now formally conclude day one of the international conference. On the behalf of organizing committee, I extend our sincere gratitude to all guests and keynote speakers, paper presenter, participant and attendee for their active and involvement and meaningful contribution throughout the day. We look forward to your enthusiastic participation tomorrow as well. Before closing for the day, we kindly request all participants to share their feedback for today's session through the Google form that has been shared in the WhatsApp group of this 2 days international conference. Your feedback is valuable and will help us to enhance future academic event. Thank you once again for your valuable presence. Wish you all a pleasant evening. We will meet tomorrow at 11:50 a.m. The conference will begin at 12 p.m. sharp, and the Google Meet link will be shared with you at 11:30 a.m. Thank you. Thank you all. Namaskar. Thank you, Dr. Saab. धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। Thank you. Thank you. Thank you, sir.